पीएससी ऑफिसर इसमें नहीं लिया है। भाई साहब चलो दो सर और ज़्यादा सस्ता करने वाली हो महंगा करने वाली सिक्योरिटीज सर डेलीगेट एक और एक नेम लिख के दे दो सबको मैं कोई दिक्कत इधर रखना है शाम गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ CPAI। आप सभी का स्वागत है। वी आर सेलिब्रेटिंग हियर अमृत काल महोत्सव 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके खुद के लिए कि आपकी प्रेजेंस है हमारे 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी जल्द ही हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी रेडी हो जाएं उनके स्वागत के लिए। तो आइए हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी ऑनरेबल अभिनंदन आपका आज इस कार्यक्रम में। I request everyone to take the seats. Without wasting any time, I am inviting all the dignitaries for the lamp lighting. I request Mr. Pankaj Chaudhary ji, I request President to accompany him, Mr. Pankaj Chaudhary, Mr. Shashank Saxena, Mr. V.S. Sundareshan, Mr. Ashish Kumar Chauhan, Mr. Sundaraman, Mr. P.S. Reddy, Mr. Anil Singhvi. Alkesh ji.
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् I request all honorable delegates to dignitaries to take the seat on the dais. I am not calling the name again. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविना Request that let us start it with the inauguration of our quarterly journal, the specialized journal for the convention. So I request to bring the journal on the dais. Give one copy to each of. माने आप साथ जाओ ये बच्चे. I also request the dedicated team, General Committee, Mr. Jayant Manglik, Vandana Bharti, Anuj Gupta, Alternate President Rajiv Agarwal, Vice President Sandeep Jain, Vice President Ajay Jain ji, and the person Shivkumar Goyal ji to come on the dais for the भैया जनरल कमेटी वाले आगे आके बैठ जाओ तो नजर आओगे आगे आगे बैठ जाओ चलो हाँ पता है नीचे खड़े हाँ कैसे भी कर दो मतलब फोटो तो आए ना आप लोगों की इतनी मेहनत की है I'll request all honorable members to please stand for the national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We are late by half an hour, so we have to curtail the speeches of all the dignitaries on the dais also, and accordingly. But first, as usual, we will be welcoming our honorable guest. To welcome the honorable minister, I request my South Chairman, Mr. Ponomadi from Bangalore, and Mr. Binay Agarwal, our East Chairman from Calcutta, to present a shawl to Honorable Minister. Binay ji, हाथ लगा लो. I request Mr. Ajay Kejriwal, our Vice Chairman from the Western India, to present it to Mr. Shashank Saxena, Senior Economic Advisor. अरे मैं चला जाऊं शाल लेके. Mr. Ajay Kejriwal from Mumbai presenting it. I request Mr. Vijay Kumar from Chennai to present it to Mr. Sundareshan. Sir, to a Chennai man from a Chennai man. I request Mr. Milind Parekh from Surat to present it to the Mr. Ashish Kumar Chauhan. Sir, Gujarat to Gujarat, Mr. Milind Parekh from. I request Dr. Satish Arya from Vishakhapatnam to present it to Mr. P.S. Reddy. Matlab person from Andhra to Andhra only. Though we have a very big delegation from Chennai, but because we have to adjust other cities also, I am requesting Mr. Rakesh Sonaware, Profit Mart, to present it to Mr. Sundaraman. I request Srilata from Chennai to present it
to Litika Kundu ma'am, Shrilata from Chennai. I request Mr. Manoj Kumar Jain, a TV personality also on commodities, to present it to Mr. Anil Singhvi. Mr. Manoj Kumar Jain from Prithvi Broking, Indore. And now, without even giving the background of the convention, I am straight away asking our President Narendra Vadvaji to give his presidential address, but with a great honor to him that the maximum time I am curtailing from him, only 2.5 minutes. Mr. Narendra Vadva, President. Thank you, Sabarwalji, not for me. Yeah. Good morning, everyone. Shri Pankaj Chaudhary ji, Honorable Minister, State for Finance, Government of India, Dr. Shashank Saxena ji, Senior Economic Advisor, Financial Markets, Department of Economic Affairs, Shri V.S. Sundareshan ji, Executive Director, SEBI, Shri Ashish Chauhan ji, MD and CEO, NSE, Sundara Raman ji, MD and CEO, BSC, Shri P.S. Reddy ji, MD and CEO, MCX, Latika Kundu ji, MD and CEO, MSCI, Shri Anil Singhvi ji, Managing Editor, Z Business. Respected fellow members, ladies and gentlemen, a very warm welcome to you all to our 9th International Convention. आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के प्रोग्राम में. It is my privilege to welcome you as a president of CPI. India is celebrating Amrit Kal period and 77th Azadi Ka Mahotsav. The Amrit Kal Mahotsav, Amrit Kal has begun on a resounding note. In true sense, the moon landing and successful hosting of G20 has swelled our chest and pride. Chandrayaan and G20 has empathetically demonstrated that we can. With the increasing financialization and inclusiveness, and also the possibility of human settlement across the planets, I foresee a trading terminal at Moon also, not so distant future. Decisive action taken by our fraternity in Amrit Kal will impact the next era of financialization. In line with the nation's achievement and inspiration, we have chosen the theme Amrit Kal, transforming India's vibrant capital and commodities market for growth and inclusiveness, for our convention and for 4 technical sessions. I hope India will become a developed country during this Amrit Kal period, bringing prosperity for all. Over the years, India's commodity and capital market has undergone a massive transformation in terms of participation, intermediation, operation, reforms and standard system and control mechanism. The market has grown faster and become transparent, which has infused investors' faith and won their trust. We have 12 crore demat accounts in the market. We have seen unprecedented participation of investors in the last 2 years of COVID and thereafter. Amongst the markets of the world, the maturity and competence level of India's commodity and capital market is one of the spotlights for the domestic as well as international investors. Future growth and efficiency of market depends on innovation, policy, preparedness and promptness of the market to respond to the demands of the market economy and the investors. And also channelizing the surplus domestic saving, which is around 30 lakh crore at the level of 3 trillion economy, where we stand today. Therefore, with the view to discuss and deliberate among different perspectives of capital and commodities market, CPI is today organizing 9th CPI International Convention. The objective of the convention is primarily to sensitize participants and audience the need to develop capital and commodities market for India and discuss its challenges. Its challenge is the way and means for its smooth working with the high level of market integrity in the best interest of investing public, companies and the government. Today's participants include policymakers in the government,
regulators, market intermediary, leading private companies, state-owned enterprises, banks, insurance companies, academia, and the media. As CPI focuses on commodities market, although we say it is Capital Market Participant Association of India, but still we have CPI. So I'll speak about the business delegation about the commodities market. So I was part of delegation of BRICS at Johannesburg, South Africa, with our Honorable Minister, Shri Narendra Modi ji, and as also part of G20 event. All our discussion points were inclusive growth and financial inclusion. It is all about UN sustainable goals. It was discussed all over that inclusiveness and financial inclusion should be there. So we have three UN sustainable goals which caters to capital market as well as commodity market. We'll discuss during the technical session today. In India, economic performance is associated with development in the commodity sector. The linkage between commodity market, economic growth, development, and both strong and complex. Commodity prices provide important economic incentives and influence decisions relating to production, consumption, income generation, investment, trade, and employment. Doubling of farmers' income is the vision of our PM towards these SDG goals. We are the biggest consumer or the also biggest producer and exporter of many commodities, and we see India's position as a price setter rather than price taker. We need to discuss internally, we are ready for such position, and what is holding us back to take such position. Sundaresan ji always says that we have 3 P's for the growth of the market. Again, all these 3 P's are there. We have to see when we will become the price setters. Furthermore, we need a stable policy regime from the regulator also. We have seen so many changes very fast. So the stable policy regime we are expecting should come from the regulator. Another point I want to highlight is agri-commodities. We have concerns on sudden withdrawal and contracts which have seen withdrawal last year. We appeal to the policymaker here for their reintroduction because in the inflationary environment, all participants need hedging platform. So purpose of derivative market is price discovery and price risk hedging in the capital and commodities market and price dispensation. So we need these agri-commodities back in the ecosystem. Once we have deep commodities market, government can use option as a replacement tool for MSP supporting farmers. I thank all our distinguished once again for their presence today. It's a Members' Day. I request members, friends, and participants to make best use of our various sessions. We have eminent speakers lined up for today. Thank you very much. Thank you, Vadvaji. Most probably, I will not able to do the time management today. President himself has taken 9 minutes. Though I have not introduced him also. He has a very good introduction. But actually speaking, our guest of honor for the day, Dr. Shashank Saxena, has to reach in an event of Department of Economic Affairs and CII at Moria where he is there. So I am now first calling him, not as all of you are aware, not giving him much introduction. He is the person who has come in our convention for the 5th time. A 30 years of experience in Indian Economic Service, Senior Economic Advisor in Department of Economic Affairs, that is Additional Secretary. But presently, after his retirement, he was given extension and he is Senior Economic Advisor Finance for G20. And just to tell you that whatever proposals in G20 we have signed, he was a part of the drafting committee of that proposal. Dr. Shashank Saxena, please. Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary ji,
dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. The theme of the convention today is in full consonance with the theme of the current public policy. What are the public policy imperatives? As you may recall, it was announced in the budget speech for 23-24 that our vision for Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. So in the rapidly integrated world, there is a need to make the global financial system more efficient, secure, and stable, and that it supports economic development and not become a source of instability itself. As you may recall, India's G20 presidency is grounded in the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, which underlies the message of equitable growth and shared future for all. Technology is being constantly used to transmute capital to financial markets and provide financial services efficiently. While the application of new digital technologies helps in achieving efficiency and productivity, it may result in dislocating and disrupting the traditional financial architecture and frameworks. The challenge is to reap the benefits of this transformational change, but minimize the cost of creative destruction and avoid risks to financial stability. The Indian presidency's priority in the financial sector in 2023 is to work on institutional reforms which would make the digital financial system more efficient, secure, stable, and public-centric. What are the current challenges and opportunities? As per the latest World Bank research, a structural growth slowdown is underway. As at current trends, the global potential growth rate, the maximum growth rate at which an economy can grow without igniting inflation, is expected to fall to a 3-decade low over the remaining period of the 2020s. Nearly all the growth enhancing factors that have powered growth and prosperity since the early 1990s have weakened. The growth rates of investment and total factor productivity are declining. The global labor force is aging and expanding more slowly. International trade growth is much weaker now than it was in early 2020, early 2000. These challenges call for an ambitious policy response at the national and global levels. The intensifying developmental challenges the world faces are accompanied by a raft of sometimes competing public policy priorities: eliminating extreme poverty, reducing inequality, achieving higher growth, or combating climate change. The good news is that addressing these priorities require the same solution, that is, sustained and robust investment and productivity growth. The current public policies in India are focused on increasing public capital formation and improving productivity. The priorities for the Indian economy include digital public infrastructure-based inclusive development, improving infrastructure and investment, human capital formation, and financial sector development. Some important elements of the financial sector strategy in the current year include the institutional reforms in terms of improving and strengthening the financial information systems to facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. Improving regulatory quality and reducing compliance costs so that potential growth could be achieved. The public policy would continue to focus on institutional development and strengthening the growth enhancing framework. I expect that today's sessions would address the issues of market development, technological innovation, and transformation of the financial sector to achieve shared prosperity for all. Thank you. Namaskar. Mr. Saxena, just a second, sir. As he is going, I will request our Vice Chairman of the South, Mr. Tejas Khode, to present a memento to Mr. Saxena. Mr. Tejas Khode from Bangalore.
अशोक जी, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन आपके लिए सोचा हुआ था, जो मैं पिछले 20 सालों से जब दिल्ली स्टॉक चेन के चेयरमैन थे तब से करता आ रहा हूं, पर कुछ नहीं कर रहा हूं. स्ट्रेट अवे दैट फॉर द चीफ मेंटर ऑफ CPAI, and I further request that as Shashank Saxena ji did not name all the dignitaries except the minister, other dignitaries' name should not be taken. I think Sabharwal ji is directing everything. Sir, I was not due to come for this, but only last week Ashok ji and Vadva ji ordered me that for the time management I should be here. Thank you Sabharwal ji. Good morning, Sri Pankaj Chaudhary ji, Minister of State for Finance, Government of India, all other dignitaries on the dais, all other dignitaries in the audience, and friends. Okay, so 19th century belonged to Europe, 20th century belonged to America, and everybody is saying now the 21st century belongs to India. And India and China. In fact, now I just said India and added China later, because what has happened is चाइना को माँ से भी प्रॉब्लम है, चाइना को दीदी से भी प्रॉब्लम है. When I say Ma, it is Jack Ma. You know what has happened to Jack Ma. When I say Didi, it is that app, taxi app Didi. So, they have created trouble for that. And in fact, they are creating trouble for every businessman which is rising in China. So now, basically, I think the 21st century belongs to India. Now, कहने में तो आप कुछ भी कह सकते हैं. It is all tall claims. But is it supported by facts? Okay, of course, we all know India is the largest growing large economy in the world as of today. But let us look at it from the stock market angle. Our market has given you a 14% CAGR in last 20 years. That is, Nifty return in last 20 years is 14% plus. Okay. And to just give you a perspective, what it means, the Nifty index does not include the dividend. So because now it is the word of total return index. So if you calculate total return index, the return is 15%. So we are talking about Amrit Kal. Amrit Kal will end in 2047. And our Prime Minister is saying India will be a developed economy by 2047. तो स्टॉक मार्केट में अगर आप आज 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 15% रिटर्न से कितना बन जाता है? I just did a simple mathematical calculation. And the figure is 18 lakh. And in fact, I think our market is likely to grow more, at least 2% more. So instead of 15%, likely to grow 17%. And that 2% makes a big difference. How much the return comes to? 1 lakh becomes 43 lakh in 24 years. So if you invest in our capital market now, by the end of Amrit Kal, that is by 2047, your 1 lakh will become 43 lakh. Okay, if you make a investment in fixed deposit, how much it will become? It will become only 4,05,000 in 24 years at 6% rate of interest. So everybody sitting here, including the dignitaries on the dais, I will like to say, capital market, our theme is vibrant capital market in Amrit Kal for inclusive growth. India is having an investor population of 14 crore now. 13 crore, 14 crore, the way we are growing, it was last 12 crore something.
So I am assuming कि 40-50 lakh per month addition हो रहा है, तो 13-14 crore हो गया. And the population of investor in China is 23 crore. अभी पीछे न्यूज आई थी, इंडिया has become the most populous nation in the world. Our population has crossed China. We are number 1 in the world in terms of population. So I think very soon, within 2-3 years, we should be number 1 in terms of investor population. 23 crore ज़्यादा नहीं है. All of you sitting here, if you work hard, in 3 years you can cross that 23 crore. Now, you know, our markets, they are the most efficient market in the world. T+1 settlement, except maybe one exchange in China, no other exchange is having T+1 settlement anywhere in the world. Client collateral segregation at investor level. दुनिया में कोई भी ऐसा exchange नहीं है जहां पर client collateral is segregated at CC level. So our clearing corporation, our exchange knows the collateral of each and every investor. So it is most efficient and I will say the most secured market in the world. The kind of reforms that are happening in our market are phenomenal. Every day there are reforms which are happening and it has made our market very efficient. But कहीं ना कहीं वो reforms करते 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 ये तो नहीं होगा कि कुछ ज़्यादा हो गया. You know, there is a cost of reform and there is a benefit of reform. You have to balance the two. If the cost of reforms is more than the benefit that you get from the reform, SEBI is here, I don't know, but I think what I'm trying to say is somewhere we have to see the marginal benefit of that reform. Because risk, आप कुछ भी कर लें, 0.01%, 0.001%, 0.0001% रिस्क तो मार्केट में रहेगा ही. बट वो 0.01 और 001 और 0.001 रिस्क को कवर करने के लिए we can't go beyond a point. You know, SEBI preamble is development and regulation of the market. So I think we need to look at that. Okay. Also, coming to our market, you know, I said our markets are one of the most efficient market in the world. But there are some problems. In fact, we have been referring to those problems regularly on this platform. And cost of transaction is one of that. The cost of transaction in our market is one of the highest in the world. While our markets are the most efficient, the cost of transaction in our market is the highest. So I think I will not dwell more on that, but something needs to be done on that. Now, when we say market, market includes capital market, commodity market. Now, commodity market, again, you know, India is one of the largest importer, consumer, or user of commodity. And still, we are not a price setter. We are a price taker. And one of the reasons is, again, of course, cost of transaction, and then maybe regulation. Sir, many commodities have been banned, and we sometimes don't understand the logic. And let me tell you, if a commodity is listed in our market, the signals that it will send will be more beneficial for the, I'll cut short, will be more beneficial for the government, for the ecosystem, than if the commodity is not listed in the market. So I think something needs to be done regarding that, and more commodity needs to be introduced. हमारा तो देश है monsoon पे dependent है, and we don't have a weather index. We don't have a weather derivative.
I think in a country which is dependent on monsoon, वो तो चाहिए ही चाहिए. And of course, I'll have to cut short because Sabrawal ji is staring at me. We will have to also do something about debt market. Debt market is a very big area with lot of potential. Abhi, India has been included in the global debt market index, and I think some 20 to 40 billion is likely inflow. But our own market needs to have liquidity in debt market and provide that as an alternative investment avenue to the investor. But friends, our future is very bright. In fact, you are the luckiest person in this country. You are in the best space, and it is a Amrit Kal for you. But you have to make sure that it is a Amrit Kal for all your investors. Make sure you give them the right advice, you give them the right treatment, and make sure you treat investors' money as if it is your own money, not the other way. Yeah, thank you. I have to cut short my time only because, and not much introduction, though I can speak a lot about each of the dignitary. Now I am calling the Chief Executive MD of the MSCI, Litika Kunduji. She has more than 25 years of experience, worked in 3 exchanges. She had spoken at the international levels also. And 3 of the people have sent me the WhatsApp that while calling Mrs. Kundu, you should also mention that as Bombay Stock Exchange, derivatives have started. Even currency a competition can be there. Currency can start in that exchange also. Mrs. Litika Kundu, please. Thank you, Mr. Sabharwal, for the kind introduction. A very good morning, Honorable Minister, or everyone on the dais, as we're not allowed to say everybody's name individually. All dignitaries, ladies and gentlemen, thank you, CPAI, for having me over here. Though we do not exclusively stay on the commodity space, but yes, we are in the capital market space, and in our hearts, we are in the entire market space. So we hope that we'll be able to creating markets and market space, taking the cue right from even what Ashokji mentioned, and earlier what Mr. Narendra Wadhwa as well as Mr. Shashank mentioned about India being the largest democracy and being the youngest. We are 27. We are just 27 years old. That is our median age. And that is the advantage we have to take. And that's exactly what Mr. Ashokji was also pointing out about how the growth in the capital markets needs to be explored to a larger and a much bigger way. And how do we do it? Yes, we need to understand the products. Yes, we need to know the aspects and the risk involved in it. But what is it that we need to do a little more? We need to have more marketplaces. We need to have more entities come in who will give you more products, who will offer more services, and who will work on the markets also getting cheaper, which is a concern that does come to our minds as we want to create more market spaces. So I feel that those are the broader preambles that we take with us, and more importantly, the market structure, the regulatory structure, all of it helps. Of course, we do work together with the regulator, and we try to voice our opinion through as to how is it that we can make it more inclusive, not only for investors, because it will only become more inclusive when there are more exchanges, when there is more platforms, however, whatever name we may call them with, but the platforms which are offering safe and secure transactions across diverse products, and also competition laying down for ensuring that we do receive the best. You receive the best as intermediaries, and the clients there will receive even better services. So that has been a mandate that I feel is very strongly required to be taken forward. We are working on that, whether it be new products or whether it be
a new segment that may need to come in, and how exactly that should grow. The Introp has been an absolutely amazing market structure change that was brought in by SEBI. It has worked very well for the first 4 years. I'm sure market participants are reaping the benefits of the Introp on the clearing side because of the efficiencies of money that has come in. Similarly, having more trading venues, having more exchanges competing with each other is going to make it market efficient. And that is what is going to help. Of course, currently we have limited number of products. We have also requested at the regulatory level that we should have all the products included as part of the Introp so that it becomes more inclusive. And there is a more fungible way in which trades can be settled. It doesn't matter which venue you go to. It doesn't matter how many venues you go to, because that should not be the criteria. It should be that you have got efficient pricing. And to be price setters, taking a cue. Of course, we need products like weather or many other products where we are producers, where we are primary producers and consumers, and there are many such commodities where we are primary producers as well as consumers. So I feel there is a whole scope on a basket waiting out there for us, which is saying, please come. We are an English-speaking nation. We are definitely having mobiles across every landscape. More than 800 million people are below the age of 35. That is a very, very big uptake that we have. And I don't see any reason why we cannot grow from this point onwards. I see Mr. Sabharwal coming closer again, and I get the point. But my message is is what is straight from the heart, that let us together, whether it is at the market structure levels or at regulatory structure levels, let us be able to create a market which has multiple marketplaces, which is far more efficient, and where we are able to grow all together. Thank you. Thank you, madam. And now I am calling upon a gentleman to whom I had been following when I took my NSE ticket. I'm talking about the Managing Director and CEO of Bombay Stock Exchange, Mr. R. Sundaraman. Mr. Sundaraman, prior to joining BSC, was the Managing Director of the Indian arm of Bank of America. Prior to that, he has worked for 20 years in the National Stock Exchange. And as you are aware of, joining BSC in first week of January in a 8.5 months, where not only I say the derivatives, but the best indicator of an individual can be that what was the price of BSC 8.5 months back and what is the price of BSC today. That itself shows. And not only that, I am told that almost to every member in the country, he has visited their offices during this period. Mr. Sundaraman, I will not keep any limit for you. The reason being that out of the elite dice, you are the only one who will be speaking first time on the CPAI. All other, including Shashank Saxena ji, has spoken before. Over to you, Mr. Sundaraman. नमस्कार. माननीय मंत्री महोदय, Executive Director of my most respected regulator of the country, SEBI, and all my other colleagues from the industry and fraternity, and the dignitaries of CPAI and Sabharwal ji, thanks a lot. सर्वप्रथम एक चीज़ तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये BSE का प्राइस राइस में मेरा कोई हाथ नहीं है. मैं जिस एक्सचेंज में लिस्टेड हूँ उनकी MD इधर बैठे हैं, तो ऐसा ना हो जाए मैं घर जाऊँ मेरे को एक नोटिस आ जाए. जो हर एक कर्मचारी को करना चाहिए मैं उतना ही कर रहा हूँ. Switching back to English, Amritkal has already landed, and it is further proved by Chandrayaan 3 landing in a soft way.
As was mentioned by many of the distinguished speakers before, an economic growth becomes economic development when there is a strong technology base and a knowledge skill associated with it, with inclusiveness and a robust financial market. The term here most important is inclusiveness. We talked about an investor population of 14 crores. In the last 3 years, out of this 14 crores, 9 crores has gotten added. And within these 9 crores, 80% of more than 80% of the people are less than 40 years, and around 40% of the people are less than 30 years. It is young India. Latika ji mentioned about 27-year-old as median age. If you look at the demographic profile, a very significant portion of India is in income earning age, in that we are far better than China. So I would not like to set a target of 23 crores for us. Probably I'll be setting much bigger and larger target, because 14 crores is not a big number compared to the number of investment capable income earning individuals that we have in this country. Looking at the demographic profile and other things which we mentioned, if we are targeting for much more than 23 crores, my humble submission to all of you is, when you add investors, try and see how much you can orient yourself on women investors and students as investors. Nari Shakti and Yuva Shakti are going to take Bharat Desh to a very, very big level, which is going on. The recent bill that is passed underlines the importance of the balance that women can bring in running the country, in running an investment household, and running a portfolio. That's the first message I wanted to talk about. The second is, when we talk about all-inclusive growth, there are specific products in my mind we should start concentrating on, apart from many other products in many cases which we are concentrating. We all should concentrate in promoting mutual fund as an investment to start with for many of the Indian households, where we should concentrate on women and students. That brings them a habit of investment, and mutual funds are diversified portfolios with lesser risk most of the times, and therefore it's one area through which we should try to penetrate into the market. We talked about this 9 crores and how much is the percentage of what population and all. Let me give you one more data. A significant portion of this 9 crore increase is coming from outside T30, that is 30 top towns, you take away towns and cities. Outside them it is coming. And within this top 30, more contribution in coming from non-4 metros. So clearly there is a diversification happening already, inclusion happening already. It's our duty to bolster it. Probably mutual fund is a good way to go ahead. We have been contributing a lot thanks to the wonderful system I have inherited in respect of mutual fund. I'm sure all of you will take it forward. That is one point I wanted to leave with you all for thinking. 25,000 tons of gold, I am told, is lying with Indian household in forms of many things, including jewelry. And still we are not the price setter for bullion in any fashion whatsoever. Leave alone that, this gold is not making itself sweating to give us any income. Lot of efforts have gone in making digital gold tradable. Lot of efforts including schemes, ETFs, they have come. One such recent thing that has come is the electronic gold deposit receipts. It has not taken off because of certain policy requirements in this area. I wish that there are the policy changes that are being requested from the public are looked into, and this is made as an active investment so that people have the capability to invest in gold, and in case they want physical gold, they are able to get it. That's the second point I would like to mention.
The third point was something aligned to what Mr. Ashok Agarwal ji said, that about debt market being very important and prominent one, which has a lot of potential. Every Indian will be very, very proud to hold at least 1 unit of GOI bond. I have also contributed by lending some of my resource to Government of India. That's the way every Indian will be proud to look at. The day we are able to ensure that everybody who is able to put whatever money he wants is holding Sarva Pratham one Government of India bond, that day debt market becomes very, very prominent and deep-rooted. This country has survived and this capital market has survived because of the contribution of retail. After that, everybody comes. So I wish market microstructure changes, including policy changes, are brought in, whereby right from the issuance of a Government of India bond, it is landing directly with a retail investor. And when that happens, it's not that one benchmark bond is active for few months and after that it is off the radar. If all the bonds issued by Government of India is going to be active in a market, interest rate develops, interest rate curve develops, interest rate derivatives develop, multiple products can come into the market. Investor protection is the last point I would like to touch upon. Every one of us here should be very clearly aware of our responsibilities in protecting the investors. SEBI has a mandate and we do have a mandate as well. Therefore, whatever we do, we need to advise our investors properly. Investor education is a very important part. Product suitability and awareness of a product, to give that jankari to the investor, it's our duty. We are doing around 14,000 seminars in a year. The number looks big, but compared to the size of the population, it is not that big. Every one of you have a duty to the investors. I wish all of us do all the above which we talked about and all the other things mentioned, and fasten the pace of our path and reach 5 trillion and 30 plus trillion much ahead of the time we thought we will reach. Thank you so much. Thank you, Mr. Sundaraman. Though I allowed you as much time, but I'm really thankful you took the least time. And now I am calling upon Mr. P.S. Reddy, the Managing Director and CEO of the MCX. Mr. Reddy has a rich 30 years of experience. He was with Bombay Stock Exchange, then he was the Managing Director of the CDSL, and as all of you are aware of, that CDSL grows leaps and bounds when he was the Managing Director of the CDSL. Over to you, Mr. Reddy, not much introduction. Thank you, Sabarwalji. I will comply with your rules of the convention. Thank you. Honorable Minister Sir, Pankaj Chaudhary ji, other colleagues on the dais, off the dais, and thank you, sir, for inviting me for this convention. I have been part of this. I think although I have spent almost 4 years in MCX, we have not seen as much growth as we wanted to see in terms of development of the commodity markets. While we have been making every effort, I think there is something more to be done to make the commodity markets as vibrant as the markets in China or in US, in other places. One important thing is we have been saying, as others also have highlighted, we want not only just make in India, but we need to have it trade in India and price in India. Only when that will happen, only certain regulatory changes are made. And I think that's very important. The regulatory landscape must be relocated as to what is to be done to make this vision translate into a reality. The regulatory, as Mr. Agarwal said, certainty to regulation is very important. Suspension of the contracts also takes away
puts a lot of fear in the minds of the market participants. I think that is something needs to be addressed. There should be a proper rationale whenever such decisions are taken. As exchange, as a part of development of the awareness in this, we have engaged a lot of research institutions and conducted research studies. Whether the price volatility on the commodity markets have anything to do with the spot market prices, I think it's very clear. In fact, these markets are there to mitigate the risk, to help the people who are exposed to the commodity markets to hedge their risk. But that is not happening as of now. I think it's a collective responsibility to make this happen. That's one important thing. In fact, when I interacted with a lot of MSMEs, some of those industry associations are saying that many MSMEs were shut down during especially the COVID period and other thing because of the price volatility. Probably as we are looking at the mutual funds as investment vehicles for small investors, there must be some similar instruments for hedging or channelizing the hedging requirements of MSMEs and bring them to the exchange and mitigate their risk. I think that is what we have been working on. Hopefully we will be able to suggest some regulatory framework to our regulator, which will help in mobilizing the MSME hedging requirements and bring them to the exchange platform so that they will also be benefited. While on this topic, whatever we could do within the framework, we have been doing it. Especially we have permitted a lot of refiners, especially the lead and gold refiners, to deliver their metals on the exchange platform, and we have seen very good traction, and that is going to grow. And I think it's not just what you call the Amrit Kal, the Atmanirbhar Bharat is the slogan that we are making into a reality. And we have 5 lead refiners have been admitted on the exchange. They have been delivering few hundred tons of metal has been delivered. Similarly, the gold, about almost 2 metric tons of gold has been delivered by the gold refiners on the exchange. I think probably we should put our heads together as to what needs to be done to further develop this commodities market, and that is the foremost on the top of my mind. We have taken care of the equity markets a lot. I think we need to pay a lot of attention on the commodity markets. And I once again thank everybody for giving me an opportunity to speak. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot, Dr. Reddy. Really thankful. Minister ji has to take a flight. Sundaresan ji has to take a flight. Sundaraman ji has to take a flight. But and now I am calling upon Mr. Ashish Kumar Chauhan. Though for his introduction I can continue to speak for 5 minutes, but still I will try to cut short. I know that he is the MD of the largest derivative exchange of the world. He is a technocrat from IIT and IIM. He was in the initial team of the NSC, which set up the technology way back from the 1993, when most of us took this NSC ticket. That time he was with the technology team of NSC, and after that he switched over to Reliance. As a part of Reliance, he was instrumental even in bringing IIM to Mumbai. This IPL which you see, the Reliance team, he was instrumental during that IPL. We used to see his face a lot. Madhvaji is telling me reduce the introduction. So, but yes, Ashish Chauhan ji is a dynamic man after working for 13 years in Bombay Stock Exchange. Now he is the managing director of the largest exchange of the country. I also will like to inform you that he may not like that, but yes, he is a dignitary
He was being considered even twice for the Padma Shri Award also, though the screening committee decided it otherwise. But yes, a capital market person, Mr. Ashish Kumar Chauhan. आदरणीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, ब्रोकर्स, हम जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और एनएससी के साथ भी जुड़े हैं सभी लोग, तो आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 1994 में जब एनएससी ने अपना काम शुरू किया तो भारत का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो वेल्थ है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा मिलती है, वो 4 लाख करोड़ रुपए से कम थी टोटल मिला के। आज कई कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से ऊपर है, लेकिन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 3.2 करोड़ हो गया है। 80 गुना हुआ है पिछले 30 सालों में, 29 सालों में। 1994 नवंबर 3 को शुरू हुआ था, तो 29 सालों में जो स्टॉक मार्केट में जो प्रगति हुई है और भारत की जो संपत्ति बढ़ी है वो 80 गुना बढ़ी है रुपये में, और डॉलर टर्म्स में भी 35 गुना बढ़ी है। ऐसा कोई देश नहीं है, अमेरिका में भी डॉलर टर्म्स में 35 गुना रिटर्न्स नहीं आया है। भारत ने एक तरह से जो प्रगति पिछले 30 सालों में की है उतनी ही अगले 30 सालों में करते हैं, तो अशोक जी ने बताया हमारी जो जितने भी निवेशक है सबकी संपत्ति और बढ़ सकती है। तो मेरा यही कहने रहता है सबको कि हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाने की रेस में है, क्योंकि वही संपत्ति है। जो ट्रेडिंग है वो भी अच्छा है, उससे लिक्विडिटी मिलती है, लोगों को एक तरह से इन्वेस्ट करने की सुविधा बढ़ती है, बट उसका जो एक मापदंड होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट ने या कमोडिटी मार्केट ने समाज की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी की। तो ये एक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी स्टॉक मार्केट के चाहक भी हैं। तो 80 गुना जो स्टॉक मार्केट ने आपको एक तरह से संपत्ति बढ़ाई है भारत की, और अगले 30 सालों में और 80 गुना बढ़ती है या 100 गुना बढ़ती है, तो भारत विश्व के रईस देशों में उसका एक स्थान बनेगा। इंडेक्स, जैसे अशोक जी ने कहा, 20 से 25 गुना बढ़ा है। निफ्टी जो 1995 में नवंबर 3 को 1000 से शुरू किया था मैंने, ऑल्दो कई लोग जो मुझे आईटी के नाम से जानते हैं एनएससी में, लेकिन एनएससी का स्टॉक मार्केट भी मैंने ही शुरू किया था और इंडेक्स भी मैंने ही शुरू किया था। जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो आप कहते हैं वो भी मैंने ही शुरू किया था। तो उस समय जो निफ्टी मैंने बनाया था नवंबर 3 का बेस लिया था, 1000 लगा था, तो आज 20,000 है। उसके ऊपर तो 20 गुना तो आपने वहाँ पर ऐसे ही स्टॉक में डाल दिया होता तो 20 गुना तो आपको मिल जाता, उसके ऊपर जो डिविडेंड होता और होता। उसके बाद डिपॉजिटरीज की, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की, रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट, अब जो T+1, लेकिन T+2, T+3 सभी में भारत ने अग्रसर भूमिका विश्व में निभाई है। बाकी जितने भी देश थे, ऑटोमेशन कहो, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कहो, सभी चीज़ों में यही कम्युनिटी है जिसने विश्व को एक रास्ता दिखाया है। तो मैं आप सभी के लिए भी कहूँगा, अपने लिए भी एक ताली बजाइए कि आपने विश्व को एक रास्ता दिखाया। हम लोग कई बार कहते हैं कि हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, हम बन चुके हैं स्टॉक मार्केट के लिए। आज एनएसई विश्व की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, सिर्फ डेरिवेटिव्स में नहीं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 21 करोड़ होते हैं कई बार एक दिन में। नहीं, कई बार हमारा जो नॉलेज होता है एक दिन पुराना भी होता है, एक दिन में कई चीज़ें बढ़ जाती है। आजकल भारत में मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति काफ़ी जल्दी से होती है और हम लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन 21 करोड़ ट्रांजैक्शंस, विश्व में कोई संस्था नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है जो 21 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक दिन में करती है, जो 1500 करोड़ ऑर्डर एक दिन में लेती है 6 घंटे में। कोई गूगल, कोई फेसबुक, कोई ट्विटर, आप कर लो फेसबुक, ट्विटर वगैरह, आप क्वेश्चन पूछे जवाब कुछ और ही आता है। अपने वहाँ 5 पैसे का भी इधर उधर हो जाता है तो चलेगा। सेकंड के 10 लाखवें भाग में, माइक्रो सेकंड में हम काम करते हैं। उसमें से थोड़ा भी डिले हो गया तो आप बोलते हो, अनिल जी बैठे हुए हैं, तुरंत टीवी पे बोलते रहते हैं कि भाई स्लो हो गया एनएसई, है ना। तो हमने ये एक्सपेक्टेशन बनाया है
कि विश्व में बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और सिर्फ एनएससी की बात नहीं है, सभी मेंबरों की भी बात है कि सबसे बेहतर और लोएस्ट कॉस्ट और सबसे ज्यादा कंप्लायंस ओरिएंटेड कम्युनिटी है ये। टैक्स के अंदर भी सरकार हाथ भी नहीं हिलाती, उंगली नहीं हिलाती। सर जी, जीएसटी, एसटीटी, सेबी चार्जेस फॉर ब्रोकर्स, सेबी चार्जेस फॉर एक्सचेंजेस मिलके लास्ट ईयर एनएससी ने स्टैंप ड्यूटी मिला के 30,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। बाकी एक्सचेंजेस के ले लो, ब्रोकर्स के और ले लो, और ऊपर से कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे निवेशक भरते हैं वो ले लेते तो उसका 10 गुना हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट टैक्स कंप्लायंट, अदर कंप्लायंट, कोई भी कंप्लायंस हो तो ये कम्युनिटी है जिसने विश्व को राह दिखाई है, और भारत में भी सबसे कंप्लायंस ओरिएंटेड कम्युनिटी यही है। आज उसी की वजह से जब 1994 में जब एनएससी शुरू हुआ था तो उस समय 10, 15, 25 लाख निवेशक थे, उसमें भी सर्वे करना पड़ता था। आज 7.5 करोड़ यूनिक, 7.5 भी नहीं है, 7.8 करोड़, 7.8 करोड़ यूनिक पैन नंबर्स एनएससी के साथ रजिस्टर्ड है। करीब 5 करोड़ हाउस होल्ड है। 5 करोड़ हाउस होल्ड भारत के टोटल हाउस होल्ड के 17% है। तो हम करीब घर घर में पहुंच गए हैं और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप सभी को ये नंबर्स इसलिए याद रखना कि कई बार कहा जाता है, एक बार बजट के समय भी कोई टीवी पे मैं गया था, नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन टीवी पे उस जर्नलिस्ट ने कहा कि बजट बहुत अच्छा आया चौधरी जी का, तो थोड़े 1 लाख निवेशकों को फायदा होगा। तो मैंने कहा थोड़े 1 लाख नहीं, 7.5 करोड़। तो ये, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है अभी निवेशकों की, वो सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है। आप कहो फार्मर्स, हम लोग फार्मर से ज़्यादा है। आप कहो कोई भी चीज़ हो, कोई भी कम्युनिटी है, उससे ज़्यादा हमारी संख्या है। वो संख्या बल भी आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ रईसों का चीज़ है। ये नहीं है, ये हर व्यक्ति आज भारत के स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, भारत के कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हमें सबको ध्यान रखनी है। और ये जो निवेश बहुत बड़ी चीज़ होती है, निवेश करना। कोई कंपनी में कोई जोरहाट में बैठा हुआ है, कोई डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ है, जो श्रीनगर में बैठी हुई औरत अपना 1000 रुपये का हार्ड अर्न्ड मनी कोई सेलम तमिलनाडु की कंपनी में निवेश करती है, तो उसको पूरा भरोसा है भारत की सरकार पे, भारत के रेगुलेटर पे, सेबी पे, भारत की एक्सचेंज पे, मेरा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा और उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें एक छोटा सा हिस्सा मेरा होगा। इतना बड़ा ट्रस्ट जो है, लीप ऑफ फेथ, वो कौन क्रिएट करता है? आप सभी लोग क्रिएट करते हैं। ये ट्रस्ट मार्केट जो क्रिएट हुआ है, गरीब देश में पॉसिबल नहीं। भाई भाई को पैसा नहीं देता, पूछ लेना। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति दूसरे लोगों के धंधे में निवेश करता है तो बड़ी 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 बात होती है। गरीब देश में पॉसिबल नहीं था। 1994 में भी बहुत कम लोग निवेश करते थे। आज इतना बड़ा जो क्रांति आई है, इसीलिए आई है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस बढ़ा है सरकार की नीतियों से, रेगुलेटर की वजह से। लेकिन आप सभी ने उसके ऊपर मेहनत की है और मुझे उसका गर्व है, और हम सभी को गर्व लेना चाहिए हमारी कम्युनिटी पे। कई बार कहा जाता है कि भाई ये कम्युनिटी जो है वो एक तरह से क्या आपने समाज के लिए किया। तो ये सब जो हो रहा है, ट्रस्ट मार्केट क्रिएट करना, आपको बताऊं $2,500 पर कैपिटा हमारी प्रति व्यक्ति इनकम है। उस लेवल पे कोई कंट्री में ऐसा मार्केट नहीं है। 10,000, $5,000 में भी नहीं है, डबल में 4 गुना जो है $10,000 में भी नहीं है। $20,000 में एक ही मार्केट है जिसका नाम है चाइना। और चाइना में जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सरकार को जाके खरीदना पड़ता है, अपने वहाँ सरकार खरीदने नहीं आती है। तो ये जो वाइब्रेंसी है पूरी प्राइवेट, हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी से वो निवेश करते हैं। उसके लिए जैसे सुंदर रामन जी ने बताया कि हम बहुत सारा प्रयास करते हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, लेकिन आप सभी भी करते हो। और एक तरह से सबके हाथ में मोबाइल ट्रेडिंग की भी सुविधा आजकल आ चुकी है। इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट से परिचित हो रहे हैं, कमोडिटीज मार्केट से परिचित हो रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ों आप सबको जानना जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं भारत के जो विकास हो रहा है, भारत की जो संपत्ति बढ़ेगी, भारत का आगे जाके भी जो विकास होगा, जॉब्स क्रिएशन होगा,
उसमें स्टॉक मार्केट की जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। एनएसई आप सबके डिमांड से अब फ्यूचर्स नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में लॉन्च कर चुका है। ऑप्शंस की भी अनुमति सेबी ने दी है। मैं सेबी का धन्यवाद करता हूं, सुंदरेशन जी का खास करके, कि ये सब चीज़ों में उनका भी एक व्यू लिया जाता है। अब 23 अक्टूबर से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ऑप्शंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को मेरा हार्दिक निमंत्रण भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप एनएसई पे भी आप डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज डेरिवेटिव्स पे आप ट्रेड करके देखिए। आपका मार्जिन्स का भी एक तरह से अच्छा मैनेजमेंट होगा। वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी और जितने भी 7.5 करोड़ निवेशक का जो नेटवर्क है एनएसई का, जितने भी एचएफटी से, जो एफपीआईज एनएसई से जुड़े हुए विश्व से, वो सब आपसे कमोडिटीज में भी जुड़ सकते हैं। उसी के साथ मुझे मालूम है कि समय ज़्यादा व्यतीत हो गया है, और उसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सीपीआई को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया, और जय हिंद। आशीष चौहान जी के वक्तव्य के बाद मुझे लगा कि मैं ही गलती कर रहा था जो अंग्रेजी में बोल रहा था। मैं अब एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिससे हॉल का हर बैठा हुआ व्यक्ति परिचित है। मैं बात कर रहा हूं अनिल सिंघवी जी की। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, 30 साल से मीडिया में हैं, कैपिटल मार्केट 13 साल सीएनबीसी के एडिटर रहे हैं, और जी बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद 15% से 65% शेयर जी। भाई देखो, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी मैं उसी को दूंगा, मंत्री जी के सामने कैसे गलत बोलूंगा। हाँ, तो ऐसी बात कर रहे हो कि 65% जो है। मैं अनिल जी से एक विशेष निवेदन कर रहा हूं कि आप मीडिया से हैं, आपको 2 मिनट कहा जाए 2 मिनट, 1 घंटा कहा जाए आप 1 घंटा बोल सकते हैं। माननीय मंत्री जी को भी जाना है, सुंदरेशन जी को भी जाना है। आपको हम शाम को 40 मिनट देंगे, अभी आप सिर्फ 2 मिनट में मतलब आप अपनी बात को समाप्त करें। श्री अनिल सिंघवी जी। धन्यवाद सब्रवाल जी, आदरणीय मंत्री जी, सम्मानित मंच, मेरे साथियों। सबसे पहले भारत सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं, जिसके लिए पिछले 3 साल से मैंने अपने चैनल पर हर बार बात उठाई कि अब वक्त आ गया है एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे मजबूत है। आज तक का इतिहास उसका ऐसा है जिसने कभी कोई डिफ़ॉल्ट और डिले नहीं किया। उसके बॉन्ड्स को वो मान्यता मिलनी चाहिए जो अब तक नहीं मिली है। जेपी मॉर्गन ने अपने बॉन्ड इंडेक्स में हिंदुस्तान के बॉन्ड्स को शामिल किया है। मंत्री जी बहुत बहुत बधाई, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके प्रयासों से ये अब हो पाया है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। सिपाही के सेनापति वाधवा साहब ने कहा कि चांद पर टर्मिनल लगाना चाहते हैं। आप सारे सिपाही के सिपाही हैं। मैं यहाँ मीडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कुछ बातें सिर्फ पॉइंट्स के तौर पर आपके लिए रखूँगा। जो सबसे पहले ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के लिए चांद पर टर्मिनल लगाने का सपना साकार होगा और होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें धरती पर भी मजबूती से कदम रखने हैं। आज कमोडिटी मार्केट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है और बनेगा भी, लेकिन ज़रूरी है वॉल्यूम्स आए, मार्केट में डेप्थ हो, लिक्विडिटी हो, नए प्रोडक्ट्स हो, नई कमोडिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसकी जिम्मेदारी आपकी, हमारी, एक्सचेंजेस की, सबकी है। दूसरा एक और बात है, थोड़े मार्केट्स स्पोर्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। मंडियाँ मजबूत बने, भाव सही और स्टैंडर्ड के मिलें, वो बहुत ज़रूरी है। ये 2 काम एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स को करने हैं। सरकार की तरफ से मेरे 2 निवेदन हैं, मंत्री जी हैं। एक इमोशनल निवेदन है और एक इकोनॉमिकल निवेदन है। इमोशनल निवेदन मेरा ये है कि आमतौर पर कमोडिटी मार्केट को ये समझा जाता है कि महंगाई इसी की वजह से बढ़ती है। ये धारणा कई एक्सपर्ट्स की है, दिल्ली में बैठे कई ब्यूरोक्रेट्स की है। इसे बदलने की ज़रूरत है। वो कमोडिटीज़ जो लिस्टेड नहीं है, कोई चना हो गया, तुअर हो गया, कोई आपका टमाटर हो गया,
उसके दाम भी अनाप शनाप बढ़ते हैं। हमें सही तरीके से इसे रेगुलेट करके ये भ्रम दूर करने की ज़रूरत है ताकि कमोडिटी मार्केट का ज़्यादा विकास हो सके। एक और इमोशनल अपील मेरी है, वो ये है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी भी बन जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास दुनिया के सबसे 5 बड़े बैंक्स में कोई ऐसा बैंक है? क्या दुनिया के सबसे 5 बड़े म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है? कोई बड़े 5 ब्रोकरेजेस में कोई ब्रोकरेजेस है? सिर्फ हम अपनी पॉपुलेशन के दम पर, ज्योग्राफी के दम पर नंबर 5 बने, ये काफ़ी नहीं है। हमारी ताकत के दम पर भी हमें नंबर 5 होना चाहिए। हमारे बैंक्स, हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारे म्यूचुअल फंड्स दुनिया में टॉप 3, टॉप 5 में आए। इस बात के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में बनाने की ज़रूरत है जो दुनिया पर राज कर सके। और दुनिया का सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ, आज हम सबसे ज़्यादा गोल्ड के कंज्यूमर्स हैं, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेकिन आज भी हम प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस मेकर्स नहीं हैं। हमें हिंदुस्तान को इस हिसाब से बनाना है कि हम डिसाइड करें, हम डिक्टेट करें कि ये कमोडिटी या ये पर्टिकुलर मार्केट हमारे कहने से चलेगा। और मैं इस बात के लिए एनएससी और बीएससी को बधाई देना चाहता हूँ। एक ज़माना था, रोज़ सुबह उठकर डाउ देखते थे, एसजीएक्स निफ्टी देखते थे और डिसाइड करते थे हमारे बाजार कहाँ खुलेंगे, लेकिन आज हमारी तीसरी महाशक्ति हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मैं पहली महाशक्ति एफआईज को मानता था, दूसरी हमारे म्यूचुअल फंड को। अब आज हमारी तीसरी महाशक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है, हम डिसाइड करते हैं कि हमारे बाजार कब, कहाँ और कैसे खुलेंगे। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों की बदौलत हुआ है और इसे बिल्कुल जारी रखना चाहिए। दूसरा इकोनॉमिकल एक पॉइंट है जो मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन सब के बिहाफ पर। सर आप आते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटाने की सख्त ज़रूरत है। आज इक्विटी मार्केट में एसटीटी लगता है, हम जिस लेवल पर आए, सबसे बड़े एक्सचेंजेस हुए हैं, उसके बाद लगाएं, ठीक है, लेकिन आज कमोडिटी मार्केट अभी भी शुरुआती स्टेज पर है। इसे बढ़ावा देने के लिए सीटीटी घटाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मैं रेगुलेटर्स से भी यहाँ पर हैं, एक्सचेंजेस भी रेगुलेटर हैं। अशोक जी ने इशारों में बात की, हमें इशारों में बात करने की ज़रूरत नहीं, हम तो मीडिया हैं, हम तो सीधे सीधे खुलकर कह सकते हैं और हमें कोई न शर्म है न डर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि हिंदुस्तान के जो रूल्स रेगुलेशन है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे मजबूत है दुनिया भर में। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये देखना है, रेगुलेटर्स का जो काम है एक और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, गलत लोगों को पकड़कर उनको डंडा मारना है, लेकिन साथ ही उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो लोग सही काम कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें विकसित करने का, उन्हें सही तरीके से काम करने का रिवॉर्ड मिले, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ओवर रेगुलेशन, ओवर पॉलिसिंग में कहीं बाज़ारों का नुकसान ना हो, बिजनेस का नुकसान ना हो, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने आप सबको भाषण दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियों से भी अवगत हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग कोई भी अपनी आवाज़ जो एक्सचेंजेस के सामने, रेगुलेटर्स के सामने, सरकार के सामने खुले शब्दों में न रख पाए, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे कहें, मैं आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिस भी तरीके से, जैसे भी चाहे मैं पहुंचाऊंगा। और दूसरी बात ये, हमारी एक और जिम्मेदारी जिस पर हम काम कर रहे हैं और मजबूती से करना चाहते हैं, ये तीसरी महाशक्ति जो कोविड के बाद हिंदुस्तान के बाज़ारों में बड़ी तेज़ी से आई है, इसमें महिलाओं और युवकों का बड़ा योगदान है। ये नई तरह की एक खेप जो बाज़ार में आ रही है इन्वेस्टर्स की, उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। वो जिम्मेदारी हम समझते हैं और उस पर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Anil ji. And now I am inviting the most favorite office bearer of the SEBI, of the brokers also, Mr. V.S. Sundaresan. My chief mentor has told me that I should not give much of his introduction as I used to do. It is for the 6th time he is coming in a CPI program. He is the senior most officer of SEBI, worked for 34 years there, worked in all the departments. Presently, he is heading the surveillance as well as the technology department. But I know, sir, I cannot put restriction to a regulator. But today I am taking a courage to say that, sir, please restrict as Mantri ji's flight. He has to leave
as his flight is there. Try to do it faster, sir. We'll do it at some other time, a bigger deliberation with you. Over to you, Mr. Sundaresan. Mr. Sundaresan has delivered more than 400 lectures. 25 lectures he has given abroad. That much, he's called as the most knowledgeable person even in this SEBI also. Mr. Sundaresan. Good morning to all of you. Honorable Minister of State for Finance, thank you for being here in this program. The CEOs of MIIs, from media, Mr. Anil Singhvi. The position of the regulator is always, it is like an instrument called Mridangam in South. You have to hit both sides of the instrument to generate the sound, not the music. So it is like that. If we bring reforms and that too in a faster phase, the market participants criticize that, SEBI is proactive, SEBI is too much active, and so on and so forth. And if the reforms are slow, my media friend will tell SEBI is sleeping, SEBI is in slumber, SEBI only knows how to dream. So we have to get used to this type of comments that, whether we do, it is like they say in English, that makes you lose and tells you lose. So the position of the regulator is like that, and I am used to listening to this type of comments, so it does not matter to me. So what I would like to say is that I have brought a small presentation, and I will not take much of your time, sir. I myself will watch, because being a regulator, I have to be regulated myself first. And for the first time, a regulator is being regulated by a regulated entity. I am sure I am a good time manager, and I will ensure that it is done in that time. See, as far as SEBI is concerned, SEBI has been bringing a lot of reforms in the capital market, and already it is spoken how the Indian equities market has grown, what type of benefits it has brought to the economy, and where it has kept us in this world forum. Similarly, after the merger of FMC with SEBI, SEBI has tried to bring a lot of reforms in commodities market as well, and some of the reforms I am not going to read out, that is going to come in the screen. Lot of, as Mr. Wadhwa said, my three letters I use is 3 Ps, whether it is products, process, and participants. In commodities derivatives also, SEBI has attempted to bring more products, more participants, and process improvement after the merger of FMC with SEBI. But recently we have brought one of the very important reforms of introducing a gold spot exchange. But unfortunately, when the systems are in place, but the market has not picked it up because of various tax issues, and I am hopeful that in a short span of time, we will sit across with the government and resolve this GST issue so that the gold spot exchange can pick up, and the physical gold, whatever it is 25,000 tons, whatever is the quantum which is lying idle in various places, gets sent to the refineries and gets converted into a tradable form. So that, we are, in none of the commodity, unfortunate situation is that we are not a price setter, we are a price taker. And hopefully, with the IFFC, picking up a bullion exchange, we should, at least in gold, attempt to set the prices, if not the other countries accept that. Now, whatever we have done, unfortunately, the development has not taken place in commodities derivatives market. That is a reality. The statistics clearly shows that turnover is coming down. Now, whether it is because of the agricultural products being banned from trading, or whether the new products which are supposed to be introduced have not been introduced, the commodities derivatives market is in a very, very infancy stage. So there is a need to do something more. Now, the point is that how do we strengthen liquidity in this market? Now, for this, I think we need to compare what is the position in the equity segment. As we said that the number of investors are increasing, that is the reality, no doubt on that. Number of demat accounts have gone up, but statistics, if you do more and more into that, it will give you more and more insights. So from this slide, what I want to say is that
the number of investors are increasing, but not from all parts of the country. Our focus is still remaining on selected pockets in the system. And that is the work I wanted to show, that whether it is year after year, the number is increasing, but there is lot of untapped potential of investors available in this country, which we are not tapping. Whether it is the responsibility of the brokers or the MIIs or the SEBI, I don't want to say, but SEBI has taken the initiative of opening 50 investor service centers across the country in association with BSC and NSC. Out of that, 23 are already actively functioning. Remaining 27 are likely to be operational by March 2024. And because of that, when I want to come and speak here next time, I am sure that the contribution made by the tier 3 cities outnumber the tier 1 and tier 2, because that is where the potential is lying. And unfortunately, when I was speaking in the couple of months back in Association conference also, I cited the same thing, that instead of conducting this type of conference only in metro cities, we should go on conducting other places, so that there the people will become not only aware of, but they will also show some interest in getting into this capital and commodities market. Now, another important aspect is not only bringing the investors into the system. What the study conducted by SEBI shows that many people who trade in options are losing money. Therefore, there is a lot of scope for investor awareness. We need to educate the investors, make them understand what is the risk propensity, and according to that, they have to choose the product. Therefore, the important aspect is, one is to bring more investors into the system, at the same time bring investor awareness and education. Because if the investor is aware, he will know how to protect himself, rather than expecting that somebody will manage his money, then he will come and complain that I went by the wrong advice, and then so on and so forth. Therefore, investor education is very important, and we need to ensure that the right type of product is sold to the right type of investor. Now, what is the way forward for us? When we have this type of challenges, the important aspect is how can we bring more products into the system. Like electricity derivatives is one aspect which is going on for quite some time. Unfortunately, we are not able to introduce, despite generating so much of power. Today, we are power surplus country, but unfortunately, we don't have electricity derivatives. The smart market is doing very well, but unfortunately, there is again policy, paralysis taking place between the two regulators. We are sitting across multiple meetings. Only we are forming committees, and in my view, committees is only for key. And after the key is taken, we are back to square one. And one aspect is electricity derivatives, which is going on for the last 3 years. It has not seen the light of the day. Even other products, like more than 20 products are being recommended to the government for notification. Unfortunately, like as he said, weather derivatives, cement, aviation fuel, steel, these are all the products where we have to introduce derivatives. Because of that, it will contribute to the growth of the economy. There are a lot of research reports which are being published recommending that these type of products should be allowed for derivatives trading. But unless we bring more products, more choices to the investor, we will not be able to attract investors to the system. Similarly, as we have brought, process improvements in the equity market, we need to bring process improvements in the commodities derivatives market as well, so that if you want to call ourselves as a developed economy, commodity derivatives also have to play a significant role as much as equity market is playing. Because if you see any of the developed economy, there the turnover of the commodities exchanges are much, much higher than the equity exchange. Unfortunately, in India, we are not able to, so far at least, communicate that, understanding to the masses as well as to the policymakers. And we need to, together we have to ensure that more and more commodities are introduced and more investors are brought into that, so that the investors, the educated and awareness brings to the investors, and they come to the market, and because of that, these commodity derivatives grows much faster than what it is today. So my regular saying is that
do or die is the, the old saying. But I always say do and try. And if we try repeatedly, I am confident of success. So with that, I thank CPII for inviting me to this conference. And I am hopeful that whatever topics we are going to discuss in the afternoon will bring more suggestions to the system. And as a regulator, we are open for that. Whenever new suggestions come, we will definitely examine, and whatever best possible we will do for the market. Thank you very much. Mr. Sundaresan, you had just taken half of the time what we have allocated for you. We are really thankful to you. और अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था. माननीय मंत्री जी पिछले वर्ष भी हमारे बीच में थे. आप जैसा कि विदित ही है, मैं ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, 1989 में गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आए, 90 में डिप्टी मेयर बन गए और 91 से लेकर 2019 तक 6 बार लोकसभा के आप सदस्य रहे हैं और अभी पिछले 2.5 वर्षों से वित्त राज्य मंत्री हैं और वित्त डिपार्टमेंट में जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं वो भी आपके पास ही हैं. और ज़्यादा ना परिचय कराते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें. श्रीमान पंकज चौधरी जी. श्री सुंदेश्वर जी, आशीष चौहान जी, PS रेड्डी साहब, S राममूर्ति जी, श्रीमती लतिका कुंडू जी, अनिल सिंघवी जी, अशोक अग्रवाल जी, नरेंद्र वाधवा जी, यहाँ उपस्थित हमारे आए हुए साथी. किसी भी कार्यक्रम के लिए संचालक का महत्व बहुत बढ़ जाता है और वाधवा जी सबका समय तो रोकते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि संचालन में ज़्यादा समय आप खुद भी लेते रहे. सबरवाल जी, सॉरी. CPI द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आकर के यहाँ पर आप सबके बीच में बहुत ही प्रसन्नता हो रहा है जो आपने स्नेह दिया, इसलिए मैं CPI के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. मित्रों, अभी हमसे पूर्व वक्ताओं ने सबने माना है कि भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जो प्रोडक्शन भी है सारे दुनिया का कि भारत की गति और तेज होती ही जाएगी. अगर देखें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक तरफ जहां गरीब कल्याण का स्कीम चला रहा है, वहीं ग्रामीण रोजगार केंद्रित कार्यों को भी ध्यान में दिया है. और देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर सरकार का बहुत ही फोकस है. कोविड काल के होने के बाद भी, समस्या आने के बाद भी अगर देखें तो लगातार 3 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत सरकार का पुरजोर प्रयास रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आगे तेजी से बढ़े. पिछले 1 दशक में हुए संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ निवेश और उपभोग के दो विकास इंजन के दम पर भारत की अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा बन करके निखरा हुआ मित्रों. और ये सब यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री जी के दिशा निर्देश में वित्त मंत्रालय ने लगातार प्रयास किया है. और साथियों, अगर देखें तो 9 साल के भीतर फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही काम हुआ है जो कि पिछले 75 सालों में नहीं हुआ था. और अगर देखें तो पिछले 9 वर्षों की तुलना में, अन्य सेक्टरों की तुलना में अगर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है. और ऐसा
हो भी क्यों ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही किसी देश के प्रशासन के मेरुदंड होता है, चाहे वो वित्तीय समावेशन हो, चाहे वो वित्तीय साक्षरता हो, चाहे सभी को ऋण उपलब्ध कराना हो, और चाहे फाइनेंशियल मार्केट का सुधार एवं विकास हो। सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हमारी सरकार ने किया है। एक और अभूतपूर्व औपचारिक कार्य हुआ है। और अगर देखें तो गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जो गिफ्ट सिटी की स्थापना हुई, आप कल्पना करिए, मैं वहाँ गया था और मैं जब वहाँ का पूरा विस्तार से मैं सुना कि हमारे प्रधानमंत्री युग दृष्टा है, मुख्यमंत्री रहते हुए गिफ्ट सिटी के 15 साल पहले ही उन्होंने गिफ्ट सिटी की कल्पना की थी, जो कि सभी स्वीकृतियाँ उसकी भारत सरकार से होनी थी। लेकिन आज देखें कि गिफ्ट सिटी अपने मार्ग पर आगे चल रहा है। और मैं निश्चित तौर से अभी वाधवा जी कह रहे थे, मैं आप सबको भी कभी ना कभी वहाँ पर ले चल करके और आप सबके साथ भी वहाँ पर बैठ करके वहाँ मीटिंग करने का भी मैं प्रयास करूँगा समय निकाल करके। और इसके संचालन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC की स्थापना की गई और IFSC का लक्ष्य है कि गिफ्ट सिटी लंदन और हांगकांग की तर्ज पर फाइनेंशियल सेंटर की तरह उभर करके आए। IFSC का लक्ष्य ऑफशोर तकनीकी और नियामक ढांचे के साथ ऑनशोर प्रतिभा उपलब्ध कराना है। IFSC भारतीय कंपनियों के ऑफशोर वित्तीय केंद्रों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। भारत का वित्तीय इकोसिस्टम में दुनिया के कुछ सबसे अधिक ट्रेडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मूल निर्धारक बनने की क्षमता है, चाहे वो कमोडिटीज़ हो या करेंसी में, इक्विटी में, ब्याज दरों में या किसी अन्य वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में हो। एक अच्छी खबर है कि सऊदी अरब के भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में अपने सॉवरेन वेल्थ फंड का एक कार्यालय स्थापित करने में रुचि दिखाई है। मुझे बताया गया है कि CPAI का साझा दृष्टिकोण है कि भारत में व्यापार, मतलब कि भारत की वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाए। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था, जहां 2027 तक $5 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर वो शुरू से ही काम करते हैं। आज अगर 2047 में भारत को नंबर 1 कंट्री बनाना है तो उसकी कल्पना जो उन्होंने किया है तो उस पर कार्रवाई आज से ही उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम लोगों को एज ए मंत्री के नाते वो काम हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसमें कमोडिटीज़ का योगदान लगभग 40% होगा। इसके लिए प्राइस डिस्कवरी का या मूल्य खोज और होजिंग की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमारे कमोडिटी एक्सचेंजों और CPAI की अपने प्रयासों में तेज़ी लानी होगी। कमोडिटी इकोसिस्टम को प्रभावशीलता को बढ़ाने और किसानों को एक पारदर्शी बाजार संचालित उत्पादन प्रणाली में जोड़ने के लिए स्पॉट और वायदा का फ्यूचर्स को एक साथ लाने की आवश्यकता है। इससे भंडारण बुनियाद ढांचे और परखने या असेसिंग की सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में ट्रेडिंग के माध्यम से कमोडिटी इकोसिस्टम में ऐसे स्वीकरण की दिशा में एक पहल की गई है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसायों में नए अवसर पैदा करने में मदद करता है, व्यवसाय करने की लागत घटाता है और वित्तीय समावेश में मदद करता है। जैसे कि फाइनेंस में देखें तो अकाउंट एग्रीमेंट, स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म में संजीवनी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, भुगतान के प्लेटफॉर्म में भीम, फूड डिलीवरी में प्लेटफॉर्म, UPI, हेल्थ ID में आभा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म, कोविड टीकाकरण के लिए कोविड आदि शामिल है। भारत का डिजिटल बुनियाद ढांचा ई-कॉमर्स की पहुंच का विस्तार करेगा, जो आपूर्ति के लिए निकटतम उपलब्ध स्रोत के साथ ऑनलाइन उपभोक्ता की मांग का मिलान करें और ये अर्थव्यवस्था और अधिक गति देगा। एक अनुमान के अनुसार कि 2027 तक ई-कॉमर्स $200 बिलियन का अवसर हो सकता है। ONDC उपभोक्ताओं के एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी विक्रेता उत्पाद या सेवा का खोजने के लिए सशक्त बनाएगा, पसंद की वास्तविकता स्वतंत्रता प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टि सहकार से समृद्धि और माननीय गृह मंत्री जी
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयासों से यह निर्णय लिया गया है कि सहकारिता क्षेत्र में 1100 एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। मुझे आशा है कि और अधिक एफपीओ जोड़े जाएंगे और एक्सचेंज द्वारा कई नई पहल शुरू की जाएंगी, जिससे किसानों की कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार तक पहुंच मिले और वो अपने मूल्य जोखिम को कम कर सकें। वित्तीय बाजार नियामक ढांचे को आज बैंकिंग और पूंजी बाजार नियमों के वैश्विक निकायों से सबसे अधिक रेटिंग मिली है, जिसमें आरबीआई और सेबी को चीन और अमेरिका ने अपने साथियों की तुलना में बेहतर दर्जा दिया गया है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने का एक सपना देखा है, और वो सपना तभी पूरा होगा जब भारत का समग्र विकास होगा। चाहे वो नागरिक को मूलभूत सुविधा मुहैया करानी हो, चाहे वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का मूलभूत ढांचा खड़ा करना हो, चाहे देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंक की सुविधा पहुंचानी हो, और चाहे गिफ्ट सिटी जैसे प्रयासों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय बाजार के रूप में खड़ा करना हो। चाहे एक और हर हाथ को स्किल कर उसे काम देने की बात हो, और चाहे भारतीय इनोवेशन स्किल का टैप कर विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करना हो। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, जहां एक और हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया संसद भवन, भारत मंडपम और यशो भूमि का भी निर्माण हो रहा है, जहां एक और आयुष्मान भारत योजना से नागरिकों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड की 2 वैक्सीन भी भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को भी दिया गया है, जहां एक और जन कल्याणकारी योजनाओं के महिलाओं को वरीयता दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल पास कराकर महिलाओं को नीति निर्माता के रूप में उचित भागीदारी देने का भी कार्य हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, इन सब के बाद से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अभी अनिल जी ने भी जो हमें सुझाव दिया है, और निश्चित तौर से वाधवा जी और सारे लोग मिलते मुझसे रहते हैं, आपकी कोई भी ऐसी अगर कोई समस्या हो, कोई बात हो तो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी अनिल जी ने जो सुझाव दिया उस पर भी मैं विचार करूंगा। आज के अवसर पर आप सब ने मुझे यहाँ समय दिया, उसके लिए मैं सीपीआई के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग हमारे सभी पॉइंट टच कर दिए। अपनी तरफ से मैंने जितना बायोडेटा सबका आया था उसका 1/4 बोला था, पर आगे और कम करूंगा। एंड जस्ट फॉर दी एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट वी विल बी प्रेजेंटिंग ए मोमेंटो टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस. I am first requesting our title sponsors, Mr. Subhash Agarwal, Mr. Mahesh Gupta, and Mr. Yashpal Mendiratta to present memento to Mantri ji. Memento भी है और I will request our executive committee member, Mr. Sunil Niyati from Indore, to present it to Mr. V.S. Sundaresan.
I will request Mr. Sachin Gupta of Share India to present it to Mr. Ashish Kumar Chauhan. Our National Executive Committee member Suresh Oloji can also come. I will request Mr. Kishore Narne, Director Motilal Oswal Securities, a commodity person, to present it to Mr. Reddy. I will request Mr. Vaibhav Shah from Monarch Ahmedabad, our executive committee member, to present it to Mr. Sundaraman. Mr. Vaibhav Shah. आप साथ लेके जाओ ऊपर. हाँ, चलिए. I will request another TV personality who comes on even Z Business for Commodities, Mr. Ajay Kedia, our Vice Chairman of the West, to present it to Mr. Anil Singhvi. As we have not much ladies, I will request Shruti Agarwal to present it to Litika Kundu. श्रुति जी को कोई और चीज में यूज करना था पर अब शायद नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी की वजह से. तो and now I am requesting our most dynamic past president, Mr. Shivkumar Goyal ji, to present to give a concluding remark and formal vote of thanks. I will just like to remind you that during the tenure of Mr. Shivkumar Goyal ji, the CPI had the maximum seminars during his presidency. Not only that, the CPI become the member of the RMRC and CDEC committee also during his presidency only. Mr. Shivkumar Goyal. Thank you, Sabharwal ji. I am privileged to propose a vote of thanks. Really, we are honored by the presence of our Minister of Finance, Shri Pankaj Chaudhary ji, for sparing his valuable time in spite of being so busy. Our Sundareshan ji, Executive Director, SEBI. Our Shashank Saxena ji, he has gone because he was busy. He's sparing his time. And all the dignitaries from the exchanges for sparing their time, all our sponsors, all our exchange partners, all the our members for having spared their time and ensuring that this event happens to this magnitude and this level. For the concluding remarks, I will like to say I have learned few things and major inputs. India has become the 5th largest economy. We are 7.8 crore investor, and we have a very strong and efficient market. Our NSE, the exchange, is the largest derivative exchange in the world. And in terms of growth potential, I see that 1 lakh invested today becoming 43 lakhs very soon by the 2047. And we have a large potential to grow the investors level from 7.8 crore to maybe 30-40 crore. So the future for all of us is very, very bright, and we got certain inputs in terms of for the growth, inclusive growth. At the same time, how to deepen the market, particularly commodity market, by adding more products, and the regulators and the policymakers seeing that the commodities are not banned if they can be increased, and also the cost of transactions if could be seen, so that our commodity markets deepen to a great extent.
And again, I congratulate all of you that we will all witness India becoming the third largest economy very soon by 2030 as the vision of our Prime Minister, and the developed economy by 2047 in the Amrit Mahakal. Again, sir, thankful, very highly grateful to you for having spared your time, sir. Thank you, sir. मैं अभी सभी से अपील कर रहा हूं कि हम अभी टी ब्रेक नहीं करेंगे, इमीडिएटली अपना सेशन शुरू करेंगे। सिर्फ 2 या 3 लोग मंत्री जी के साथ जाएंगे, बाकी सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन वी आर स्टार्टिंग राइट अवे। वी विल बी चेंजिंग द डाइस इन 2 मिनट्स। इसी टेबल पे 5 कुर्सी हटवा लो और 5 रहने दो। भाई ज्यादा लोग बाहर नहीं जाएंगे, खाली 2-3 लोग मंत्री जी के साथ जाएंगे। जयंत, आ जाइए ना। Okay, so I won't take much of the time, although Sabharwal sir, since morning, has been cutting time for everybody, and he has been given me the liberty to speak and introduce the topic for the first technical session today on this 9th International Convention of CPAI. My honor to have the people on the dais. I will introduce to them later when I introduce this particular technical session, which is about the global opportunities and, honestly, the India space in those global opportunities. A very good afternoon to all of you. I would say that we just heard the comments from the Honorable Minister of State for Finance talking about in his address about the India standing and particularly about the gift city. And this particular panel, the first technical session itself on this international convention relates to that said topic. I have written certain words, and I will do justice to those words which I have written to introduce this particular technical session. Now, we just had a successful completion of the G20 summit this month. The event has created positive vibes, and I would expect, and we all expect, that it would continue to do so for many years to come. India's position in the global landscape has changed tremendously over the last few years, and thanks to our Government of India for taking the proactive reforms and the measures for making our presence felt world over. Now, in continuation to this initiative of the Government of India, forward, CPI has done its bit and has done a justice also to have the first technical session in its 9th International Convention today, aptly titled, I'm saying aptly titled as the globalization
of Indian capital and commodity markets, and opportunities at the IFSC. Now, what the Honorable Minister of State for Finance was talking about is the Gift City IFSC. Let me begin to introduce briefly the session for which we are here today to the delegates present. Maybe 40% of the population is still here, and thankful to all of you to be here. To start with, I take this pleasure to quote the words of our Honorable Prime Minister. The aspiration of the Gift City, the quote of that is, "The Gift City is an important gateway to connect India with global opportunities. When you integrate with Gift City, you will integrate with the whole world." What's a better way to say that India has arrived in the global landscape? Be it the Chandrayaan landing on the moon, and that too on the south pole of the moon, or the successful completion of our presidency for the G20. I won't take much of the time to introduce Gift City because the panel discussion would take the points up. Mr. D.K. Agrawal is the chair of the session. Everybody knows him who's sitting here. I don't want to introduce him, but for the sake of saying it, he's the chairman and managing director of SMC Investments and Advisors Limited. He's the past president of CPAI and the PhD Chambers of Commerce. We don't have the presence of Mr. Dipesh Shah, unfortunately, today. He is the executive director of the unified regulator in the Gift City IFSC, which is called as International Financial Services Center Authority. He's the executive director of the business development in the authority. We have Mr. Sandeep Shah. I keep on talking with Sandeep for quite a long time, at least for the last 2 years, I remember. We are very active. I represent Anand Rathi, and I take care of the Gift City business apart from the commodities and the currencies business, which we take care. And I've been in touch with all the esteemed panelists, including Mr. D.K. Agrawal sitting out here, on a regular basis in terms of the development of the Gift City. Sandeep heads the business development function within the Gift City IFSC. I have Mr. Ashok Kumar Gautam. He's the MD CEO of an exchange which is in itself a very promising exchange. Apart from whatever we have understood about the NSEs and the BSEs of the world, this exchange serves a very different purpose, what we were listening from the last couple of hours. All the people, all the dignitaries in the first session have mentioned about India's importance in the commodity markets, and everybody, so to say, has referred to that India has a second largest consumption of gold after China. I don't know whether it is first now, but as far my understanding goes, it is either first or the second. And Mr. Ashok Gautam is the MD and CEO of the India International Bullion Exchange. Much is happening at this particular exchange, and I would say that this exchange would be the gateway for people to import gold, two qualities of gold, which definitely the panel discussions would take further.
different from the orthodox style of importing gold. So welcome you, sir, on this particular panel. Nitesh Jaiswal, he heads the business development at the NSE International Exchange. The NSE Exchange is a subsidiary of the NSE, and हाँ बस खत्म ही कर रहा हूँ sir. And I think we have Mr. Rajesh Gandhi, who's partner at Deloitte. So with that note, I thank you all to be here, and over to you, Mr. Agarwal. अग्रवाल साहब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी डीके भाई वो एक वेलकम टू ऑल ऑफ यू सो वेलकमिंग मिस्टर डीके अग्रवाल आई एम रिक्वेस्टिंग our one of the very senior most person, as I am able to see in the hall, the only person who has a age more than me, Mr. K.M. Agarwal, the past president of the Institute of Chartered Accountants. He was president of the institute 35 years back. So I request him to Mr. K.M. Agarwal. He is a stockbroker also, not as a chartered accountant. Yes, he is 75 years young. I will request Mr. Santosh Kumar, who has come from Coimbatore, to present it to Mr. Sandeep Shah. संदीप जी प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं गिफ्ट सिटी के, इसलिए आपको इनसे करवा रहा हूं. I will request Mr. Swarna Bhaman from Chennai to present it to Mr. Ashok Gautam. अशोक जी ये भी गोल्ड एक्सचेंज का प्रोस्पेक्टिव मेंबर हैं चेन्नई के. I will request Mr. Saurav Bansal, the Vice Chairman of CPI North India, to present it to Mr. Nitesh Jaiswal. I will request Mr. Jatendra Keshwani from Agra to present it to Mr. Rajesh. माथुर जी आपको भी देना तो पड़ेगा, हमको नवीन जी कहाँ चले गए. हाँ जी, तो I will request your ex-colleague Anuj Gupta ji to present it to you. Mr. Anuj Gupta. भाई जिनका नाम सोचे हुए थे वो बाहर चले गए, जो सामने नजर आ रहे हैं उनको बुला रहा हूं और क्या करूं. And Mr. D.K. Agarwal, it is all yours and you have only 28 minutes. Am I audible? Yes. Thank you, Naveen ji, first of all, for giving a very good introduction and making my job easy. First of all, I would like to thank all my panelists. And one unique thing which I noticed, that they all come from Gift City. So a session on Gift City, everybody coming from Gift City, I think that is something very good. And even Mr. Naveen Mathur, who gave the introduction, he has also come from Gift City.
And as the word gift city says, it is a gift to the country. And as our Honorable Minister mentioned, that 15 years back, our Prime Minister, when he was the Chief Minister, he took that initiative and the thought that let us have a international financial services center in India to make India as a financial hub. There was a Percy committee report way back, around 20 years back, which talked about making India as a financial hub. But the report ended with a lot of ifs and buts, that in India we do not have a unified regulator. There are so many hurdles that it seems to be a dream to make India as a financial hub. But things are before us. We know that gift city is very much there. As we have landed on moon, now we have a gift city. So with the tremendous support from the government, gift city offers enormous opportunities. What is there in gift city? There is no income tax for 10 years out of 15 years. There is MAT at the rate of 9%. Then investors, generally NRIs and foreign investors who trade into gift city, there is CTT, there is STT, there is GST, there is stamp duty. So all these things are not there in gift city. So the cost of transaction is very, very low. And the kind of infrastructure which has been created in gift city is humongous. I'm sure that many of you must have gone there. And there are 11 swanky tall buildings. Then there are a lot of parks which have come up across on the both sides of the roads. And the city is really well planned using technology. There are underground tunnels. The kind of infrastructure which they have created, it is truly a smart city of India. And it is the first international financial services center of India. So, we have a very strong Indian diaspora of around 3 crore people. And their combined wealth is around $5 trillion. And then India is a favorite destination as of now for foreign direct investments. And everybody is bullish on India now. Everybody wants to come to India. So gift city is one platform which I'm sure that is going to get that is going to become the gateway of foreign investments, foreign forex inflow into the country. Recently we have heard, we all know that the Nifty, the Singapore Nifty, which was traded on Singapore Stock Exchange, that has now migrated on NSE platform. And on the first day itself, the total open interest on that exchange was $8 billion of gift Nifty. Now we call it gift Nifty. And $1 billion was on account of options. So total $9 billion was the open interest on the first day of its operation, that is 3rd July 2023. So to understand what has been the journey of gift Nifty, we have Mr. Nitesh Jaiswal. So we would understand from him how has been the journey and what kind of trading is happening, what kind of open interest has been created, and what is there for Indian investors, what is there for intermediaries who are members of Gift City Exchange. So let us hear out from Mr. Nitin Jaiswal, who is the business head, NSE IX. Mr. Nitin Jaiswal. Hope I'm audible. Yes. Okay. हिंदी में बोलोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा. जब अहमदाबाद में आएंगे तब अंग्रेजी में बोलूँगा. ठीक है सर. So DK ji ने introduction दिया. So what I will compare the migration of XGX Nifty to Gift Nifty is not less than Chandrayaan landing on the moon. So it's basically you can compare in the financial terms what we have achieved
is basically that. Now, why I'm saying this? Just to give you a brief history on the Nifty part. 25th September 2000, 23 years back, we have given Nifty to Singapore. So it was listed on 25th September 2000. And now see the coincidence. That was Monday, and the day after tomorrow, which is 25th September, is also Monday. So, I mean, so 23 years almost, it was got traded on SGX. So after 23 years, the Ghar Wapsi of Nifty finally happened on 3rd of July. So now what important about it is not only the volume, but you know, when the news was came, you know, that the Nifty will be traded on the gift Nifty, as a gift Nifty on the NSE International Exchange. So there people were skeptical. Volume kaisa hoga? Open interest kya hone wala hai? Because you know, it was trading like, and just to give you an analogy, the future volume of NSE India futures is, you know, 1/3 of what we trade on the gift Nifty. And the open interest in Nifty futures is 3 billion, whereas we have an open interest of more than 10 billion. So this is the product we are trying to launch on our exchange, I mean, to start. So people are skeptical, but you won't believe, as DKG rightly said, the entire open interest got shifted on day one. And from there, sir, what we have done, 8 billion we have taken, and we have increased it to 12.7 billion. So that's the open interest we have achieved last month. And talking about the volumes, so almost 80 to 90% volume, which was there on the SGX, is now happening on our exchange. And we are very much sure that aane wale samay mein it will further more. Just to give you some numbers, just 10 days back, we have achieved 3,36,000 lots. Now, what does it mean? Jab SGX Nifty, SGX mein trading ho rahi thi as an SGX Nifty, so this is the highest was 3,52,000. So 3,36,000, you know, from January, if you see, this is the second highest volume of the Nifty. So that means the entire confidence of the, you know, the international fraternity is there on this product. Now talking about what we have achieved in the almost 60 trading days has passed, right? So the total cumulative 4 million contracts of Nifty futures we have traded with a combined value of $150 billion. So that is the amount of this thing. And the best part is, I remember, you know, Ashok ji was talking about the cost. So the cost of trading Nifty on our exchange, which is NSE International Exchange, is 90% less than what you trade Nifty on the NSE International, on NSE India. So 90%. And it is fine, but Indian retail investors, they are not benefiting by this. So what is there for Indian retail investor? Sir, retail investor, unfortunately, because since a derivative product, retail investor cannot participate in that, in the Nifty run. But we have product, a US stock listed on our exchange where Indian retail investor can participate. First time in the world, we have listed 50 top US stock exchange in the form of a DR, in the form of a deposit receipt. We have listed on our exchange that retail investor can participate. But Nifty, yes, if you become a member, you can trade on a proprietary trading basis. You can, you know, enroll NRI. And the best part is, you know, there's a segment called EFI, eligible foreign investor. So like if you want to trade in India, you have to take a FPI license. In Gift City, for trading on this product, you don't require any FPI license. Even if you're a foreigner, you can easily come as an EFI. No registration required, no PAN card required. Thank you. Recently, we have seen that a lot of fund managers, a lot of entities who are managing fund, they want to set up their entity, the AIF category 3, AIF category 1 or AIF category 2 in Gift City. But why they are looking at Gift City as a destination? What value it holds and how easy it is to set up a fund there? And what are the extra advantages? Because people would like to compare, they have option to set up their fund in Mauritius, in Singapore, in DIFC, Dubai. Why people are opting for setting up their funds in
gift city or how gift city can become an alternative, what extra advantage it offers. Sure, sir. Thank you. I don't know if I'm audible. Am I audible now? No, you can take this. Am I audible? You can take this. Ye video. Sir, first to answer your earlier question on the ability for Indians to trade GIFT Nifty. Sandeep, you can correct me if I'm wrong, but if you set up AIF in the GIFT city with Indian investment, then you are allowed to trade foreign securities and you are also allowed to trade GIFT securities. Sandeep, that is correct, right? So, sir, to answer to your question, even we as Indians can benefit from trading of Nifty in the GIFT city by setting up a fund in the GIFT city. What we are not allowed to do is to invest in a GIFT city fund which will again invest back in BSE NSE because that becomes round tripping. So वो allowed नहीं है, बाकी GIFT में हम invest कर सकते हैं. As Indians we can invest abroad, तो वो everything is allowed there. Of course हमको tax exemption नहीं मिलता है because as Indians we are taxable on our total income. तो government doesn't want कि हम GIFT के through root करें और जो otherwise taxable है उसको हम tax free treat करें. So that is as far as we are concerned. Now why GIFT city? I mean every week 3-4 days I get one request from a fund manager to set up a fund in the GIFT city. That is the level of interest now. I mean any mid-size large fund manager in Bombay, Delhi, Bangalore is looking at a GIFT city fund. There are a lot of advantages. I know we are short of time, but I'll only talk about the few. So income tax, of course, 10-year holiday is there. There is GST exemption, which is not there in Bombay for the manager. The manager also has regulatory flexibility, which is not there in a normal fund, which means that there are no concentration limits. You can invest in one security. If you do a AIF here, you have to invest minimum 4 securities. In regular AIF, you cannot have leverage. In category 3, you can have 2:1 leverage. तो उसमें आप derivative नहीं कर सकते हैं because if you do only derivatives, then 2:1 does not help. GIFT में there is no leverage restriction. So you can set up a GIFT city fund, do 100% derivatives. There is no issue on that. So these are the benefits to the manager. Plus आपको flexibility मिलती है to invest in different kinds of securities. So apart from regular stocks, you can do unlisted investments. In fact, up to 25% of your portfolio, you can also do real estate, bullion, gold, which are not securities as such. So you get much more flexibility in investing, much more flexibility in the type of assets, plus an income tax holiday. Now, investors' point of view say, why should they consider GIFT as against, let's say, investing in a domestic AIF or investing in, let's say, a Singapore or Mauritius fund? Again, GIFT is more advantageous for investors. I'm particularly talking of NRI and foreign investors for various reasons. One is that for any non-equity gains, they are fully exempt if the investment is made through a GIFT city fund. आप अगर कोई US fund है या UK fund है, उसको कोई tax exemption नहीं है. If an NRI invests in a domestic AIF, let's say in Delhi, no tax exemption. But if an NRI invests in a GIFT city fund, equity को छोड़ के हर एक पे there is tax exemption. So whether it is derivatives, bonds, REITs, InvITs, any other kind of security, whether invested in India, invested in GIFT city, or invested abroad. Rajesh ji, what I understand that if you float a fund in GIFT city category 3, then one you rightly mentioned that there is no restriction on the leverage. The other thing is that if you have not taken investment from Indian residents under LRS and you have money taken from say NRIs and FPIs or foreign investors, in that case you can get yourself registered as a FPI and you can trade into Indian market. I think that is a huge advantage because we Indians, we are more comfortable trading into Indian market, and as an FPI you can trade in Indian market, and the other advantage is you are recognized as a QIB, and when you are recognized as a QIB you can apply in Indian IPOs, and we all know that nowadays these IPOs are giving very good returns. So the income of a AIF category 3 out of GIFT city is exempt in the hands of investors if it is a derivative income. Only the income from capital gains, short-term capital gain, is taxed at the rate of 15%.
that is the tax which one has to pay. Otherwise, that the fund has to pay. At the investor level, there is no tax, and he doesn't have to pay any tax on that. So I think because of that region, there is huge rush. Number of applications are lined up there. Already 74 FME, the fund managing entities, they have already come up, and the figure keeps on changing very fast. Today, maybe 10 days back, this figure is 74. Today, maybe the figure would be more. And these 74 FMEs, they are managing. Of course, some of them are not managing also, but 60 funds have already come up, and out of that, 33 funds are venture funds or private equity funds. And they have garnered only, they've got the commitment of around $10 billion. So what I'm trying to tell that GIFT City has become a very attractive destination. And I mentioned a figure that our Indian NRIs, Indian diaspora, which is around 3 crore people, having a wealth of around $5 trillion. You know, for them, investing into GIFT City, which is a tax haven for them because there is no tax. So they find it very attractive, and it is a good opportunity for India to attract funds from NRIs. So all those people who are into fund management, they should seriously look at this opportunity. And as he mentioned that if you take investment from Indian through LRS route, then you cannot bring that, you cannot invest into Indian markets through FPI. So yeah, sir, एक दो चीज़ और बोलना चाहूँगा. You rightly said. NRIs का एक concern होता है कि why should we invest in AIF? We don't want to get a PAN, return filing. Some of them don't have other income, so we don't want all that obligation in India. If you invest through a GIFT City fund, the investor does not need a PAN. Investor does not have to file a return. It is just like investing in a foreign fund. That is one big advantage which GIFT City provides as compared to anyone else. And lastly, your dividend interest income both is also taxed at a lower rate, 10%, which is the lowest rate you will get anywhere, and without any surcharge. So 10 does not become 11, 12. Dividend interest is taxed at 10%. Again, as Agrawalji said, at the hands of the fund, investor पे कोई tax liability नहीं है उसमें. Perfect. Thank you, Rajesh ji, for enlightening us. And we have seen that we have opportunity of trading in GIFT City in both the exchanges. But what are the other opportunities available to any intermediary who goes to GIFT City? So we have the business head of who takes care of IFSC representing GIFT City. So Mr. Sandeep Shah, we would like to understand what are the other opportunities available to us. Sure. Yeah. Thank you. No, I think generally when we do such financial services sessions or the seminars or the conference, and as we also discuss in the first half, the discussions are in terms of how can we reduce STT, CTT, or the stamp duty or the income tax. But generally when we organize in GIFT City such sessions, we receive the request or complaint saying that we don't get the space. How do we find the space? Because there is a very limited scope in terms of reducing or requesting for reducing the income tax or the any charges, because I think what Government of India has taken very important initiative, and I think I'm not sure how many of you realize that today India has two regime. I think the domestic financial market, and now Government of India has given opportunities for all of us to see how can we go global using very efficient platform, that is International Financial Services Center. I think while I'll answer that question in terms of what are the opportunities, but I would like to take this opportunity to give a message to the many of the players sitting here, and many of you are already present in GIFT City already. SMC Globe Capital, or SMC, I'm using this name because you are the title sponsor, but it applies to everyone. We have created SMC or Globe Capital for the India. Now the time is to create it for the world, and that's where the opportunity arises, where how can you use GIFT City platform to access the global markets, to provide access to the international market very efficiently. Today, I think in the morning session, it clearly gives a message that India is not only looked more from the investment perspective, but it is now also looked more from the perspective of source of capital. People are looking at India, how do we raise money from India as well, and that's where I think
as rightly in the beginning, D.K. Agarwalji mentioned, the objective of the GIFT City IFS is to provide efficient platform for inbound and outbound gateway. Intermediaries, whenever they discuss, I think capital market intermediaries specifically, I think while GIFT Nifty or this trading on the stock exchanges is one of the opportunities that you can look at, but I think the opportunities are quite broad. Asset management, I think one platform that we discussed, because we are talking about more than 3-4 crores of NRIs, and many of them are actually looking to invest in India. If you have looked at SEBI's recent consultation paper, which says that NRIs now will be permitted to invest 100% under the FPI route. Today, many a times a mid-size or a small-size broker, their limit is to reach to the NRI investors and very limited access to the actual foreign investors. But they were not able to set up fund overseas because the limit was 40, you can't raise more than 49% from them. I think the direction is that how do we allow 100% NRI investment through the FPI route in India, and that's where I think apart from intermediary business where you will trade on the IFSC stock exchanges, there is an opportunity to look at the fund business, and Rajesh bhai clearly mentioned about the benefits that you have. When you trade on NSE Mumbai or BSE Mumbai, I am talking about the mainland India, the tax on derivatives is zero. Generally, in India we pay probably 30% tax on the derivatives, but it is zero when you trade as FPI from GIFT City. So that's the kind of opportunity you can look at to raise money from the NRI investors. The second, another opportunity, basically again, as an intermediary you can look at is the becoming an international, a member to trade the international markets. GIFT City today provides an opportunity through global access where you can trade easily any other markets in the world. Generally, earlier you used to set up your trading desk in Dubai or Singapore to trade on, London or New York or the Singapore markets. But you don't need to go abroad now. You can simply set up a desk here, become a member of the exchanges in GIFTs, take direct membership of the exchanges overseas. You can also use any international broker to become a client of them and start trading in the international markets. So I think that's second bigger opportunity which intermediary can look at. The third opportunity, I think, which is also very recent, is where you can also think of listing the exchange traded fund ETFs or even the units of the AIFs on the exchange platform in GIFT City. I think that's where you can actually attract the larger NRI investment and also the resident investors, because today as an individuals like you and me, we are allowed to spend $250,000 basically to invest overseas, and that's where you can use the retail and the NRI investors community to allow them to access the gift market and the international markets. There are multiple other opportunities in terms of becoming an investment advisor, becoming a portfolio management services for the foreign investors. You can actually become the distributor of the wealth products of the international investment products. So I think time is now for the next generation to take it to the next level and think of a business where you can become a global firm. So you don't look at intermediary as a firm, you now think of how can you become a financial institution and from only a capital market intermediary. So that's where I think opportunity lies. Thank you, Sandeep ji. Well, you mentioned a very important point. If you incorporate a fund out of Mauritius or Singapore or say any other jurisdiction, and you take money from say NRIs, then and if you become a FPI, then within 2 years you have to raise the stake of others. NRI stake cannot be more than 49%. If it is more, then your FPI license will expire. It will not be continued. But if you are registered as a AIF in GIFT City, now a consultation paper has come where they are recommending that 100% NRI can make even 100% investment into AIF, and that will continue to be registered as a FPI. So this facility has been given only for AIF category 3 registered out of GIFT City. So I think that is a big differentiator. We have to understand that. I'm sure that many of you might not be aware of it, but this is a very recent development.
So this is a big positive for this GIFT City as well as for the fund management entities based out of India. Well, one very important thing, very important development which happened on 29 July 2022, when India International Bullion Exchange, the third exchange of its kind, was commenced operation in GIFT City. We all know that India is one of the largest, maybe first or second largest importer of gold, and we are the largest consumer of gold. How we are all importing gold through nominated agencies or banks, which are again allowed. But the kind of commission, the kind of non-transparency these banks, when you import gold through them, they charge a very hefty commission. The delivery time is almost 8 to 10 days. And when you import, because there are a lot of costs involved, so you have to import in bulk. Then you have to make upfront payment for custom duty. So there were a lot of issues. But with this exchange being set up in GIFT City, you can, the qualified jewelers, there has been a term which has been coined as a qualified jeweler, whose net worth is more than 25 crore. And in last 3 years, their business is, 90% of their business is in trading into metals. So if you are a qualified jeweler, which a lot of entities have become now, so they can buy gold directly. They don't have to import through any agency. They can buy gold through this exchange. They can import gold through this exchange. And you know, it is 100% transparency. So what will happen, you know, anybody sitting anywhere in any part of the country can buy gold through this exchange, which will ensure that there is uniformity of price, there is transparency, the cost of import will come down, the cost of your working capital also comes down because you don't have to pay in advance, you don't have to buy in bulk. So all those benefits will accrue through this exchange. And as of now, I believe that around 371 qualified jewelers are there, around 18 qualified suppliers are there. Then there are 3 vaults which have the capacity to store around 450 kg of 450 tons of gold and 4,500 tons of silver. So with that kind of infrastructure being created, I think it is again a gift to the country. And today we have Mr. Ashok Gautam, who is CMD of India International Bullion Exchange. So my question to you is that why the volumes, though volumes in last 3 months have really come up, around 1100 kgs of gold have been imported and transacted through this exchange. And till date, around 1900 kgs have been transacted and imported through this exchange. But we expected the volume to pick up very fast. So what is really holding it? And now, if you buy gold through IIBX, which is India International Bullion Exchange, there is a scheme which is called CPA. There is a CPA agreement with the UAE, where you get 1% discount, 1% concession in import duty. And your cost of import becomes very low as compared to other sources. So we expected the import of gold to happen through IIBX in a substantial manner. So why it has not picked up? Or I'll say, what is your future plan to ramp it up and to make this exchange more vibrant? धन्यवाद अग्रवाल साहब, अगर आप सबकी सहमति हो तो हिंदी में बोलूं, चलेगा? धन्यवाद। बिल्कुल। धन्यवाद। ज़रूरी ये है कि हम लोग समझ लें कि हो क्या रहा है, बिकॉज़ बड़ा अच्छा लगता है जब पहला सवाल ये पूछा जाता है कि जैसे गाड़ी का पूछते हैं ना, कितना माइलेज देती है, तो मैं जब भी किसी से मिलता हूँ एक्सचेंज में तो कहते कितना वॉल्यूम हुआ। अच्छा, अभी सवाल ये है कि जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप लोग हैं या देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या हो रहा है, तो जब स्लैब्स डलने लगते हैं तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। एक स्लैब डलता है और 15-15 दिन में अगला स्लैब, फिर 15 दिन में अगला स्लैब, और बिल्डिंग खड़ी हो जाती है।
लेकिन वो स्लैब की स्ट्रक्चर आने से पहले वो जो गड्ढे में काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन क्रिएट होना, उसको नहीं देखता है कोई कि साहब उसके लिए कितना टाइम काम हो रहा है। और शायद हमारा अभी जो फेज चल रहा है वो फाउंडेशन क्रिएट करने का है। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस है तो आंसर्स भी होंगे। सवाल ये है कि वॉल्यूम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बाद में आते हैं, क्योंकि वॉल्यूम अपने आप आएगा। हमें वॉल्यूम के लिए करना क्या है और वॉल्यूम क्यों आना है, यहाँ पे एक्सचेंज क्यों खोला गया है। अगर ये सारे सवाल हम समझते हैं तो वॉल्यूम भी अपने आप आ जाएगा। पहला चीज़ है एक्सचेंज क्यों खोला गया है। ये नहीं कि सिर्फ गिफ्ट सिटी है तो इसलिए वहाँ पे एक एक्सचेंज लिया है। आज आपने माननीय मंत्री जी को भी सुना और बहुत सारे स्पीकर्स को भी सुना कि इंडिया सिर्फ गोल्ड में ही नहीं, कमोडिटीज़ में एक लार्ज कंजम्पशन स्टोरी है इसकी इंडिया की। इंडिया ग्रो करेगा, कमोडिटीज़ का कंजम्पशन होगा। तो क्या हम कहीं पे भी प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो प्राइस मेकर की बात बहुत दूर है जी। अभी हम सिर्फ प्राइस टेकर हैं, मैं सिर्फ प्राइस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए करना क्या है? क्या आप अपना डोमेस्टिक एक्सचेंज पे कुछ काम करके क्या आप प्राइस इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस में? नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल एक्सचेंज खड़ा करना पड़ेगा। अब दुनिया में ये एक इतिहास रहा है कि जहाँ पे भी इंटरनेट कोई भी जहाँ पे स्पॉट एक्सचेंज, तो ये एक समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है राइट नाउ। इसको वैसे स्पॉट बोला जा रहा है पर यहाँ पे डेरिवेटिव भी आने वाला है, मैं बताता हूँ। सर मैं सबरवाल जी 2-4 मिनट लूँगा प्लीज़। है हाँ सर जी 2-4 मिनट लूँगा। मेरे पास कितना टाइम है? टाइम तो हो चुका है सर, मैं क्योंकि 28 मिनट के बाद मेरा नंबर आया। उनको डर था कि मेरा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। जहाँ तक एक हम लोग बात समझें कि ये एक्सचेंज बनाया इसलिए गया है कि पहली चीज़ डिसइंटरमीडिएशन करना। अभी जब FM मैडम आई थी गिफ्ट सिटी में, तो उन्होंने उनका जो PIB की प्रेस रिलीज थी उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था डिसइंटरमीडिएशन। आज की तारीख में गोल्ड इंपोर्ट डायरेक्टली इंडिया में अलाउड ही नहीं है, वो सिर्फ अलाउड है बैंक्स को और नॉमिनेटेड एजेंसीज को। और आप साहब पहली बार एज ए क्वालिफाइड ज्वेलर इंडिया ने बोला कि साहब कुछ एंटिटीज़ उसको इंपोर्ट कर सकती हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते साहब 800 टन आता है तो वो जो कुछ एंटिटी को बोला गया वो 800 टन ले लेंगी, तो वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। अभी वो जो सारी एंटिटीज़ हैं वो अपनी तरह से गोल्ड को करते आ रहे हैं कंज्यूम। मैं उसका एक सिस्टम बताता हूँ। देखिए हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी की बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अब देखिए समझिए कि साहब गंगा नदी बह रही है। कब से बह रही है? सदियों से बह रही है। तो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन गंगा के किनारे बहुत बहुत समृद्ध हुई, सभ्यता बसी उसके अलावा। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, गंगा के सहारे एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ। यहाँ पे गोल्ड को लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी तक जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है वो गंगा है। तो गंगा जी की तरह से गोल्ड का एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएटेड है जो डिस्टर्ब नहीं है। अभी ये इंटरनेशनल एक्सचेंज जो बनाया गया वो क्या है? वो एक आपने आर्टिफिशियल कैनाल बनाया है और उस 1 मिनट। सो आर्टिफिशियल जो कैनाल बनाया है उस कैनाल के लिए कुछ कुछ जो एडवांटेजेस हैं। पहली चीज़ ये कि क्या उस कैनाल में पानी कहाँ से आएगा? आपने कहा साहब गंगा तो बहती रहेगी, अब कैनाल में पानी कहाँ से लाना है? तो या तो गंगा का थोड़ा पानी आप दीजिए कैनाल में या गंगा पे बांध लगा दीजिए। तो हिंदुस्तान में अभी क्या किया गया है कि गंगा का थोड़ा सा पानी यहाँ परमिट किया गया है। तो उसमें क्या हुआ है कि सर ने जो नंबर दिया वो थोड़ा सा TRQ होल्डर्स का नंबर था। 102 क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं आज की तारीख में। उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और उनका अपना इकोसिस्टम। कहते साहब मैं क्यों आऊँ आपके पास? संदीप जी ने भी कहा कोई हम एडवांटेज नहीं देंगे आपको, टैक्स एडवांटेज वगैरह, क्योंकि यहाँ अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कोई एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज अब क्या है वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से है। पहली चीज़, आप डायरेक्ट इंपोर्टर बन गए हैं। दूसरी चीज़, प्राइस ट्रांसपेरेंसी। OTC मार्केट में देयर इज नो प्राइस ट्रांसपेरेंसी। आप वो पुरानी चीज़ समझिए जब BSE में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था और उससे पहले ब्रोकर्स आपको प्राइस देते थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान का गोल्ड ट्रेड वैसा है। और अभी जो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड देख रहे हैं NSE में इक्विटी का, दैट इज व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग कि सारा का सारा गोल्ड का ट्रेड ट्रांसपेरेंट प्राइस पे डेमोक्रेटिक वे में आप उसको ट्रेड कर सके एट द कन्वीनियंस ऑफ योर डेस्कटॉप। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि किसी भी सिस्टम को हिंदुस्तान में एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है, उसके बाद बहुत सारे इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स हैं जिनके अप्रूवल्स लगते हैं और वो सब साथ में आए हैं क्योंकि ये ऊपर से डायरेक्टिव है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि साहब
वी हैव ऑलरेडी क्रॉस, आज सुबह नंबर दिया गया था 2 टन की डिलीवरी का M6 का। मैं कह रहा हूं कि हमने कल की तारीख में एज ऑन फ्राइडे 1.9 टन की डिलीवरी हो चुकी है अब तक, और ये शुरुआत है। इस महीने मैं अकेला 1 टन का नंबर क्रॉस करने जा रहा हूं, और ये कुछ रुकने वाला नहीं है। हम 10 टन मंथ की बात करेंगे। लेकिन सर रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ग्लोबल फर्स्ट क्या हुआ इस एक्सचेंज में, प्लीज फील प्राउड ऑफ इट, बिकॉज वी आर नॉट ओनली इंटरनेशनल एक्सचेंज जस्ट इन द नेम, वी हैव सेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच आर नोवेयर इन द कंट्री। आपने सुना है कि शायद सेबी अभी करने वाला है कि साहब अगले साल से 1 घंटे में आपको सेटलमेंट होगा। हम बता रहे हैं इफ्सका के सानिध्य में, डायरेक्शन में, हमारे यहाँ एवरी 30 मिनट्स द ट्रेड गेट सेटल्ड। एंड व्हेन आई से एवरी 30 मिनट, व्हाट डज इट मीन कि अगर 10:28 AM पे कोई ट्रेड हुआ है तो 10:30 पे वो सेटल हो गया, यानी कि 2 मिनट में। दुनिया में कहीं पे ये एग्जाम्पल नहीं है। डिलीवरी मिल जाएगी। आई थिंक दिस इज समथिंग और आपका बिना टीएम और सीएम के अकाउंट को टच किए, the bullion depository receipt moves to the buyer's account in that 2-minute flat. And I think this is, you should be feeling very proud कि आप ही का exchange है जिसने दुनिया में जो चीज कहीं नहीं हुई वो हुई। And this was important, this was needed. Even seller को भी पेमेंट T+0 पे मिल जाता है। Same night पे उसको डॉलर चला जाता है। This is what we are trying. एंड अशोक जी, सिर्फ गोल्ड ही रहेगा या सिल्वर भी? सर बताता हूँ, क्विकली लूंगा। गोल्ड फ्यूचर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं US डॉलर में, which is going to start by this month end for the test run. And और gold futures में RBI ने बड़ा clear कर दिया है, other than individuals, all resident Indians are permitted to hedge their gold price risk. तो प्लीज साहब, मार्केट पूरा खुल गया, उसमें क्वालिफाइड ज्वेलर का 25 करोड़ का डेफिनेशन की बात ही नहीं है। तो यहां आप जितने मेंबर्स बैठे हैं, प्लीज आई इम्प्लोर, आई बेग, आई रिक्वेस्ट एंड आई एनकरेज यू to go across, and I am going to be with you so that domestic में जो भी 25,000 टन का अगर hedging यहाँ पे खड़ा हो जाए तो CME कहाँ रहेगा साहब? पूरी की पूरी hedging यहाँ पे रहेगी, सारी प्राइस डिस्कवरी यहीं पे होगी। अशोक जी, the way you are speaking, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं ना, जो आपकी पैशन झलक रही है हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 एक्सचेंज बनेगा अल्टीमेटली। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। नंबर 1 एक्सचेंज आप सबके सहयोग से बनेगा, क्योंकि ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये आपका एक्सचेंज है, ये हमारा एक्सचेंज नहीं है, आपका एक्सचेंज है। प्लीज बिलीव दैट। फ्रेंड्स, सर मैं अभी ऑलरेडी 2nd राउंड ऑफ इक्विटी फंडिंग में हूँ, 3rd राउंड ऑफ इक्विटी फंडिंग के लिए मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आऊंगा। फ्रेंड्स, सिंस देयर इज पॉजिटिव ऑफ टाइम, मैं एक लास्ट क्वेश्चन संदीप शाह जी से पूछूंगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट गिफ्ट सिटी के अंदर वी हैव ए यूनिफाइड रेगुलेटर, और चारों रेगुलेटर का ये एक ही रेगुलेटर है विच टेक्स केयर ऑफ ऑल द 4 रेगुलेशंस। और हमने पिछले देखा है कि अभी इन लास्ट few months we have seen 30 regulatory and framework announcements. So to align with the best global practices, the regulator, the gift city authorities are so proactive that they are not leaving any stone unturned to make gift city as a success. But abhi since we have the business head of IFSC with us, so I would like to understand ki future mein what are the regulatory and policy changes which we can expect. So I think I'll speak what is generally in public domain, so that there is no regulatory arbitrage here. So but I think couple of things which we are working right now and which is going to benefit all of you. One, and which has already been announced and the notification will out very soon, the direct listing of the Indian equities is going to be permitted now on the IFSC stock exchanges. For the first time, Indian companies will be able to list equities directly. आज तक क्या हो रहा था, आप GDR या IDR कर सकते थे, but there was no other option कि आप equity भी list कर पाओ। तो many of you are also investment banker or a merchant banker as well in India. This is a great opportunity. You go and even existing companies को आप, if they are looking for equity raising, IFSC exchange can be the platform. And also the new companies, when they are looking for a new fundraising, इंडिया में तो लिस्ट कर ही सकते हैं, बट दे विल नाउ बी एबल टू लिस्ट ओनली इन गिफ्ट सिटीज. इट्स नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन इट फॉर एवरीबडी, दिस इज ओनली गोइंग टू बी फॉर गिफ्ट सिटी.
The second, more from the ease of doing business perspective, which we are working right now, is creating a single window application form. Because today, while there is a unified regulatory, but there is still a mechanism where you go to SEBI or RBI for NOC, you go for SEZ approval and all of that. So there is going to be now a single window application form where IFSC authority will be the single authority which will then communicate with the respective authorities, so that you don't need to go to the multiple desks to go get the approvals. So that's second under development. The third, again, major, and I think which is very much important for the capital market players, we are also working in terms of creating the real-time dollar clearing and settlement mechanism. So today, the way in rupee we trade on instant basis, where we transfer the money and it gets credited immediately. Probably for dollar as well, I think the real-time clearing and settlement mechanism will come up, where the clearing and settlement will happen on a real-time basis, basically. So that's the objective and intention where through which we are working, with the government, with the IFSC authority to develop that ecosystem here. And 2 more committees have been formed recently by IFSC authority, and I think that will also give direction in terms of the new products which will come up. The one is on the tokenization of the assets. I think many of the fintech players are also thinking of creating the tokenized assets. It can be for the apps, it can be for the real estate, it can be for the gold. So I think the committee is going to evaluate, deliberate, and then they will come out with the new framework. And the second committee which has been formed is for the development of the secondary market, which has been recently formed again by IFSC authority. And I think the committee will come out with the recommendations in terms of some of the new products that can be listed on the exchange platform. So I think many of these initiatives are in pipeline, and you will see the outcome very soon on this. Thank you, Sandeep. Question. And with the paucity of time, but मेरे को अभी सबरवाल जी का मैसेज आया कि श्रुति has a question which she has to ask. So only one question, Shruti, you can come and ask. Am I audible? यहाँ पर आ जाओ. So my question is to Mr. Nitesh Jaiswal. As you mentioned, a significant achievement has been the movement of Singapore Nifty to GIFT Nifty, with an open interest of around $9 billion that we are seeing as a daily average. But my question is, still all the volume, most of the volume is being routed through Singapore due to limitation of remote membership or some disparity in charges. So what exactly is the exchange's strategy here to, handle that? So first thing I'd like to clear that there is no disparity of charges. There are 2 types of charges levied by the SGX exchange. So one is the 40 cents for the prop trading members, and $1.50 is for the clients. And as per the agreement between the SGX and NSE Connect, the same charges the exchange will or the SGX also will levy, and we also levy. So there is no disparity of charges. Number 2, they have something called the trade member proprietary, which is a remote membership. Unfortunately, that is not permitted yet, but we are very confident that our regulator IFSCA is positively thinking on this, and we have given all our proposals. We are expecting some positive news to come within a month. Okay, thank you so much, Mr. Jaiswal. Thank you, ladies and gentlemen. I think it was a great session. All the panelists were at their best, but due to paucity of time, we could not ask more questions to them. But I'm sure that Sabharwal ji, next time जब भी कोई session होगा, गिफ्ट सिटी के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे. सर 28 अक्टूबर को PhD में सेशन कर रहे हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी पे पूरा सेशन रखेंगे. बस 28 अक्टूबर को. ठीक है Sabharwal ji. Thank you. Thank you, and please give a big round of applause for all the panelists. Before we give the mementos as a recognition to them, I will like to acknowledge the presence of some 3 dignitaries also. We have with us DGM SEBI, Mr. Ganendra Neeraj Vijas. I will request him to please come on the dais. And I will request our past chairman and senior executive committee member, Mr. Ved Gupta, to felicitate him. Mr. Ved Gupta to felicitate Mr. Ganendra Neeraj. राखी बिटिया आप भी आ जाओ.
वेद जी थोड़ा ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, राखी आ जाओ। We also acknowledge the presence of Vikas Malik ji, Deputy Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, and I will request our Executive Committee member, Mr. Santosh Agarwal, to felicitate Mr. Vikas Malik. Vikas Babu, आप लोगों को डाक पूछिए आओ। हाँ ये हुआ ना, इसीलिए तो चीफ मेंटर हैं। We also acknowledge the presence of Mr. I.S. Punia, IRS, and I will request our past alternate president, Mr. Atul Gupta, to felicitate Mr. I.S. Punia. साथ में ही बैठे हुए जी दोनों आ जाओ। Mr. Ayush Punia and the Mr. Atul Gupta, our past alternate president. हाँ डाइस भी तो नजर आए। As a gesture of token, first of all, I will request one of our senior most member, Mr. Satpal Rawal ji, to give a memento to Mr. D.K. Agarwal. Mr. Satpal Rawal. संजय जी आप भी आ जाओ। भाई जाओ जल्दी। मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। Standing this side, no more. I am now request Mr. Garish from Acumen Cochin to present it to Mr. Sandeep Shah, a prospective member for the Gift City. I will request Mr. Sid from Chennai to present it to Mr. Ashok Gautam. Again, he is a prospective member for the Gold Exchange, Mr. Sid. I will request Mr. Ashish Ajmera, Director NME and the past Chairman of NME, to present it to Mr. Nitesh Jaiswal. Mr. Ashish Ajmera from Mumbai. I will present my next gen team member, Mr. Manik Vadwa, to present it to Mr. Rajesh. Mr. Manik Vadwa, भाई बड़ी मुश्किल है बच्चों की जो है ना अंदर ही नहीं बैठते जब भी मतलब 2 मिनट पहले देख के आया हूँ नहीं तो नाम ही नहीं लेता। आई विल रिक्वेस्ट विजय केडिया जी टू कम फॉरवर्ड। दौड़ के चलो भाई।
and to present it to Mr. Naveen Mathur. हैं जी अंदर हाल के अपना बोल के चले गए, 5 मिनट के बजाय 12 मिनट लेके अपना बोल के चले गए. अमर सिंह जी आपको देना था उनके कोलीग का, but and now we'll immediately start the next session. Thanks a lot to this session. And 2 कुर्सी लगवाओ जल्दी पहले. Next session we have 7 people, so. The in charge of the commodities with the Government of India, he is Joint Director in Department of Economic Affairs, Mr. Deepak Ranjan. Then Mr. Shriram Krishnan, Chief Business Officer NSC, Mr. Samar Banawat, Executive Director NSDL, Mr. Sameer Patil, Chief Business Officer BSC, Mr. Rishi Nathani, Chief Business Officer MCX, Mr. Kapil Dev, Chief Business Officer NCDEX. And to moderate the panel, a very renowned TV personality, again for the 5th time, he is coming with us, Mr. Mrutunjay Jha. To introduce on the subject and to the panel, I am requesting one of the very senior person of our industry, Dr. N.C. Maheshwari, who had been the past president of CPI, past president of NME, past president of DPI, the first man in the country to clear his PhD in derivatives. And also he has represented us in the Investor Forum of the World and IASCO also. तो नरेश महेश्वरी जी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लंच लोगों को कितनी देर में करवाएंगे. नरेश महेश्वरी जी. The dignitaries on the dais and the of the dais. I think the topic given to me is the introduction, and I'm feeling so perplexed to whom I should give the introduction. All learned luminaries, these are the people who have done the business and business. They, 2 depository within themselves, they are having 12 crores account. And introduction to them hardly means anything. And our team of our NSC members, CPI member and committee members who basically have gathered those accounts. So they understand what is the structure. Then what is my role? Why I am introducing this subject? This subject is, the introduction is to give our dedication and commitment of the CPI, which has now become the tallest industry institution, our leadership of our national president, Vadvaji, that what structural reform is. And it is our theme that we are concentrating on the structural reforms. When we discuss that file is to be uploaded at 6 o'clock or 7 o'clock, that is not the structural reform. That is only the risk management measures. As a matter of fact, we have yet to see many structural reforms. And why saying I'm not giving any pointers to this panel, let them have their own original thinking. My role is not to give them the original thinking or the pointers. But the issue is, the lot of structural reforms are still required. And as a CPI, it is our commitment to go with them and to take shoulder and shoulder. Let us take a simple example. Our capital market runs on the laissez phrases model of the Adam Smith, where it was a free will. And without any inducement, without any coercion or dominant positions, the trade should take place. But why? Whatever, there are 3 only issues which were regulators or the ministries or the government, everybody is fighting. There are 3 issues. The first is the asymmetric information. The person who holds the position and an innocent investor probably don't have those information, and that is a gap between the information which creates a regulatory issue. The second is the standardization of the product. And the third most important is the settlement, how the things under trades have to be settled. And the fourth and most important issue is how to take care of the investor grievances. I think these are the only 4 topics which requires wider reforms or the structural reforms. Even today, why we require a KRA? Why require a CKYC? You see, the same CKYC
has been administered by the Ministry of Finance. It is applicable on the banking sector. It is applicable on the individual investor. It is everywhere. So by taking a just account pay check, why we can't open the account? If we are not able to open the account by taking a account pay check with the name printed, pen printed of an account, it means our structures are not there. So our structure somewhere has fallen. Because though he is also reporting to the same CKYC, I am also reporting to CKYC. I have also the direct interaction with that CKYC. I can download the files. And if we are not doing that, it means our structural reform, which I think we started somewhere in 2017, still has not taken place. You take an example of nomination. I think lot of pressure on these days on nomination. For a depository account, you require the nomination. 3 pages are required. And when you make a nomination in your bank FD, requires only 2-liners. And on 3 pages, you require multiple signatures. It is a printed form. Why require so many signatures? I think, as I said earlier, my issue is not. My issue is that whether we are in a position to understand what is the necessity of, till today, there are so many entry barriers. So how we can take care of the entry barriers? I think with these threats, I have given enough ammunition, though I never wanted to give the pointers. Now the field is open to all the learned speakers. I think all those people, I feel so much that how can I give introduction to them? But still I thought that reforms are still a miles away. Real reforms have not come. That is our role, and that is the CPI is craving. And I think Vadwaji and our team and CPI will do work again endlessly to ensure that the reform space is set up again. Thank you. Thank you. And to welcome the guests on the dais, first of all, the Mr. Deepak Ranjan, who is chairing the session, I will request Mr. Avinash Kansal from ICICI Mumbai. I will request Mr. Mahesh Desai to come forward. Mr. Mahesh Desai, our past Vice Chairman of the West. I will request Mr. Khalid Ali from Muradabad to present it to Mr. Shriram Krishnan. I will request Nishan Jain from Jaipur to present it to Mr. Samar Banwat of ED and Mr. Nishan Jain. ये देखो ये स्पिरिट है ना कितनी तेज आ रहे हैं. I will request Mr. Yadusheshan from Profit Mart Pune to present it to Mr. Samir Patil. I will request Mr. Dharmesh Khandelwal from Indore to present it to Mr. Rishi Nathani. I will request Mr. Amar Singh from Mumbai to present it to Mr. Kapil Dev.
I will request Mr. Ramesh Warkhadkar from ICICI Mumbai to present it to Mr. Mrityunjay Jha. I will also request Mr. Naveen Maheshwari to present it to Dr. N.C. Maheshwari. भैया पुराना साथी आपका, तुम साथ में काम किया है. And now I request Mr. Mrityunjay Jha to take this session forward. Sir, lunch was due to start at 2 o'clock. You are a media man. Now you have to ensure that what time you start the lunch. Only thing I request is ask the 5 panelists and take the blessings of Deepak Ranjan ji in the last. Thank you very much. आप 6 बार, आप 6ठी बार आए, इतना कम समय आपने पहले कभी नहीं दिया था आपको, पर आज समय कम है. 1 घंटा बस, only 1 hour. अच्छा. अगर मैं कहूँ तो 27 मिनट है, पर आप देख लें. हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं. हम तो 22 मिनट का प्रोग्राम करते हैं, 5 मिनट आपने ज़्यादा दिया है हमें, है ना. चलिए, थैंक यू वेरी मच CPAI ये मौका देने के लिए. और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि अभी सर ने हमें पॉइंटर्स बताए हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड मार्केट डेवलपमेंट, मेमोरीज, लर्निंग एंड अमृतकाल महोत्सव. बेसिकली हम ये बात करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में जो इस वक्त चल रहा है उसमें एक जंप कैसे आ सकता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में. और चूँकि हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के ऐसे लोग इस पैनल में हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उसमें, तो लिहाजा उस लिहाज से ये पैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है. शुरुआत नथानी जी आपसे. जब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसका कैनवास बहुत बड़ा है ना. तो इसको हम बहुत ही डिटेल में अगर हम जाएं तो बहुत ही बड़ा ये सेगमेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है. लेकिन आप बताएं कि इस वक्त पहले जो हो रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के, ताकि अगर जंप हम कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ में देख पाएं, उस दिशा में अभी क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं. धन्यवाद मृत्युंजय जी. सबसे पहले तो आज का जो मोटो है इस कॉन्फ्रेंस का, अमृतकाल महोत्सव का, तो मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा है, धनम जयम सर्व कल्याणम अमृतकाल महोत्सवम. तो सबका कल्याण हो, भारत का जय हो और सबको धन की प्राप्ति हो, यही मेरी आशा है. और आपके लिए, सबके लिए एक प्रार्थना है, खुद के लिए भी. तो ये जो अमृतकाल का महोत्सव है, मैं ये बोलता हूँ सबसे, जहाँ भी जाता हूँ कि आई होप हिंदी इज़ फाइन, राइट. मैं जहाँ भी जाता हूँ कि अब भारत का समय आ गया है. सबका समय आता है, अभी भारत का समय है, और आगे चल के भारत का समय और अच्छा आएगा. भारत का ही परचम लहराएगा विश्व में. जो विश्व गुरु की बात करते हैं तो भारत का समय है. अब क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, जो ये टॉपिक है थोड़ा मैक्रो टॉपिक है, तो मैं मैक्रो की बात करूँगा, मैं अपने एक्सचेंज की ज़्यादा बात नहीं करूँगा. मैक्रो टॉपिक ये कि क्या अपने को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए भारत को बढ़ाने के लिए और कमोडिटी मार्केट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों अभिन्न अंग एक दूसरे के. विदाउट कमोडिटी मार्केट्स दे कैन नॉट बी इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ना ही है. तो मैं अगर भारत की ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, तो कमोडिटी मार्केट की बात करूं तो भारत की बात होती है. और आज के दिन जो भारत का जो स्टेटस है, भारत को क्या चीज़ की कमी है, मेरे हिसाब से भारत को सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है एनर्जी की. बाकी तो हम, एनर्जी तो भरपूर है सर आप में, मुझे है, क्योंकि आप लोग के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा पास ऑन हो जाता है. ऐसे दिग्गजों के साथ बैठने से आ जाता है एनर्जी. बाकी भारत कोई भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है. अशोक जी ने भी बोला हम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर कितने चीज़ के हैं. तो वो जो ब्रिज है, और आज के दिन पूरे विश्व में हम एक चीज़ देख रहे हैं जो एक प्रॉब्लम है, विच इज़ इन्फ्लेशन. आज के दिन हमने उस इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक
कंट्रोल किया 2 कारणों से। एक, जो यूरोप में या और देशों में इन्फ्लेशन है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि हमें रूसी तेल थोड़े सस्ते भाव में मिल रहा है, इसीलिए हम बेटर ऑफ हैं। बट वो आज है, कल हो ना हो। दूसरी बात कि नहीं, रूसी तेल मिल रहा है तभी तो पेट्रोल 110 बिक रहा है सर, मिलने के बाद भी। वो तो ठीक है, सरकार को जा रहा है, एक पॉकेट से दूसरे हाँ, पॉकेट में जा रहा है, देश में का धन देश में रह रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि सरकार ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ लगाए हैं इन्फ्लेशन को ताबे में रखने के लिए। अनियन पे जैसे एक्सपोर्ट पे कर दिया, दाम लगा दिया, 200 रुपये सिलेंडर का कट कर दिया, नॉन बासमती एक्सपोर्ट बैन कर दिया, ऐसे कुछ करके फूड ग्रेन सिक्योरिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। इससे मुझे लगता है कपिल आपसे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके क्योंकि वो तो खिलाफ हैं इसके कि इस तरह का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, तो मैं तो वो भी बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की राह में रोड़ा है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म चीज़ है। शॉर्ट टर्म चीज़ का आपको बुखार होता है, आप क्रोसिन ले लेते हैं, बट उससे बुखार जड़ से नहीं जाता है या बीमारी जड़ से नहीं जाती। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या आएगा कि इन्फ्लेशन को जड़ से कैसे काटें, और इन्फ्लेशन को जड़ से काटें, और उसमें कपिल मेरे से अग्री करेगा कि उसके लिए सारे कमोडिटीज़ को कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड होना जरूरी है। क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ में आप राइट सर, अंकुश नहीं रख सकते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक आपका मार्केट ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जब तक मार्केट में डेप्थ नहीं आएगी, तब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात बहुत मजबूती से नहीं कर सकते। और चूंकि आपने एग्री का जिक्र कर दिया, तो इसलिए मैं अब कपिल के पास जाता हूँ। और एग्री को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है, और आप देखिए कि एग्री को लेकर जब भी बात होती है तो चारों तरफ इस बात का हंगामा होता है कि क्या वायदा बाजार महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन सब में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि महंगाई बढ़ने के पीछे वायदा बाजार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डिमांड सप्लाई की वजह से महंगाई बढ़ती है। और कई सारे एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल जी ने ये कहा भी अपनी ओपनिंग एड्रेस में कि आप देखिए कि अभी चने का फ्यूचर ट्रेड नहीं हो रहा है, तुअर का नहीं हो रहा है, लेकिन इसके दाम बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, टमाटर हैं, सब्जियां हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और अभी तो आप देखिए कि बारिश के बाद मूंग, मोठ और ग्वार तीनों क्रॉप की फसल को डैमेज हुआ। मूंग के दाम बढ़ गए, मोठ के दाम नहीं बढ़े। मोठ के दाम बढ़ गए लेकिन ग्वार के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि ग्वार लिस्टेड है इन तीनों में से। तो ये तो रिवर्स हो रहा है। तो कपिल जी, अब आप जरा बताइए कि इस तरह से ऐसे मूड माहौल में एग्री मार्केट में ड्रास्टिक चेंज हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, उस दिशा में 3-4 ऐसे पॉइंट आप बताइए जिसको सुनने के बाद हमारे जो ऑडियंस है उनको ये लगे कि हाँ, अगर ये हो जाए तो इस मार्केट का कायाकल्प हो जाएगा। ऑन कर, उसको ऑन करना। हेलो हेलो, हाँ, इट्स ओके। आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। So, thank you, Mrityunjay ji, and thank you, CPAI, for organizing this event. From first session itself, everybody is speaking कि agriculture commodities should not be suspended. This market should be open up, and farmers should get the right price. Minister साहब ने बोला warehousing should improve, commodity as an asset should definitely be considered by the market, और गोल्ड को लेके काफ़ी उसके बाद बात हुई। जो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग इस मार्केट को, और मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि अभी क्या होगा एक्सचेंज का या इस इकोसिस्टम का। देखिए, among all the exchanges which are operating in India, we are operating in the most complex situation. And the fact of the matter is that the only reform which government has taken big is the agri reform. Right, so we can understand how complex this market is and how politically exposed this market is, right? But it's for a reason. It's not that those exposure is not correct, yeah, sensitivity is not the correct. It's for the reason that 60% of Indian population is still dependent on agriculture. 80 crore people are still getting food from the government subsidized, though we are talking about Amrit Kal, but that's the fact that so much is being done by the government to ensure well-being of everyone, and I think that's the role of the government which need to play.
The only point to understand here is that what this ecosystem can offer, right? Lot of development initiative has been taken by the government, and I would like to draw a connect in between those development and the financial market. If you see the scheme which government is running is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. What they are ensuring that if there is a anomaly and climatic risk, you will get compensated through insurance market. So a very opaque market which was being run to compensate the farmer is now being managed by the financial. I'm assuming insurance is a financial tool. So this market has given a permanent solution to the weather-related risk which farmers were having that point of time. Let's come to the health insurance of the rural people. Again, government is not giving any subsidy. They are dealing this through a insurance, a financial instrument, and that has given a lot of solution. Now when we come to the agri, look, while rest of the market has been supported by the various initiatives government has taken, like the growth of Indian financial market is supported by UPI payment, by the Jan Dhan account, by internet connectivity, going to the rural, everything. Indian market has, agriculture market, especially derivatives market, have seen just opposite, right? But the fact is that exchange, along with regulator and our government, have taken a lot of initiative to develop this market. So we were the first exchange in this country who have started dematerialization of agriculture commodities, right? While physical shares took maybe many years, I don't know exactly, but maybe 30, 40, 50 years when this market started to convert into the demat form. Agriculture commodities after inception of exchange took only 1 year to convert it into demat. We have created first e-commerce platform for agriculture for the spot market, which is NEML, which offer secondary market trading in the spot market. Okay. And we are talking about, just give me 1 minute, Mrityunjay ji, because it's commodity and it's agri. And when we are talking about, कम है सर, सौरवाल जी की तरफ से टाइम की सप्लाई कम है, जितनी है उतना मैं दे रहा हूँ. So when we are talking about EGR now gold, ENWR is being generated maybe from last 5 years. So we have done all the things which is required to support this market. Now the only thing which is left out first, structural reform is required to connect all the pieces which has been developed by different. There is a warehousing, there is a physical market, right. There is a spot market, there is a e-name, and there is an exchange. I think the moment a structure reform is initiated to connect all these market, derivatives market will get a lot of boost. Exactly. ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एग्री में बात करते हैं तो हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, और बहुत पॉइंट आउट कपिल ने इसको किया, एड्रेस किया इसको. अभी दिक्कत ये है कि ये मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एग्री का मार्केट. अगर आप एग्जांपल के तौर पे देख लें, अगर आपको एक कमोडिटी का प्राइस पता करना हो या अराइवल पता करना हो, आप मंडी में अगर 4 अलग अलग लोगों से बात करें तो आपको 4 अलग अलग प्राइस मिलेंगे, 4 अलग अलग आपको अराइवल के डेटा मिलेंगे. तो उस लिहाज से जो अभी कपिल ने कहा कि स्पॉट का मार्केट जो इनाम की मंडी है उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए और मार्केट मैनेज ठीक से हो पाए, सिस्टमेटिक बने. क्योंकि हम कमोडिटी और इक्विटी दोनों मार्केट की बात कर रहे हैं, दोनों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं. तो समीर जी, वैसे इक्विटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जितना मोटा मोटी समझ पाता हूँ कि ठीक है इक्विटी मार्केट कंपेयर टू कमोडिटी मार्केट बहुत बड़ा है. लेकिन आप जरा बताइए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी भी बेशक इसका पेनिट्रेशन ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है देश में जो इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा है. मतलब उनके मन में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब इंश्योरेंस, और लंबे समय तक देश में छोटी जगहों में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के टूर पर बेचा गया है ना. 5 से 6% अगर इंटरेस्ट मिल जाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया. तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात है इक्विटी मार्केट के लिहाज से, इसको कैसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट का सही मतलब, सही मायने लोगों को समझ में आए और लोग सही इन्वेस्टमेंट की तरफ मुड़ें. ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को वो इन्वेस्टमेंट समझ लें. धन्यवाद मृत्युंजय. सबसे पहले मैं सीपीआई का आभार मानूंगा जो ये मंच उन्होंने हमें दिया है. ये हमारे सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद है, तो सबसे पहले मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा कि वी आर कमिंग बैक फ्रॉम अ फ्राइडे एक्सपायरी एंड एवरीबडी नोज फ्राइडे इज सिनोनिम टू सेंसेक्स नाउअडेज बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप पोस्ट ऑन इट. कल ही हम लोग ने हिस्टोरिक हाई टर्नओवर 129 लाख करोड़ का टर्नओवर टच किया है. 19.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं और
37.6 लाख का पीक ओपन इंटरेस्ट कल बीएसई पे हम लोग ने सेंसेक्स में देखा है। तो मैं ये अवसर लेके मैं सबका आभार प्रकट इतनी करूंगा। कमाई हो रही है सर, खर्च करने का टाइम नहीं दे रहे हैं ना आप लोग, लेकिन छुट्टियां कम होती हैं हमारे यहाँ, और छुट्टी बढ़ाइए थोड़ा। दूसरा, क्योंकि ये अवसर मिला है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम लोग ने रीलॉन्च किया था सेंसेक्स, अभी नवरात्रि के पावन अवसर पर पहले दिन हम लोग 16 अक्टूबर को बैंकेक्स रीलॉन्च करें मंडे एक्सपायरी के साथ में। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स आज अगर आप मुझे कुछ आंकड़े याद आते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते अगर 1980s में 79-80s में जब ये हुआ था लॉन्च, तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 6.5 करोड़ की होती। सो दैट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट of in Sensex, the CAGR, compound interest over a period of years. Second, commodities market में अगर आप देखो तो मैं थोड़ा सा मेरा एक different view है. We are always talking about price setters and price takers, but today अगर आप कोई commodities में आप इंडिया में देखो तो traders जो है, जो end users है, stakeholders जो है, वो आज भी they take exchange prices as reference prices and they trade or they quote in the physical market plus or minus of the exchange price. तो एक penetration कई level तक हो चुका है इंडिया में, stakeholders यूज़ कर रहे हैं, hedgers यूज़ कर रहे हैं। BSE की तरफ से अगर आप देखो तो हम सुबह से मैं जब सुन रहा हूँ, किसी ने फाउंडेशन की बात की, एनर्जी, आज मेरे पिछले सेशन में एनर्जी की बात हुई, गोल्ड की बात हुई, हेजिंग की बात हुई। When you talk about a very strong foundation of India, what BSE has done is BSE has gone ahead and launched the steel billets contract with a delivery in with physical deliveries, और आज तक हमने उसमें 127 टन की फिजिकल डिलीवरी की है, और ये कोविड के दरमियान लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है और इसके ऊपर हम लोग रीवर्क कर रहे हैं। एनर्जी एंड गोल्ड आर द 2 कमोडिटीज़ जो करंट अकाउंट डेफिसिट में इंडिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ है। Energy is any which way is used. Gold is an investment. हमने गोल्ड में EGR इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स के माध्यम से पहला प्लेटफॉर्म BSE ने लॉन्च किया था। उसमें नॉट ओनली लॉन्च बट उसमें हम लोग ने फिजिकल गोल्ड कन्वर्ट करके उसके EGRs बनाया, उसका ट्रेड हुआ, उसका डिलीवरीज हुआ, हैंड्स चेंज हुआ और उसके अंदर डिलीवरीज भी हुए। कितना ट्रेड हुआ सर? So we started with this and जी कितना ट्रेड हुआ? 2000 यूनिट्स के आसपास ट्रेड हुआ था जब हम लोग ने लॉन्च किया था। तो I thank both my depositories NSDL and CDSL for it's overnight उन्होंने ये EGRs कन्वर्ट करके जो योगदान किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे हमारे विकास मलिक जी यहाँ पे है जो बहुत ही गहराई में टैक्सेशन के ऊपर काम करे, नॉट ओनली वंस, टाइम एंड अगेन। वो क्लैरिटी आने के बाद में आई थिंक टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स की जो बात हो रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में ये चला जाएगा। तो आप जो अमृतकाल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये फ्यूचर है, टोकनाइजेशन, EGRs और सारे कमोडिटीज़ जो है, इट इज़ द फ्यूचर। गुड, ये मतलब आपने जवाब अच्छा दिया लेकिन सवाल वो नहीं था। ठीक है मैं आऊँगा लेकिन आपने जवाब सोच के आप रखा था कि यही जवाब देना है। ठीक है मैं आऊँगा आपके पास फिर दोबारा। अब जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ श्री राम कृष्णन जी, एक सवाल इक्विटी मार्केट को लेकर ये होता है कि जब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर की संख्या बढ़े तो अब म्यूचुअल फंड एक बड़ा टूल है, खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए, कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप मार्केट में आएँ। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में भी फ्रंट रनिंग के मामले सामने आए और इस तरह के मामलों से जो छोटे निवेशक हैं उनका भरोसा थोड़ा कमज़ोर होता है मार्केट के ऊपर, और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की राह में आज इसको आप मान सकते हैं कि एक डिस्टर्ब है ये। तो इस दिशा में आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि इसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री इक्विटी मार्केट में होती है। थैंक यू मृत्युंजय जी। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टॉपिक है इस पे हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं ओवर द ईयर्स। अभी जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ वो एक्सिस एसेट मैनेजमेंट का, वो कोविड के टाइम पे हुआ जब सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और वो फ्रंट रनिंग हो गया जो डिटेक्ट नहीं हुआ टाइमली, पर जब भी डिटेक्ट हुआ एक्सिस एसेट मैनेजमेंट ने खुद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था और रेगुलेटर को नोटिफाई कर दिया था। अभी इसके बाद रेगुलेटर का ये थॉट प्रोसेस है कि शायद कुछ सेगमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली एक्सचेंज पे ट्रेड कर लेना चाहिए, ऐसा उनका विचार है।
जिसके लिए उन्होंने एक वाइट पेपर भी लॉन्च किया है और व्यूज़ मांगे हैं पब्लिक से। अभी इससे क्या हो सकता है, उनका सोच ये है कि अगर ब्रोकर्स ही नहीं है बीच में तो फ्रंट रनिंग का सवाल ही नहीं होगा। शायद ये जो पब्लिक का जो पैसा मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उनके ऊपर थोड़ा फाइड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। एक सेपरेट सेगमेंट है जहाँ पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए वो वैसे सोच रहे हैं। तो ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन है। वाइट पेपर के रिस्पॉन्स में बहुत सारे लोगों ने सजेशंस भी भेजे हैं रेगुलेटर्स को, हमको ये मालूम है, और कुछ और आइडियाज़ भी दिए हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस सजेस्ट किए हैं कि ऐसा ब्रोकर्स को डिसइंटरमीडिएट मत कीजिए, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस कीजिए। पूरा डेटा का स्क्रूटिनी अभी आज के डेट में डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से हो सकता है, तो डेटा एनालिटिक्स बढ़ाइए, डेटा का जांच बढ़ाइए, जिससे कि रेगुलेटर को तुरंत ऑनलाइन पता चल सकता है कि एक्सेप्शंस कहाँ पे हुए हैं और ये पैटर्न्स पता कर सकते हैं। सर्वेलेंस आज के डेट में बहुत मजबूत हो गया है, सुंदरेशन जी बोल रहे थे, तो सर्वेलेंस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक और ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे आइडियाज़ आए हैं रेगुलेटर्स के पास। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा सजेशंस आएंगे और सोल्यूशन निकाला जाएगा। राइट, हम भी सर यही उम्मीद करते हैं ताकि निवेशकों की संख्या ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि गांव-गांव तक उनकी संख्या बढ़े, तभी इस मार्केट में और ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं समर बनवट जी कि NSDL का क्या रोल, मतलब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में दोनों मार्केट में इक्विटी चाहे कमोडिटी के लिहाज से अगर आप समझा पा रहे हो हमें कि उसमें NSDL का क्या रोल हो सकता है और NSDL के सामने क्या चैलेंजेस होते हैं। जब आप रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो आपको क्या चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए? थैंक यू सो मच। देखो NSDL हमेशा NSDL CDSL, आई टेक बोथ नेम्स, हमेशा बैकग्राउंड में होते हैं, वी आर ऑन द बैकग्राउंड। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर जब भी आता है मार्केट में, उसको सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसको डीमैट अकाउंट चाहिए। कोई इन्वेस्टर आके ये नहीं बोलता है कि मुझे डीमैट अकाउंट चाहिए। इन्वेस्टर आके बोलता है मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है डीमैट अकाउंट का। तो डीमैट अकाउंट इज़ ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, हमेशा पीछे रहता है। तो दैट इज़ हाउ ये एक एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो अपन ने इंडिया में देखे, जैसे हमने आज बात किया T+1 हमने किया। सो T+1 करना इतना आसान काम नहीं था, बट इंडिया वॉज एबल टू मैनेज एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। हमने एक्चुअली मतलब शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल जब हमने चेंज किया इंडिया में, हमने T+3 जब किया, जब यूरोप हमारे 10 साल के बाद उन्होंने T+3 किया। तो इंडिया वॉज ऑलवेज मच अहेड द कर्व इन द एफिशिएंसी। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी हमने एफिशिएंसी करे हैं आज की तारीख में, जैसे अभी हम बात करते हैं मार्जिन प्लेज का, उसमें क्या होता है कि क्लाइंट का विजिबिलिटी जो होता है कि कौन से क्लाइंट का कोलैटरल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास है, ये पूरा विजिबिलिटी, ये जो पूरा सिस्टम जो बनाया है हमने, ऐसा कहीं पे किसी ने सोचा भी नहीं। करना तो बहुत दूर की बात, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं, वो हमने इधर किया है। नॉर्मली आप अगर शेयर को प्लेज करो तो वो प्लेज ही के पास रहेगा। अब प्लेज करने के बाद उसको रीप्लेज करो, ये कौन सोच भी नहीं सकता है। तो ये सब हमने सोच के कर दिया और इम्प्लीमेंट किया। तो बाकी जगह पे ऐसा कोई चेंज करना होगा तो वहाँ पे कंसल्टेशन होगा, 2 साल 3 साल 4 साल डिस्कशन, इम्प्लीमेंटेशन, कुछ होता नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन, हमारा सिर्फ एक ही काम है, एग्जीक्यूशन करना, कि जो भी रिफॉर्म करना है उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ठीक तरीके से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और जो दुनिया के बाकी देशों में नहीं हो पा रहा उससे पहले हम कर पा रहे हैं, मुझे अच्छी बात है। लेकिन ऋषि जी, अब एक बात बताइए कि हमारा मार्केट कंजम्पशन का मार्केट है, चाहे वो एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो। गोल्ड का हम बड़ा कंज्यूमर हैं, मेटल का हम बड़ा कंज्यूमर हैं, और इसकी बात बार बार होती है कि हम अगर इतना बड़ा कंज्यूमर हैं तो हम प्राइस सेटर क्यों नहीं बन पाते हैं। आपका एक्सचेंज लीडिंग एक्सचेंज है गोल्ड में, मेटल में। आप जरा बताइए, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसकी बात बहुत हो गई है। आप हमें बताइए कि कितना वक्त लग सकता है और क्या हर्डल है, हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं प्राइस सेटर गोल्ड में, मेटल में, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है मृत्युंजय जी। सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा, समीर ने बोला कि भारत में एक्सचेंज के प्राइस को लेके फिजिकल मार्केट में ट्रेड हो जाता है। आज कहीं भी जाइए MCX प्लस माइनस गोल्ड का भाव बोला जाता है। बाकी भी और बोला जाता है सर, ज्वेलर्स सारे MCX प्लस माइनस कोट करते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। अगर कॉमेक्स में
$10 गिरता है तो हम भी गिरते हैं, बढ़ता है तो हम भी बढ़ते हैं। वही बता रहा हूं। हमारे गिरने बढ़ने से वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। फेड की मीटिंग सबको याद रहती है, आरबीआई की किसी को याद नहीं रहती। वो इसीलिए क्योंकि जैसे आशीष जी ने भी पहले कहा था कि, या किसी और ने कहा था कि पहले सुबह उठ के हम सिंगापुर निफ्टी देखते थे, भारत में निफ्टी देखते हैं। हम तो अभी भी कॉमेक्स देखते हैं सर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो समय दूर नहीं है। हमको आदत पड़ी हुई है गुलामी करने की अंग्रेजों से, अब हम उससे निकल रहे हैं। तो आप निकलवाना आपका काम है ना। तो निकलवा रहे हैं ना सर। आप ऐसा मैं आपको ये कहता हूँ और सबके सामने कहता हूँ, और मेरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमृत काल के भीतर ये कमोडिटी मार्केट शायद इक्विटी मार्केट से भी बड़ा हो जाए भारत। ये अच्छी बात है, यही भरोसा आपसे चाह रहा हूँ। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, भारत इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, एंड अगर ये 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो कमोडिटी के बिना नहीं बन सकता। एग्जैक्टली और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि एमसीएक्स पे 500 रुपये गोल्ड गिरे और 500 रुपये उसके बाद डॉलर में उसका इम्पैक्ट कॉमेक्स पे आए। होगा, वो भी आपका सपना पूरा होगा। और आप ही टीवी पे बोलेंगे, मैं ये भी बोलता हूँ। बिल्कुल बोलेंगे सर, मैं ये भी बोलता हूँ, इसको और मजबूती से बोलेंगे। 3 चीज बोलता हूँ फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि क्या चीज़ करने चाहिए अपने को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में। एक तो मैंने बोला कि लिस्टिंग ऑफ कमोडिटीज़, जितनी पारदर्शिता होगी उतना अच्छा होगा, होर्डिंग कम होगी, लोगों को प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का जरिया मिलेगा। दूसरा, एक्टिवली डिस्करेजिंग फॉरेन हेजिंग बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स, क्योंकि घर का माल घर में रहना चाहिए, घर में ही ट्रेड होना चाहिए, सरकार को भी उससे रेवेन्यू मिलता है और फॉरेक्स का भी आउटफ्लो बंद होता है। ठीक है, राइट। 2 पॉइंट और, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम होनी चाहिए, और जो बॉटलनेक्स हैं, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के और लोकल जो बॉटलनेक्स हैं स्टोरेज के, थ्रू वेदर डेरिवेटिव्स एंड फ्रेट डेरिवेटिव्स, उसको भी दूर करना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए कि अगर ये हो जाता है तो आप कहें कि अमृत काल में ही हम प्राइस सेटर बन जाएंगे, है ना। अब कपिल जी मैं आपके पास आता हूँ। इन्होंने नॉन एग्री की बात की। एग्री मार्केट के सामने एक बड़ा चैलेंज जो है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का चैलेंज। ट्रस्ट डेफिसिट इन द सेंस ये कि सरकार को भी बार बार ये लगता है कि कोई कमोडिटी अगर एसेंशियल है और फ्यूचर में लिस्ट है तो उसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं। ये ब्लेम एग्री मार्केट बहुत लंबे समय से झेल रहा है। दूसरी बात, कई बार हमने देखा है कि कमोडिटी मार्केट में अगर अचानक कोई तेज़ी मंदी आ जाए तो सट्टेबाजी की बात होने लगती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मीडिया में भी ये बात आती है। इक्विटी में जब इस तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो वहाँ इस तरह की चर्चा तुरंत नहीं होती है कि भाई इतना क्यों बढ़ा उतना गिरा। कमोडिटी मार्केट अभी सख्त है इसके लिए कि जब भी ऐसा होता है तो कई बार अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट का मूव होता है तो ये हल्ला होने लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये जो एक परसेप्शन है कमोडिटी मार्केट के लिए कि स्पेकुलेशन होता है खास करके एग्री मार्केट में, उस परसेप्शन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ये भरोसा दिलाया जाए पार्टिसिपेंट्स को और सरकार को कि ऐसा नहीं है। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स को कोई ऐसा डाउट नहीं है। आप सुबह से देख रहे हैं, चाहे वो सारी एक्सचेंजेस हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिसी मेकर्स हो या मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, सब बोल रहे हैं कि ये मार्केट होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक पार्टिसिपेंट्स को इस तरह का कन्फ्यूज़न है। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो को इम्प्रूव किया जाए और जो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट किए करके एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाए, ना कि उस मार्केट को बंद करने की बात की जाए। अनफॉर्चुनेट सर, टाइम कम है, बार-बार अल्टीमेटम आ रहा है। एक लाइन में अगर आप कुछ समझा पाएंगे क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि अभी हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस या अमृत काल की हम जब बात कर रहे हैं, 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आज रूरल मार्केट में रहती है। गोल्ड एज एन एसेट क्लास की बात कर रहे हैं हम। नेचुरल एसेट जो सारे फार्मर्स या रूरल मार्केट अपने घर में वीट या ग्वार या लेके रखते हैं, उसके फाइनेंशियलाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा। जस्ट 1 सेकेंड, अभी किसी ने फर्स्ट सेशन में बोला था कि जो मैक्सिमम ग्रोथ है इंडिया की वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में पहुंच रही है। बट अगर एज एन एक्सचेंज में देखूँ तो हमारी जो फर्स्ट है वो जस्ट अपोजिट शुरू होता है। ओके, राइट। सहरसा के एक कोसी ब्लॉक की वीमेन फार्मर ऑप्शंस ट्रेड कर रही है, राइट, आज भी खुद, राइट। एंड दैट इज समथिंग वी शुड गेट प्राउड ऑफ, दैट जो फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग जस्ट अपोजिट टू व्हाट द एंटायर मार्केट इज डूइंग। एंड आई थिंक द मोमेंट इट ग्रोज, ऑटोमेटिकली ये जो कंसर्न है ये कम हो जाएंगे और सही मायने में अमृत काल तभी आएगा। अब बिल्कुल हम आखिरी राउंड में है, टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि चूंकि पैनल में बाकी लोगों के सवाल नहीं हुए, 10-10 सेकंड का वक्त है सर, रैपिड फायर राउंड हम कर रहे हैं। एक सवाल, एक कोई सुझाव, समीर जी आपसे शुरुआत, एक सुझाव आपको देना हो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर इक्विटी या कमोडिटी में, एक सुझाव आपकी तरफ से क्या होगा 10 सेकंड में सर? बस सभी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, इन्वेस्टर्स की बात की, बट
किसी ने एज ग्रुप पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। अगर आप मिलेनियंस की बात करो, हाँ 18 to 25, उनका ध्यान जो है रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट से हटते जा रहा है और Okay. अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में ठीक है, ज्यादा तो उनके ऊपर आप कह रहे हैं फोकस होना चाहिए। सर आपका ठीक एक सुझाव कोई आपको हो इस टॉपिक पे, एक सुझाव अगर देना चाहें आप, 10 सेकंड का टाइम। एग्री पे बात करना चाहूँगा, और एग्री पे सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है। वेयर हाउसिंग, WDRA हैज़ टू बी मच 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 स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट इज टुडे। और फॉर एग्जांपल EGR अभी जो डीमैट में है, और दूसरा होना चाहिए कि जो अभी एक डीमैट अकाउंट जो ओपन किया, उसी डीमैट अकाउंट में सब आना चाहिए। आपका सर, आपका टेक श्री राम जी, 10 सेकंड। सर हमने इन्वेस्टर्स पे बहुत काम किया है, हाँ। प्रोडक्ट को बहुत एफिशिएंट बना दिया, मार्केट को एफिशिएंट बना दिया। हमने इश्यूअर्स पे बहुत काम किया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया, डिस्क्लोजर्स बढ़ा दिया। हाँ। हमने इंटरमीडिएरीज को बहुत स्क्वीज कर दिया है। ओके। इंटरमीडिएरीज को थोड़ा नर्चर करने के लिए रिफॉर्म चाहिए। ठीक है, ये 4-5 बड़े सुझाव आए हैं, इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब मैं जाता हूँ मिस्टर दीपक रंजन के पास, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है DAE MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर अब आप बताइए, आपने सब कुछ सुना और आप चूँकि डे टू डे में भी इन सारी चीज़ों को देखते हैं, आपके हिसाब से इस तरह के जो सुझाव आए हैं, इसके ऊपर किस तरह से अमल हो सकता है, आपका फाइनल टेक? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की वजह से ही मार्केट डेवलपमेंट आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह का हमारे इन द पास्ट फ्यू बजट्स आल्सो गवर्नमेंट हैज़ लेड अ रोड मैप फॉर काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वी वांट टू सी हैपनिंग इन दिस कंट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो अनाउंस किया गया था, जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिक्योरिटी मार्केट कोड। क्योंकि हमारे जो कानून बने हुए हैं जो सिक्योरिटी मार्केट में, कई तो बहुत ही पुराने हैं। 1956 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन SCRA है, उसके अलावा सेबी 90s में आया था, डिपॉजिटरी एक्ट आया था। तो ये अलग अलग एक्ट को जोड़ के एक सिंगल एक्ट बनाने का जो संकल्प लिया है सरकार ने, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट and this envisages a greater role for all the market infrastructure institutions in the coming years, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, डिपॉजिटरीज है, वही नहीं बल्कि जो मार्केट एसोसिएशंस है, वी आर envisaging a greater role for the market associations in the entire process of development regulation of the market. Investor protection is another very important area, जिस पे हमारे वित्त मंत्री भी इस बार भी उनके बजट स्पीच में ये बात रखी थी उन्होंने। सो ये सारी चीज़ें अगर होंगी इन द फ्यूचर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इससे मार्केट पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा और एक कंसेंसस आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस सेगमेंट ऑफ मार्केट इज़। किसी ने कहा था कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट भी बढ़ेगा। आई वांट टू सी कि ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ही एक सबसे बड़ा कारण बने इस मार्केट इकोनॉमी के ग्रो होने में। जब मैंने कैपिटल मार्केट में शुरू किया था इस क्षेत्र में काम करना, मुझे लगा ये एक पहले ऐसा इंप्रेशन आया था कि ये तो बड़े बड़े ब्रोकर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एक मार्केट है। बट जो अभी कपिल जी ने बात कही कि कमोडिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर एक किसान, गांव, फार्मर्स एसोसिएशंस की बात होती है, तो बहुत स्कोप है टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नए कमोडिटीज़ का प्रस्ताव सरकार के पास है और वी आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज एंड विल बी हैप्पी कि बहुत जल्दी ये नोटिफाई हो जाए, ताकि इससे इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ एवरीबडी हु इज। जो पुराने वाले बैन है सर, वो भी लिस्ट में है, आने वाला है कुछ? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। बट नहीं, बट आई मीन our focus should also be to expand this basket. Yes. Expansion of basket itself will give a lot of opportunity for the exchanges to expand new, launch contracts in new commodities. So, all very best wishes for all of you. इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द पैनलिस्ट। बहुत डिटेल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमोडिटी एंड इक्विटी में किस तरह से हो सकता है, उसके लिए आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब सब सुझाव तो आ गए हैं, बस अब ज़रूरत है कि उसको ठीक तरीके से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जब हम अगली बार इस कन्वेंशन में आएँ तो इस दिशा में कुछ काम आगे बढ़ता हुआ दिखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। As a gesture of goodwill, we will present the memento
to present the memento to Mr. Deepak Ranjan, Joint Director of the Commodities Market and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. I will request Mr. Avinash Kansal from ICICI Mumbai to come forward. Mr. Avinash Kansal. He is our National Executive Committee member also, Mr. Kansal. To present it to the Chief Business Officer of National Stock Exchange, Mr. Shriram Krishnan, I will request, actually I will use the word my mentor, Mr. S.K. Gupta, the past chairman and past director of NME, to present it to Mr. Shriram Krishnan. I will request Mr. Nitin Sahi from Findoc, Ludhiana, to present it to Mr. Samar Banwat. Mr. Nitin Sahi. He is also our National Executive Committee member. I will request Mr. Virendra Arora, our Executive Committee member of the North, and one of the intellectuals for the CPAI, to take the various points to present it to Mr. Samir Patil, an intellectual to an intellectual. I will request Mr. Siddhant Bansal from Lucknow. He is the son of our National Executive Committee member, Mr. Sunil Bansal, to present it to Mr. Rishi Nathani. I will request Mr. Parmod Sultania ji to present it to Mr. Kapil Dev. I will request another, our next gen leader, Manik Wadhwa, to present it to Mr. Mrityunjay Jha. भाई दौड़ के, अभी तो शादी नहीं हुई. I will request Mr. S.N. Daga to present it to Dr. Naresh Maheshwari. ये भी अपने पुराने साथी हैं, डागा साहब महेश्वरी हैं ये भी. मैं ये सोच रहा था कि लोग कम क्यों हैं, पता लगा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने लंच खोल दिया था, मतलब वो तो we will now break for the lunch and we will reassemble at 3:15 and we have to start those two sessions early because the minister Meenakshi Lekhi ji will be reaching at 4:30. So sharp at 3:15 we will start the third technical session. Pay point, Mr. Virender Mansukhani, past alternate president of CPAI and most likely to be the future president of CPAI. चले चीफ मेंटर जी ने कहा है वीरेंद्र मनसुखानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां.
Yogesh Kundani ji, Senior Vice President, Business Development, CDSL. Mr. Gurpreet Sidana, Whole-Time Director, Religare. And our Chairman of the West, Mr. Jayaprakash Gupta. वो तैयार है, फ्रांस तैयार है। Guest on the dais, ये निकल लगाए हूँ जिनको बोल के भी आया था। I first request Mr. Vineet Parikh from Orbis to present it to Mr. Ketan Doshi. अभी 1 मिनट पहले तक अवनीश जी आपके साथ खड़े हुए थे, चले गए क्या? He is the past executive committee member also of the CPAI. I will request Malini Prasad from ICICI to present it to Mr. Virender Mansukhani. She is the All India Marketing Head of the ICICI Securities. I will request Mr. Saurav Mittal from Raghunandan Agra to present it to Mr. Yogesh Kundani. I will request Mr. Sahil Mandiratta to present it to Mr. Gurpreet Sidana. And to the introducer of the panel, our North Chairman, Mr. Rakesh Jain, I will request Mr. MC Agarwal to present it to Mr. Rakesh Jain. वो सौरव ध्रुव चला गया क्या? नजर नहीं आ रहा इसलिए आवाज नहीं दिया मैंने उसके नाम की। ध्रुव चला गया क्या? बाहर है। I am not introducing the panelists. I am straightaway requesting my West Chairman, Mr. Jayaprakash Gupta, to take it forward and to introduce the panelist also. Mr. Jayaprakash Gupta. So my humble submission to you, Jayaprakash ji, is if you can do it in 30 to 35 minutes. ठीक है सर, thank you, we'll try. So thank you so much, and देखिए लंच के बाद का सेशन है, so I try to keep it as interactive as possible. So ठीक है. नेटवर्किंग कर रहे हैं बाप. See टाइम कम है, 30-35 मिनट्स ही हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए. सो एज आई गो टू द पैनलिस्ट आई विल इंट्रोड्यूस देम देन एंड देयर. तो एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना था. So before I start the discussion, I would request Rakesh Jain ji to introduce the topic, and then I can take it from there. Good afternoon, friends. FinTech, the short of financial technology, is changing how we handle money. Friends, it is not just about making things simpler, but also about making money matters accessible for everyone
and creating chances for prosperity. Let's see how this happens. Thanks to government initiatives like Jan Dhan and peer-to-peer lending, financial compliance is now faster and easier. Use of e-Aadhaar and video-based ID verification, reducing cost and speeding process. और फिनटेक हमें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है. Online payments have become a part of our daily routine, making it easy for everyone to get what they need to pay, what they need and pay bills online. दूर दराज के इलाकों में and even in rural areas, among those with lower incomes, fintech is providing ways to save and grow money. People can access loans, savings, options they could dream of a decade ago. If we talk about capital and stock market, we can open account online from anywhere. We can trade, invest from any part of India. In nutshell, fintech has transformed the last decade in India. It has made borrowing easier, payments safer, and access to financial services more convenient. It is also reached out to people who were previously overlooked, like those in remote areas and with lower incomes. Fintech has given individuals the chance to save, invest, and be part of the stock markets and the government programs, leading to a stronger economy and more empowerment. I think fintech is shaping the future of finance and stock markets, bringing us unmatched convenience, efficiency, and the true wealth creation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. So राकेश जी ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. He has set the context. But मैं एक before I start, I just want to cite an interaction which happened at in first week of September. मुंबई में global fintech forum था 5th, 6th and 7th of September. तो उसमें केवी कामत जी का एक बहुत bold vision statement था. What he was saying is that the kind of pace we are seeing, कि Indian economy can grow every year by $1 trillion. So by 2047, we will be a 30 trillion economy. और ये 30 trillion economy में 25 से 30% का growth will be coming from digital India. So we can understand the kind of role which the digitization is going to play. अभी तक हम लोगों ने जो अचीव किया है, that has primarily been because of AIM. By AIM, I mean Aadhaar, Internet and Mobile. So this has really revolutionized the way transaction happens. The last mile delivery of financial services happens in India. But going forward, अगर Digital India का 30% contribution है, उसमें दो significant factors हैं, वो बहुत बड़ा role play कर सकते हैं. One is e-commerce and another is fintech. Now, since we belong to the fintech fraternity in one way or the other, be it NBFC, stockbroking or any other financial services, we really need to understand कि fintech है तो financial inclusion सही मायने में possible है. अगर financial inclusion है तो financial literacy है, और अगर financial literacy है तो जाके financial wealth creation possible है. अदरवाइज हम फिर से वही फेज में चले जाएंगे जहाँ पे सिर्फ गोल्ड और लैंड ही वेल्थ क्रिएशन का जरिया था. इफ वी रियली वांट टू कैपिटलाइज द वे देयर आर इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन प्लेस बाय द गवर्नमेंट कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट को करना है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट होगा तो ही जाके फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन होगा. नाउ देयर इज नो डिनायल that fintech has revolutionized things. So I just don't want to go back and discuss कि वो कैसे हुआ है.
हमारे साथ आज पैनल में वी हैव वेरी एलीट पैनल. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ केतन. So Ketan is managing director of PayPoint. So PayPoint is one of the leading players in the last mile delivery of financial services. So Ketan, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो ये इंश्योर करता है कि कोई आज आसाम के एक रिमोटेस्ट विलेज में बैठा है और उसका बच्चा अगर दिल्ली से उसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो ही इज़ गेटिंग दैट मनी इंस्टेंटली. दिस हैज़ ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ फिनटेक, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. So Ketan, can you please share your experience कि ये financial inclusion किस तरह से हो रहा है और आज वो जो रिमोटेस्ट विलेज में बैठा है उसे जब ये बैंकिंग की सुविधा मिल रही है तो इज ही थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स या उसके लिए अभी भी आउटलुक क्या है? इफ़ यू कैन शेयर विद आवर ऑडियंस. So because I'm out of the breed which is sitting here, let me set the context. हम क्या कर रहे हैं? So all this Jan Dhan Yojana etc. which is running in the country is actually delivered by fintechs like us. We have retail touch points across the country. We have 65,000 touch points across the country where a customer can walk in, open a bank account, and these outlets become a sort of bank accounts for bank branches for them. That's how the entire revolution of the Jan Dhan has happened in last few years. And from say around 50% of bank India, which was there, मतलब आज से 8 बरस पहले 50% था खाली, आज 98.5% of Indian households are fully banked. So this is the kind of massive transformation which has been brought into the country. And why there was a problem and how the fintechs have solved it. The bigger problem, why services are not reaching to the last mile, because there is no access to the services. अगर एक गांव में 1000 लोग रह रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचना है, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. आपका आरएम बोलेगा कि भैया हम नहीं जा सकते वहाँ पे. तो जो ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सोल्यूशन आए हैं उससे वो डिजिटली ऑनबोर्ड हो पा रहा है. बट उसमें एक दूसरा लेवल का प्रॉब्लम है, देयर नीड्स टू बी एन असिस्टेंस. So unless and until someone in that village guides him that boss, this is how the SIP can be done, this is the margin, this is the revenue, or this is how it can be redeemed, there needs to be a hand-holding to the person who is coming in the financial system. No, इन्हें आपने बहुत valid point raise So किया. unless and until there is an assistance, it will not happen. No, yeah, I'll come to that. लेकिन मेरा जो main question So I'm था, coming to it. Yeah. I'm coming to it. That's why, again, demography is very, I mean, we have so many states, every 300 kilometers, the psyche changes, the languages changes. There are 19,500 languages in the country. So all this has happened in last 10 years that we leap from 50% to 98%. Now, इतने सारे बैंक अकाउंट खुल गए. अब ये जो 50% जनता जो फाइनेंशियल सिस्टम में आई है फर्स्ट टाइम, उस कस्टमर का एक कर्व है, मैच्योरिटी कर्व है. एंड इफ यू सी लास्ट 3 years वी गॉट द रिजल्ट राइट इन टर्म्स ऑफ SIP और opening of demat accounts etc. So this started in 2014. As and when the customer got matured in 2018, 19, 20, धीरे 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 maturity customer का आने लगा. And they came into other services. First, they learned banking, then they are going to lending, which is already started. They have people who have saving, they have started investing in SIP. People who have want to trade, they have started getting into trading. Now, in entire country, जो 18 बरस का बंदा होता है, my daughter, I asked her at 18th birthday, what do you want? She said, I want a demat account, I want a bank account. That's all I want. And that's the financial thought process which is getting into the country. Because 15वीं में PMJDY अकाउंट खुल गए थे जब वो 15 बरस के थे. So maturity curve आ रहा है, and I think this is going to be, this is just a starting what we are seeing. The SIP which we are seeing is just the starting, tip of the iceberg. Maturity curve जैसे जैसे आते जाएगा, this is going to explode.
सो अभी हम इनिशियल स्टेज पे है, आपका बोलना है, राइट? सो We दिस हैज have, टू मैच्योर. at this moment, we are on the second wave of the journey. First wave was we saw the bank account opening, which happened. Now we are seeing lending, etc. happening. जो लोग के पास formal, see, money has come in the formal system, the cost of capital is going down, और the saving rate is coming, saving में से revenue generation हो रहा है. तो ये जैसे ही mature होगा, second wave आएगा जो इससे 2x होगा. और मतलब ये lending और businesses अभी formal system में आ रहे हैं, अब तो उनका पैसा आना बाकी है system में. So we manage close to 45 lakh bank accounts with various banks, and उनका focus रहता है customer का कि DBT का पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. अब वो सेविंग करने लगे तो 1000 करोड़ पड़े इन लोगों के हमारे पास, तो जो पहले नहीं था 2 बरस पहले, अब वो बाद में यूज़ करना चालू कर देंगे. जो SIP में आएगा, FD में आएगा, E-Gold में आएगा, यही कमोडिटी में आएगा. ग्रेट. सो हम लोग इस पे आएंगे फिर वापस. सो आई जस्ट जहाँ पे आपने शुरुआत की थी कि अभी भी वो असिस्टेंस चाहिए, सो आई वुड कम टू गुरप्रीत. ठीक है. सो गुरप्रीत, यू रन अ सेटअप जहाँ पे आप अभी भी ट्रेडिशनल वे में करते हैं, जहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड होता है एज फार एज कैपिटल मार्केट्स आर कंसर्न्ड. देखिए, फाइनेंस आप जितना भी कहें इज़ अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट. समबडी इज़ गिविंग यू मनी, सो देर इज़ अ ट्रस्ट. टच एंड फील आज भी रूरल एरिया या Tier 2 Tier 3 सिटी में काम करता है. सो व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट you are facing because of fintechs? One. Second is how you are trying to cope up with it, because मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं और ये चैलेंज सभी के लिए है. सो यू आर बीइंग वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स ऑन द ट्रेडिशनल स्पेस. अगर आप कुछ लाइट थ्रो कर पाएँ, सो दैट विल ऑलवेज बी अ टेक अवे फॉर फ्यू ऑफ आवर मेंबर्स एज वेल. Yeah, thanks Jay. So I think everybody is evolving as the markets are evolving. So जैसे आपने बोला कि we are traditional player. So what is traditional? We call traditional who is not doing large number of client acquisition through the discount model. Otherwise, traditional is not physical. Am I right? So in a traditional model, I think the differentiation is that one, we have a large physical presence, which is helping us to solve the needs and address the needs of our customers, which is extremely important if you have to service customers who are not comfortable to trade fully digitally. Having said that, in our kind of business also, 80% of the business is done by the customers online. But does it mean that they don't need any physical presence? They don't need any human intervention? The answer to that is no. Because the kind of business we do, in that business, the physical presence and touch and emotional connect is extremely important. Now, the second question which you asked me was that do we feel the threat of the new generation companies which are coming in? So I think rather than being threatened by that, what we are doing is that we are evolving our business model. And the journey of that has not started now, we have started long time back. And before even I talk about what Religare is doing, the topic of today's conversation is financial inclusion through the fintech. Fintechs are the companies which are helping this financial inclusion today. But the way I think is that financial inclusion started from the fact and the time when government started Aadhaar. Because if there would have been no Aadhaar, if Jio would have not come and started giving mobile data at a low cost to everyone in the country, if these two things would have not happened long time back, we would have not been sitting over here today and talking about all these things. So there were a lot of things which have helped this industry to grow, and after that, Jan-Dhan accounts, Demon, because if demonetization would have not happened, Paytm would have not succeeded. So all these things have evolved over the period of last 10-15 years. And we as a company, we are also a fintech company, because I mean, who in broking will think that a company like ours, which is not that large in the size in terms of the brokerages today, we have more than 125 people in IT. So if there are so many people in IT, how can we not be IT company?
because the IT companies don't have so many people. So our journey of growing in the digital space, we were the first ones to start making Aadhaar cards for the government of India. Most of the people will not know that. We issue, even today, in today's time, we have a 12% market share if you have to look at all the PAN cards which are issued in the country. People don't know that. And we have a division of religare broking which is doing completely identical business of what Ketan's company is doing. And since that company gets overshadowed by the broking business, now we have started the process of demerging that company into a separate company, which will be a subsidiary of religare broking. And that already has such a large scale that we have more than 60,000 franchisees across the country. Because when we look at brokerage business, where we call traditional business, around 15 years back when we started this company to grow, we thought that by having 1,000 franchisees and having a presence of 400 cities plus is a very deep network of the broking business. But when we actually go into this space, we find that there is no scope, there is no limit. You can have 5 lakh franchisees also. So this is a large market which PayPoint is addressing, and we are also trying to address from our business perspective, which can become an addressable market to really grow the business in many which ways. So if you look at the global experience of that, Gmail is free of cost, but Google has built this entire business around Gmail. So, Jay, my short answer to this long story is that Religare is also planning, and we are also addressing our needs to evolve our business model. But the threat should not be taken as a threat. I think everybody else is trying to contribute and increasing the size of the market, which is helping everyone. Yeah, fair. So I'll come to Yogesh on this. See, जो last 3 साल में अकाउंट खुले हैं, इसमें ये ट्रेंड है कि less than 30 years of accounts जो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने अकाउंट खोला है वो मेजॉरिटी था. और वेरी इनकरेजिंग चीज़ ये था कि इसमें ज़्यादातर अकाउंट्स टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से आए, राइट. सो वो एक फेज़ था जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा. कोविड ऑल्सो हेल्प्ड, एज गुरप्रीत ऑल्सो मैंशनड कि इंटरनेट, जियो, आधार, दिस ऑल प्लेड पिवोटल रोल इन दिस. बट आगे जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो रहा है, ओके. फाइनेंशियल इंक्लूजन से जो फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है, इसमें what kind of role which CDSL foresees, right, apart from just ensuring that कि डीमैट अकाउंट खुल जाए, उसके आगे आप क्या कर रहे हैं इस पे? So thank you CPAI for having me here, and I think the theme of this program is very apt, and more so our session's topic also, keeping in mind the Amrit Kal which is going to come. So you're right. So post-COVID, virtually more than 90% of the accounts which are getting opened now are being opened online. This is thanks to the step taken by the regulator way back in March 2020, wherein online account opening was enabled. Subsequently, also the steps which have been taken by the regulator have helped our industry. Like for example, margin pledge repledge system came in, which gave visibility to the investor that at what level his stock is pledged. So that built trust in the investors, and trust has brought in more number of investors back into the system. So at CDSL, what we are actually doing is leveraging the technology, the processes to build trust in the system. And once the trust is built, you'll have repeat, sort of customers who have come in or who are dormant. They become active and start investing. So Demat account, as we all know, is the initial step of the investment journey. We are seeing a lot of investors who have opened accounts are starting SIPs in Demat form also. Okay, and that can be witnessed by, we have now more than 15,000 crore worth of SIPs today coming into the, the system. They are happening in the online way also in the Demat account. Of course, the wealth would be built over the long term. It's not a 1 day, 1 month or a 1 year process. It takes time to build wealth. That if you see the
journey of the Sensex or the Nifty also. That proves that, you know, investors who have held investments for a long period of time have made actually the money and not the traders. So traders actually, those who do it in options would have lost more wealth. What we are doing at CDSL is, along with all other MIIs, which is the stock exchanges, BSE, NSE, NSDL, with SEBI, we collectively, MIIs with SEBI are doing now more than 30,000 investor awareness programs across the country in a year. Okay. That has also helped to a large extent. The investor awareness campaign which AMFI has done, that has also helped to a large extent in expanding the market, which ultimately has benefited the entire ecosystem. Post-COVID, apart from doing investor awareness programs physically, we are now, in the last 2-3 years, all MIIs along with SEBI, we are focusing on digital awareness also. So like, for example, today CDSL is present on 6 social media platforms. We are also present on KU, which is the homegrown app, India app. We talk about Atmanirbhar, you know, Bharat. That is an Indian app which is gaining popularity, and most of our subscribers in CDSL today, after Facebook, are actually on KU. Okay, so that talks about the, you know, this thing. Yeah. So that will continue with that. I'll cut it short, sorry. So fair point. You are saying that आगे numbers के लिए आप financial literacy पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, more number of seminars and all. So Virender ji, I'll come to you. So see, you have been part of lot of deliberations which a regulator does. You know, you have been also part of certain policy formation process. तो मेरा ये कहना है कि see, past में जितने भी scams हुए या bad experience हुए, उसमें हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि business has grown faster than what the regulations are. So in the current regime, we are finding regulator to be proactive. You know, they are bringing regulations which there is also a fear कि ये शायद innovation को kill कर दे, क्योंकि आप इतने tight regulations लाओगे तो आपने पूरा rule book ही define कर दिया, तो where is a room for innovation? So do you think over regulation is out of fear, जैसे once bitten twice shy, या is there any other perspective which you would like to share? So in the morning, Sundareshan ji mentioned that if we regulate too much, the industry creates a problem. If we don't, the media creates a problem, SEBI is sleeping. So, but that said, I'll give you another example. Let's say you go on Amazon.com and you try to purchase anything in Amazon.in. You go to the payment gateway, you have a TOTP which comes in, you need to authenticate whether you are buying a 500 rupees thing or a 2000 rupees thing. Now look at the same Amazon in US. If you once you saved your card details on Amazon.com, and if you don't have an Indian card, you have a global card, you don't need to really go back and have an OTP. Now it's the same Amazon, the same technology stack exists. But where is the difference? The difference is coming because of regulation. So now in India, RBI, for example, mandates that, you know, every transaction must be authenticated via TOTP. Now, this is just a difference of regulatory approach. Can you say it's right for the US regulators not to insist on a TOTP? Or can you say, is it right that for Indian context, the regulator insists that you should have a TOTP? Maybe it's a different situation. You know, we are all used to, you know, comparing in regulatory paradigms and saying, look, hey, this is what happens at CME. Why don't we just copy it? And our regulator has always said, you know, that, you know, it's not the same market. So my brief point to you is, it's a tightrope walk for the regulator also. And it's not necessarily a once bitten, twice shy. Yes, there can be sometimes, it's like a pendulum, you know, it swings both ways sometimes. But the real challenge for the regulator is to be in somewhere middle so that, you know, industry can innovate to a certain extent, but industry does not feel, you know, too unbounded so that it goes and does crazy stuff, which then results into a bigger problem because the trust of the investor is broken. See, as he mentioned, the trust of the investor is what is actually going to get us more investors into the ecosystem. They should feel continuously comfortable with the system. Yes, there are challenges around how the industry perceives, you know, the regulation and the kind of problems which it brings in for them in terms of implementation. And in a sense, for example, in last week, the chairperson in an interaction said that we are looking at a regulatory U-turn. We want to stop prescribing the procedure
We want to only prescribe the policy vision, and we let industry be more inclusive and share us the execution roadmap. So long as your execution roadmap is going to suffice our regulatory objectives, we'll give you all the bandwidth to play around within those frameworks. And as a pilot, a lot of members have been facing a problem with upstreaming. That's the first pilot circular which has come to the forum which has been set up by SEBI. So we are trying to fix the solutions which will suffice the regulatory objectives and make life of members easy. And we hope it succeeds, because it'll create a path for us for all future regulation. Instead of SEBI being prescriptive on the process flow, it will just prescribe its regulatory objectives, and we will try to fulfill those objectives in the easiest possible fashion. So we have a regulator who doesn't dictate but who listens. Yeah, we can say that. So I'll come to part 2 and the final part of this discussion. See, abhi 7 minutes. Okay. So अच्छा yeah. So अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बात किया. सेकंड पार्ट में I just want to put it this way कि see, we cannot compete because our whole objective is that we don't want to restrict to 7.5 crore accounts, because we want to grow to 25 crore accounts, because we want to reach an economy of 30 trillion by 2047. So keeping that in mind, is competition better? Yeah, collaboration is better. I personally feel कि you do not have to compete, but you have to collaborate. So for a business like Ketan's, where he has already created that distribution network, कि जहाँ पे उसके पास 45 लाख बैंक अकाउंट्स हैं जिसे वो सर्विस कर रहे हैं, he is doing around at 19,000 places, right? 65,000 places. So अगर आपके बिजनेस पे बैंक करके किसी को कोलैबोरेट करना है, राइट? सो व्हाट आर द वेज आउट देयर, और उसमें आपने अगर इस तरह का कोलैबोरेशन अप्रोच किया है तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? So definitely, we are a distribution pipe. We have a crore of customer month on month coming to us. We are a distribution pipe. Clearly, we don't manufacture anything. DMAT CDSL का हो सकता है, broking इनका हो सकता है, insurance इनका हो सकता है. We are a platform which distributes. So most of the fintechs are into distribution. Their core activity is distribution. So we collaborate with one of the partner, and then within fintechs there is a war, so there is a competition. So this is how entire ecosystem is working, and I think collaboration is the key. We collaborate with banks, insurance companies, broking companies, DMAT, anywhere and everywhere where we can reach out. Our model is simple: cross-sell a product. That's all. So Gurpreet, now this account aggregator framework is almost live. Okay. So how do you see that as a challenge, as a threat? क्या है मतलब? See, for if that gets implemented fully, I think CDSL and NSDL are already part of it. तो customer centricity पे इतना focus है, वो कैसे आएगा? No, so I think that will further improve, because when we are talking about customer centricity, every customer today has 2 or 3 or 4 accounts, unless they are the youngsters who has just opened the account. So उनके पास 2, 3, 4 अकाउंट जो है, तो उनके लिए उनको मल्टीपल जगह पे रिपोर्ट्स देखने के लिए जाना पड़ता है. There may be various reasons why they want to keep all these accounts, because they have opened at different time zone, they have been holding shares over there, and बाहर किसी को क्यों देखूं, मेरे पास खुद 4 अकाउंट है, तो अब वो मेरे पास चॉइस है कि मैं उस किसी अकाउंट को बंद कर दूं. लेकिन मुझे लगता है कि उसकी पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स वहाँ बनी हुई हैं, उसके अंदर कैपिटल गेन रिपोर्ट आ जाएगी जब उसको बिकेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे शेयर्स मैंने 10 साल पहले खरीदे वो बेच दिए होंगे, तो कई सारे शेयर्स पड़े होंगे. तो उसके लिए अगर ये ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसमें कि फॉर द इन्वेस्टर देयर इज अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट विच इज़ अवेलेबल, वेयर आई कैन लुक एट ऑल द रिपोर्ट्स, आई कैन एक्सेस, बिकॉज ट्रेड तो लोग इन्वेस्टर्स रोज नहीं करते हैं, ट्रेडर्स रोज करते हैं. तो इफ दे आर ट्रेडिंग वंस इन अ वाइल और मे बी वंस इन अ वीक ऑल्सो, but if they log into one place and find all the reports, I think customer centricity will further improve. It will not come down, and nobody should take it as a threat. I think the survival of the fittest is, which is anyways always there. So people who want to really take the benefit out of that and they want to service their customers better, they will get benefited, and we are open to that. We look forward to that.
That's nice. So quickly, Yogesh ji, can we see a collaboration between two depositories? Yeah. So we are already collaborating, in the sense we collaborate with all our 588 DPs, make it easier for them to do the business. So that is one part of it. You touched upon the account aggregator part. Briefly, in the morning session, Honorable Minister spoke about account aggregator in his last part of the speech. So CDSL is currently an FIP in the account aggregator system. FIP is financial information provider. So we are an FIP, and on daily basis for the last 6 months, we have been providing information about the demat accounts, about the consolidated account statement that we are generating. That is hugely popular incidentally across both the depositories. Since 2015, both CDSL and NSDL, we have been sending a consolidated account statement to the investors on their registered email ID. This is consolidating demat accounts across both the depositories and mutual funds in statement of account form across all the 44 mutual fund companies registered with SEBI. So this, as an FIP, we are already providing. I understand a lot of big banks are also already part of the account aggregator system. So a wealth manager, say like Religare, will get information after the consent is provided by the investor, and Religare will get a full 360-degree view of the investor कि इसका कितना इंश्योरेंस किया हुआ है. तो अगर ये अंडर इंश्योर्ड है तो रेलीगेयर कैन इन्फॉर्म कि भाई आप एडिशनल इतना 50 लाख का इंश्योरेंस ले लीजिए. अगर आपका डेट में होल्डिंग कम है तो आप बोल सकते हैं कि आप बैलेंस कीजिए आपका ओवर इक्विटी में. So that is what will help. Sorry, I'll stop you, but मेरा question का आंसर अभी भी नहीं मिला है. But just for the paucity of time, I'll move to वीरेंद्र जी. वीरेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू. देखिए, रेगुलेशंस या जो हमें इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए, जो सीमलेस कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन MIIs और बिटवीन रेगुलेटर्स, दैट वी फील दैट इट्स टेकिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम आज के दिन में. बट हाउ डू यू सी इट? आज RBI और SEBI साथ में मिलके काम करे, बिकॉज द होल आइडिया, अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी की, तो इसमें तो ये सीमलेस, दे नीड टू बी सीमलेसली अटैच, राइट? चाहे हमारे MIIs ही क्यों ना हो, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, डिपॉजिटरीज हैं. तो हाउ डू यू सी थिंग्स मूविंग अहेड इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम हियर? So there are two parts to the question actually. If you are looking at MIIs which are under the same regulator, for example, to that purpose, you know, the level of coordination actually has improved across MIIs. That is a trend which we have been witnessing all along. But when you come to the second part of an inter-regulator domain, that, you know, SEBI has a domain, IRDA has a domain, RBI has a domain. Now the problem there is each of these regulators have their own mandates, and in a sense, for lack of a better word, their own constituency. And for us to expect that beyond, see, for example, currency futures, you have a dual regulation between RBI and SEBI. SEBI is framing the rules, but for every change, it first needs to go to RBI, get approval, and then only it can make changes into the product structure for regulatory reasons. I mean, I really do not see that kind of an integration happening wherein you will have inter-regulator cooperation. That's a separate thing. But if you are thinking like, for example, in IFSCA, you have a single unified regulator, we may be very far off from that, is my perception. Okay, thank you so much. So just to summarize quickly what we have discussed, पहला चीज़ है financial inclusion हो रहा है country में, financial literacy की ज़रूरत है. For any business which is traditional, they need to adapt. जैसे Religare, Gurpreet shared, you know, they are also into a business like PayPoint, and they are also having 125 member team for their IT, because छुपे आप under radar काम कर रहे हो, that's okay. So second is there has to be a collaboration. सिर्फ competition नहीं चाहिए, because अगर एक business model established है, आप उसको pivot बना के collaborate करके we all can grow together. Third, an important point which is yet to be answered by Virender ji, but inter-regulator cooperation चाहिए, otherwise ASBA is a challenge which can be a, I don't want to comment on that, but thank you so much everyone, Gurpreet, Yogesh, Ketan and Virender. On the last point, there are regulations which are allowed by the regulators,
things allowed by the regulators since all market participants are here, but industry implement nahi karti hai. Like simple example, wallet as a payment tool is not cannot be used to do a SIP, whereas under the SEBI guidelines it is allowed. But the participants have not adopted it. So I think the industry should, if they want a next wave of growth, this should be done. But it's not done. Yeah, that's a very I valid think point. If we anybody should from look at it. regulator here, Yeah. you can pay attention to it. I'm not regulator, rather the mutual funds, the fund houses, or you guys, everyone is a big distributor here. You guys can take it up and partner with whatever fintechs you want. Great. So I think it's already 4:05. So before इससे पहले सवरवाल जी से कुछ comment आए to stop. I think we are done. Thank you so much, and I thank you for all the inputs which we got from the panelists. Thanks a lot, Jayaprakash ji, for you have to be there for a minute for completing this session in the right time. And just to present our token, first I will request Mr. Naresh Rana from our BSc Broker Forum to present it to Mr. Ketan Doshi. I will request Mr. Pankaj Singh, that Northern Indian head of choice, to present it to Mr. Virendra Mansukhani. I will request Mr. Vinod Khanna from Lucknow to present it to Mr. Yogesh Kundani. Vinod Khanna is from Kanpur, actually. I just said Lucknow because they have offices at both the places. So, I will request our past Vice Chairman of the North, Mr. Gaurav Sharma, to present it to Mr. Gurpreet Sedana. Mr. Gaurav Sharma. I will request Vibhan Garg to present it to Mr. Jayaprakash Gupta. भाई जवान आदमी हो, तेज चलो. एक क्वेस्ट वाले दिनेश गर्ग जी का बेटा है वैसे. And I will request Mr. Alok Tulsian ji from Kanpur to present it to Mr. Rakesh Jain. Lot of thanks to all of you, sir. Especially my incoming president. दो कुर्सियां उठवाओ जल्दी. दोनों कोने वाली कुर्सी उठवा लो. Jayaprakash Gupta ji has some questions of his session, so he will continue with that until Mr. Madhu Kela ji is here. चलिए, छोड़िए. National Stock Exchange has put a questionnaire on your table. So please answer that. And to few of the winners,
they will get the award from the Minister Meenakshi Lekhi. So each one of you should take the initiative. It is on your tables, a plain paper. Otherwise, NSA team people will reply to that questions, and few of the winners will get award from the Minister, Mrs. Meenakshi Lekhi. भाई बहुत लोग नहीं भर रहे, सब लोग भर चुके क्या? नहीं तो हाँ जी, मिस्टर सिंघवी is here and Mr. चलिए, please welcome Mr. Madhu Kela, Mr. Anil Singhvi, and the TV personality and our founder executive committee member, Mr. Sandeep Jain ji. Let me introduce him. He is our founder executive committee member, and he is the person who is here as an executive committee member for last 12 years. Just to welcome our guest, first of all, I will request Mr. Sarad Murarka from Profit Mart, Pune, to welcome Mr. Madhu Kela. Mr. Sarad. I will request Mr. Om Prakash Chopra to welcome Mr. Sandeep Jain. I will request Ritu Singh to welcome Mr. Anil Singhvi. वो आपके टीवी चैनल पे डॉक्टर रवि सिंह आते हैं ना, जो उनकी वाइफ है. Sandeep ji is all yours now. You only introduce both the panelists. नहीं तो अनिल जी के बारे में मैं बहुत बोल सकता हूँ, सुबह रह गई था बोलना पर. देखिए मधु जी की हम्बलनेस देखिए आप, मतलब बोलते इंट्रोडक्शन लंबा चौड़ा मत देना. एंड आपका इंट्रोडक्शन में सर मैं ये सब नहीं बोलूंगा कि आप रिलायंस में 17 साल से हो, मैं ये नहीं बोलूंगा आपने एमके वेंचर स्टार्ट किया, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपने लंबा चौड़ा देना है तो मैं दे दूंगा. नहीं सर, मेरा चालू हो गया सर नेगेटिव स्टाइल में पॉजिटिव वो चालू हो गया है. अनिल जी से सीखा मैंने. तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा सर आपकी एक लिस्टेड कंपनी भी है एमके वेंचर्स कैपिटल एंड इट्स डूइंग वेरी वेल. और तीसरी बात और सर का नाम में भी मधु है एंड एक्चुअली में मधुबानी जो बोलते हैं ना, एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार से जो है, मृत्युंजय जी आप जान जाएंगे और भी लोग होंगे बिहार से यूपी से. तो मधुबानी मतलब वो इतने मधु हैं, इनकी पर्सनालिटी भी इतनी मतलब स्वीट है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है. मैं कल जब से ये इवेंट है तब से मैं कनेक्शन में आया हूँ, सर से बातचीत कर रहा हूँ एंड ही हैज़ बीन सो हम्बल. क्या लगता है दोस्त, क्या है दोस्त? मैं सर मैं आज आपसे पूछने वाला, आपको क्या लगता है सर? बाकी मधु सर के लिए तो कितना भी बोलो बहुत कम है. एंड बाकी तो आवर फेवरेट अनिल सर, अनिल जी के लिए तो मैं, आप बोलोगे ना मैं पूरा, आप सुबह से लेकर शाम तक देते तो भी मैं इंट्रोडक्शन देते देते खत्म कर देता पूरे घंटे. एंड बिलीव मी, जितने भी पैनलिस्ट आते हैं, आई कैन बोस्ट ऑफ दिस, सबसे ज़्यादा समय अगर किसी ने बिताया सारे पैनलिस्ट में से तो शायद अनिल जी के साथ मैंने इन टर्म्स ऑफ एनालिस्ट बिताया है. और दूसरी बात और, पहली बार एनालिस्ट को इतना रेस्पेक्ट देना कोई चैनल ने दिया है, और किसी चैनल नहीं मैं बोलूँगा कि एंकर ने दिया, तो वो अनिल जी ने दिया. पहले मुझे जैकपॉट के नाम से, फिर अभी जैन साहब के जेम्स के नाम से, और हमारे जितने भी एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट है जी बिजनेस पे, सबको एक अलग उन्होंने मुकाम दिया और अलग लेवल पे पहुंचाया. वो एक्चुअली हमारे सुभाष घई बोल लो या
क्या बोलूं मैं, जितने भी ये बड़े या हमारे यश चोपड़ा जी बोल लो, वैसे यश चोपड़ा जी हीरोइंस लाते थे और सुभाष घई हीरोज लाते थे, तो इसलिए मैंने सुभाष घई बोला। बट सर एनीवेज आई थिंक एक बार अब मैं बहुत समय ले लिया, और मुझे मालूम है कि सब लोगों को, मधु सर को और अनिल जी को सुनना, अनिल जी को आज 2-3 मिनट सुना और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स अनिल जी लास्ट टाइम तक, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, अगर कोई इतने लोग भीड़ आपको जो दिख रही है और खाना खाने के बाद और इतना कंटेंट के बाद भी अगर बैठे हैं, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड अनिल जी सर। Thank you. Thank you so much. I will certainly like to mention that in the morning, Anil ji did that which even we CPI office bearers could not do it. He Big clap. actually, whatever are the points of the CPI, indirectly was taken over by Anil ji, and I now can very well say that he is nothing but a pattern of CPI only. Thank you. Thank you. मधु सर अब आपसे शुरू करते हैं। बोलिए सर। मतलब मैंने तो एक बात तो है, ये जैसा नाम और हम्बल और सब कुछ है, अब आपका हेल्थ को लेकर कुछ पूछना है मुझे सर। इस फोटो में आप मोटे लग रहे हैं थोड़ा, और अभी सडनली मतलब मैंने एक चीज देखी, हेल्थ और वेल्थ दोनों का वरदान और विजडम तीनों का वरदान सर को मिला है। एंड ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, किसी का पेट निकल जाता है, किसी का क्या निकल जाता है, दिमाग। आप मेरा पेट पे मत देखिए सर। आपका भी नहीं निकला है। नहीं निकला हुआ है। सो मैंने सर को 2013 में जयपुर आए थे आप, तब आपका वजन और आज के वजन में, मतलब आपकी वेल्थ जितनी बड़ी है उसके ज्यादा प्रोपोर्शन से आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई है सर। तो इसका राज बता दे सर। तो संदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये मेरे को ये सीए इंस्टीट्यूट के फंक्शन बहुत पसंद है, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कि यहाँ हर बार जब भी मैं गया हूँ ना, तो 2-4 जैकपॉट जरूर लग जाता है, कोई ना कोई अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है और बहुत हाँ CPI, मैं बोल रहा हूँ इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना प्रोफेशनल, वो मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू सर। आपने राज बोला, मैं सीरियसली आपको बोलूँ, सी वॉरेन बफे से ना हर आदमी ने अलग अलग सी चीज़ें सीखी होगी। जो मेरे 2 की टेकअवेज वॉरेन बफेट के है, वो वॉरेन बफेट के है ना, वो एक ये है कि उन्होंने अपना करियर जो चालू किया, अभी वो 73 साल से वही काम कर रहे हैं, राइट। तो आप जो है ना, कोई भी अमाउंट को अगर 73 साल की उम्र तक के कंपाउंड करोगे ना, तो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट सक्सेस लगेगा, राइट। तो मेरा की टेक अवे ये है कि मैं अभी 54 का ही हूँ और वॉरेन बफे है 94 के। 45, 54 और भी नीचे का बोलूँ सर फिगर्स आपके लिए। हाँ, तो और चार्ली मंगर है 99 के। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये जो काम कभी कर रहा हूँ, अगर उसको मैं 44 साल तक और कर लूँ, 40 साल तक और कर लूँ, राइट, तो उसका भी रिजल्ट बहुत डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। तो दैट इज़ द रियल मोटिवेशन फॉर हेल्थ, कि अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है। और दूसरा वॉरेन बफे का बहुत जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना कोई डिजास्टर नहीं किया, रेपुटेशन का भी डिजास्टर नहीं किया। मतलब आपने वॉरेन बफे का ये सुना होगा कि कोई शेयर नहीं चला, कम चला, बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया, पर उनको हमारे जैसा डिस्टिंक्शन नहीं है 100 का 0 करने का, राइट। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट आई वुड से विच आई लर्न। तो हेल्थ का तो ऐसा है संदीप भाई, रियल में मैं तो सबको बोलूँगा कि जीवन में ना हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ। अगर आपको प्रोफेशनली भी सक्सेस होना है ना, अभी मेरे तो मेंटर गुरु भाई राकेश भैया थे, और अभी अपन ने देखा ही कि हेल्थ की वजह से उनकी लाइफ में क्या हो गया। तो आई एम तो इवन मोर डिटरमिन्ड। अभी अनिल जी को मैं यही बोल रहा था कि अभी 17 घंटे का फास्ट, 16 घंटे का फास्ट मैंने पपाया के साथ तोड़ा है। मैं बोला ये तो कुछ भी करके ना हेल्थ को ठीक रखना है। बिल्कुल। सो द हेल्थ बोलते हैं ना कि द हेल्थ ऑफ वेल्थ इज बिगर देन द वेल्थ ऑफ हेल्थ, तो शायद आपका वैसा ही है। अनिल जी आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ और रिवर्स मैकेनिज्म में।
अब धोइए मेरे को आप ठीक से। आपके पास गोल्डन चांस है आज, जितना बदला ले सकते हैं आप लीजिए। अरे नहीं नहीं सर, मतलब चाहे तो आप मुश्किल सवाल पूछें, चाहे तो खिंचाई करें, ऑल योर्स एक्चुअली। मतलब कई बार ऐसा होता है कि रोल रिवर्सल्स का भी अपना मज़ा होता है। कभी कभी वो होता था स्कूल में टीचर्स डे के दिन बच्चे टीचर्स बनते हैं और फिर उसके बाद टीचर्स को सामने बैठना होता है। तो आई होप कि ऐसा ही कुछ हुआ। अमरीश पुरी और अनिल कपूर वाला स्टोरी भी याद होगा आपको सर। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो ऐसा नहीं होगा आपके साथ सर, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है आज तक की इंडियन हिस्ट्री में ऐसा बिजनेस एंकर। और सबसे बढ़िया बात है, मुझे नहीं पता कितने पॉपुलर, क्या मोस्ट लव्ड एंकर अगर कोई है आज तक की हिस्ट्री में, अभी और पहले और कभी आगे भी होगा, तो अनिल जी, आई थिंक अ बिग अपलॉड्स फॉर हिम। अनिल जी के बारे में मैं भी एक बात बोलूँगा सर। Obviously I have known Anil ji for last 25 years, so he's again become very popular, पर आई थिंक इनकी सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी वो है ना, वो अभी भी अप्रोचेबल और हम्बल है। यस राइट। आज के ज़माने में चाय से गर्म केटली है, तो जो आदमी इनके आजू बाजू हैं, ये जो आजू बाजू थे वो ज़्यादा एरोगेंट हो गए। हम हो गए ना सर, देखिए सर मेरा एरोगेंस देखो। ये तो अभी भी अप्रोचेबल है। देखो नहीं मधु भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो है कि ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं कर लिया कि जिसके लिए बहुत हवा में उड़ा जाए। ठीक है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत पहचान बन गई, ईश्वर की कृपा है। दूसरी बात ये कि मेरे से बढ़िया दिखने वाले, मेरे से बढ़िया बोलने वाले, मेरे से बढ़िया एनालिसिस और एंकरिंग करने वाले हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। ईश्वर की कृपा है कि मुझे मौका मिला और मैं कुछ कर पाया। और वही ह्यूमिलिटी है ना, दिस इज ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये कि मेरे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें मैं आपको टीवी सेट के सामने बिठा दूँ, बोलूँ कि 3 घंटे आपको मेरा शो देखना ही देखना है। आपके हाथ में एक रिमोट है, एक उंगली पे आपने बटन दबाया तो चैनल बदल जाएगा। अनिल सिंह भी नहीं रहेगा। तो गलतफहमी किसी बात की नहीं रखनी है। ये आप सब लोगों का प्यार है, इसकी वजह से यहाँ बैठे हैं, जब तक है बैठे हैं। तो इसलिए ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, बाकी और कुछ नहीं। क्या बात है। अनिल जी के लिए वापस से एक और चीज़ अनिल जी के लिए बोलूँगा। मैं पहले क्या करते, बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो पहले बैटिंग जो करता था बाद में वो बॉलिंग नहीं करेगा, वो बॉलिंग बैटिंग ऑल्टरनेट होता है। तो इस बार मैं ऑल्टरनेटली अनिल जी सर से एक क्वेश्चन पूछूंगा। कैसे कर लेते हैं आप अनिल जी, एक बार ये बताइए सर। बड़े आराम से। नहीं, एक्चुअली यू लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। इट इज एज सिंपल एज। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो सुबह 5 बजे आपके लिए किक लगती है कि यार ऑफिस जाना है, ये काम करना है। और अगर आपको वो पसंद नहीं तो सुबह उठकर आपको ये लगेगा अरे यार आज फिर ऑफिस जाना है। तो ये एक ही शब्द का अंतर है कि आज ऑफिस जाना है और आज फिर ऑफिस जाना है। अच्छा, 2 ऑप्शन ऑडियंस में। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात करता हूँ कि मेरे ऑफिस में भी ऐसा होता है कि हर आदमी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता और हो भी नहीं सकता। 2 तरीका है, मैं कोई भी शो कर रहा हूँ, बुलेटिन कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि अरे यार आज फिर से वही शो करना है, वही यार क्या वही मार्केट है, वही हेडलाइन, वही शो, वही 4 लोग आएंगे, जैन साहब, कुणाल जी, राकेश जी टाइप बैठेंगे, उनसे करना है। और दूसरा तरीका ये कि यार इससे ज़्यादा डायनामिक और इससे ज़्यादा एक्शन वाली चीज़ क्या हो सकती है। हर एक सेकंड में, मिली सेकंड में स्टॉक की प्राइस बदल रही, सेंसेक्स बदल रहा है। दिस इज द मोस्ट डायनामिक थिंग हैपन इन द वर्ल्ड, राइट। और अगर उसको मैं कवर कर रहा हूँ तो हर वक्त मेरे लिए कुछ नया है। सो आपके नज़रिए पे कि आप किस तरह से देखते हैं। अगर देखते हैं तो हर रोज़ आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ नया है, और नहीं तो फिर वही रूटीन घिसी पिटी लाइफ है। सो इसलिए जब हम सोचते हैं कि सब नया है तो बड़ा आराम से हो जाता है। बाकी आप जैसे सारे दोस्त लोग होते हैं पैनल पे तो बड़ा लगता ही नहीं काम कर। कभी कभी तो ऐसे लगता है ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं यार, काम तो कर ही नहीं रहे, मजे ही कर रहे हैं। वाधवा जी समय दिखा रहे हैं, समय कम तो नहीं है, ज़्यादा करूँ ना सर? 5 बजे तक भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपना हॉल का है। नहीं आज नहीं बोलेंगे, मैंने सेट कर लिया अभी सर, आप लोग जब नहीं थे तब। मधु सर को पता नहीं है कितना डराते हैं सर, ये हमारे इंजन के ड्राइवर हैं। हाँ, कोई दूसरा आदमी नहीं है जो 12 साल से वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब आप लोग का आशीर्वाद है। अशोक सर है, वाधवा जी है, और सारे, मतलब मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक चीज
मैं सेक्टर्स के ऊपर तो पूछूंगा सर। मुझे ये ऐसा बोला गया कि आप लोग है ना ये सीरियस क्वेश्चन, एडुकेशनल क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो मैं बट पूछूंगा आपसे। तो देखिए आप आए, आपका विजडम हमें नहीं मिले ऐसा नहीं होगा, और अनिल जी आए, अनिल जी का विजडम नहीं मिले। बाकी एक जो नेक्स्ट वीक में नहीं पूछूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ का नहीं पूछूंगा, नेक्स्ट ईयर का नहीं पूछूंगा, नेक्स्ट 5 इयर्स का भी नहीं, बट नेक्स्ट 10 इयर्स सर्टेनली इंडियन इकोनॉमी का है, इंडिया का है, भारत का है। तो सर हमें आपसे एक तो आउटलुक चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि कितना लाख निफ्टी हो जाएगा सर, हमें चाहिए कि आपसे कुछ ऐसे हॉट सेक्टर्स जो आपको लगते हो, जहां पे आप बैट करते हैं ना, आई नो यू आर अ ग्रेट 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 इन्वेस्टर। जब जितनी बार भी आपसे बात हुई, थोड़ी देर बात हुई है, बट आपसे बात करके हर बार कुछ नया मुझे सीखने को मिला। और रीज़न है कि आपका सेक्टोरल आउटलुक या आपका जो भी, हम चाहते हैं कि आप हमारे को वैसे कुछ 5 टॉप सेक्टर्स बताएं या 10 टॉप सेक्टर्स। संदीप जी, पहले सेक्टर के पहले ना, जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो इंडिया है। ग्रेट, वाह, राइट। कि हम अगर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं ना, तो अगर फील्ड बहुत बड़ा होगा ना, तो ही प्लेयर अपना कारनामा दिखा सकता है। राइट। अगर फुटबॉल का फील्ड ही छोटा है ना, यहाँ पे आप रोनाल्डो को ले आओ, बोलो फुटबॉल खेलो, वो क्या खेलेगा? क्या बात है। राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडिया एक इतना बड़ा फुटबॉल फील्ड है ना। मैं बोल रहा हूँ दोस्त, हम लोग तो 30-32 साल से हैंग इन कर रहे हैं, और मेरे भाई साहब गवाह हैं, इन्होंने 25 साल पहले हो सकता है हमारा इंटरव्यू लिया होगा। One thing is which has really worked for us is what I want to share with everyone, that bullishness and conviction on India. Because जब तक वो आपको वो क्लैरिटी नहीं है ना कि इंडिया बढ़ेगा तो क्या सेक्टर बढ़ेगा ना, और क्या कंपनीज बढ़ेगी, पहले आपको वो कन्विक्शन होना जरूरी है। तो मे बी आई लाइक टू जस्ट स्पेंड 2-3 मिनट्स ऑन मेरे को इंडिया में ऐसा क्यों लगता है। प्लीज सर। तो जब मैं स्टॉक मार्केट में आया तो इंडिया की जीडीपी 300 बिलियन थी, राइट, 1992, एंड आज है करीब 3.5 बिलियन डॉलर्स। तो इवन डॉलर टर्म्स में 12 गुना हो गया, राइट। उस समय रुपी 25 था, अभी 80 हो गया है, 82 हो गया है। तो आप रुपी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना गुना हो गया इंडिया, राइट। अब अभी एक बिग पिक्चर पहले लेते हैं और सब ज्ञानी लोगों की बात करते हैं, चाहे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इवन इस वक्त का जो डेवोस में इंडिया का प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया है, देयर इज 1000 पेज प्रेजेंटेशन, राइट। उसमें उन्होंने बोला है कि आवर एस्पिरेशन इज, डेवोस का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो सबसे बड़ा वो होता है मीट, वहाँ पे वहाँ पे स्विट्जरलैंड। इंडियन गवर्नमेंट ने जाके बोला है कि हमारी जीडीपी 35 ट्रिलियन डॉलर होएगी बाय 2047, अमृतकाल में, राइट। मुकेश भाई ने पब्लिकली बोला है 40 ट्रिलियन होएगी, गौतम भाई बोल रहे हैं 25, 30, 28 से 32 ट्रिलियन डॉलर होगी। और बहुत सारे लोग, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, मॉर्गन स्टैनली हो, मरिल लिंच हो, सबका डायरेक्शन काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 25 होगी कि 30 होगी कि 35 होगी कि 40 होगी, अपनों को नहीं मालूम है, राइट। ये नंबर है एक। पर मैं जो कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 5000 साल लग गए हमको 3.5 ट्रिलियन लाने में, और अगले 25 साल में हम कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे जो हमने 5000 साल में करी, उससे भी ज़्यादा। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर अपने को टाइम बिताना जरूरी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू नो, पानी वहीं बहेगा जहां ढलान होगा, रुपया वहीं आएगा जहां ग्रोथ होगी, राइट। तो अगर आप देख रहे हो पूरे दुनिया में क्या सब जगह चल रहे हैं, एक इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन चाइना था, तो लास्ट 2 साल में आप देख रहे हो जैक मा, जो उनका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, ही वाज अ, यू नो, रियली लाइक ए पोस्टर बॉय ऑफ चाइना। अभी यही नहीं पता वो कहाँ है, राइट। 3-4 साल से कहाँ है गायब, यही नहीं पता है। तो वहाँ पे चाहे वो अपने को नहीं मालूम गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बट मैं बाहर से जो ऑब्जर्व करके देख रहा हूँ ना कुछ ट्रबल बड़ा है वहाँ पे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जियो पॉलिटिकल है, अपने को नहीं पता है क्या है। अभी देखो क्या है वहाँ पे, प्रॉपर्टी का प्राइस घट रहा है,
फर्स्ट टाइम अपन सुनाई दे रहा है कि सब तरीके का डिफॉल्ट हो रहा है। और ये जो कोविड हुआ ना संदीप भाई, ये इंडिया की एक हिसाब से हर आदमी पहले जो आउटसोर्सिंग करता था ना, वो ये बोलता था कि हमको चीपेस्ट चाहिए। अब ये हो गया कि मेरे को चीपेस्ट नहीं, मेरे को एक और अल्टरनेट चाहिए। क्योंकि क्या होगा अगर चाइना बंद हो जाए कोई भी रीजन से, महीना 2 महीना, तो क्या पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो जाएगी? और वही हुआ कोविड के टाइम में। आप देखो चिप मार्केट में क्या हुआ, ताइवान और चाहे पूरी, चाहे इंडिया में कार बने, अमेरिका में कार बने, सब जगह प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे लगता है ये कोविड के बाद ना एक इंडिया का prospect as a second supplier to the world has emerged very very strong। और अब जो सरकार की पॉलिसीज पिछले 8-9 साल से चल रही थी, स्पेसिफिकली द PLI, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बूम है। आप 5% बोल रहे हो मैं PLI का बेनिफिट दूंगा, और वो करीब 2 लाख करोड़ है। अगर आपको 2 लाख करोड़ का बेनिफिट देना है तो 40 लाख करोड़ का टर्नओवर करना पड़ेगा ना, तो मैं 2 लाख करोड़ का बेनिफिट दूंगा ना। तो अगले 5 साल के अंदर, और नए टर्नओवर की बात हो रही है, पुराने में आपको 1 रुपए का PLI नहीं है, तो नए 40 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही गोल्डन पीरियड है अपने लिए। वो टाइम फ्रेम में जो आप बोल रहे हैं, मार्केट की बाद में बात करेंगे, पहले इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है अगला 25 साल गोल्डन पीरियड है। और बिकॉज छोटा ग्रुप है, मैं ये बोलूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रह गई, जो अपने को सबको लग रहा है कि रहेगी। मुझे नहीं लगता है हमको 25 साल चाहिए अमृतकाल के लिए, अगला 5 साल ही अमृतकाल हो जाएगा। ये 2024 से 2029 का पीरियड ही इंडिया के लिए बड़ा अमृतकाल हो सकता है, राइट। अभी इस बैकड्रॉप पे अब आप क्या है, बुफे लगा हुआ है, आपका जो मर्जी हो वो खाओ ना, सिर्फ इतना खाना कि बदहजमी ना हो जाए, राइट। सो आपको जो पसंद है, जो कंपनीज पसंद है, जो सेक्टर पसंद है, जहाँ अगर आपकी कॉम्पिटेंस है तो आप वो चूज करो। सिंस आपने पूछा है सेक्टर्स पे वापस से आते हाँ, हैं। श्योर। मतलब एक एक करके अनिल जी देखिए, आपका जो ऑरा और आपका जो देखिए कितनी इन्फेक्शियस है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब लोग मस्ती में आ गए हैं यहाँ, सब लोगों को मजा आ रहा है। मधु भाई भी जबरदस्त एग्जांपल्स और सेंस ऑफ मधु भाई ह्यूमर। बड़े लाइव हैं, आपको पता नहीं है। हाँ, वो तो, और मेरा भी जोश डबल हो गया है। तो अब अनिल जी आज एक आपको अपोज करना पड़ेगा, आपको एक कंप्लेंट दे रहा हूँ। सब्बरवाल जी ने सुबह एक गलत बात बोल दी। सब्बरवाल साहब आप सुनिएगा, आपने 65% कैसे बोला, एक बार अनिल जी उसका जवाब देंगे। मैंने अपोज किया था सर वहीं पे बैठे बैठे। वो सब ठीक है। आपने 65-35 बोल दिया, हमने बोला 85-15। आजा। बट एनीवेज मैं तो मस्ती कर रहा था सर आपके साथ। तो अनिल जी अब ये बताइए। अरे नहीं, अरे नहीं, बट अनिल जी TRP ये सब आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। अल्टीमेटली आपका पैसा कहाँ बनता है, आपको कितना प्यार मिलता है, आप चैनल देख के पैसा बना पा रहे हैं और हमें कितना प्यार मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस थैंक यू। अब अनिल जी आपसे भी सेम सवाल है जी, इंडिया स्टोरी के ऊपर। देखिए वैसे तो मैं खुद मधु भाई से सीखता हूँ Right. और कई बार चैनल पे बोलता हूँ। कई बार अगर ऐसी सिचुएशन होती है जब लगता है कि आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं सीधा फ़ोन उठाता हूँ और मधु भैया का ये कि हाँ अनिल बोल क्या है, मतलब बहुत प्रेम से। सो उनके बात बोलना मतलब वही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती, वो कहते हैं ना अपने मार्केट की भाषा में, कि बहुत कंसोलिडेशन हो गया है, अब बड़ा मुंह आना चाहिए। अब वो बड़ा मुंह ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो पता नहीं होता, करेक्ट। तो इंडिया ने बहुत कंसोलिडेट किया है 75 साल तक, 70 साल तक किया। चलो पिछले 5 साल अच्छे रहे, 70 साल के कंसोलिडेशन से इंडिया को बाहर निकलना था, या तो हम खराब हो जाते बहुत। और जब आपको कंसोलिडेशन के बाद कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया है, तो जब ये ब्रेकआउट बड़ा हुआ, तो ये ब्रेकआउट 70 साल का ब्रेकआउट कोई 7 साल के लिए नहीं हुआ है, और नहीं ये इतने छोटे गेंस के लिए हुआ है। तो जितना ज़्यादा समय अगर आप इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का और उसके बाद जब वो पक कर निकलती है तो वो चीज़ बहुत ही अलग होती है। तो मेरा ये समझना है कि पिछले 5 साल पहले हम ये बात करते थे कि इंडिया का टाइम आने वाला है, आएगा। अब आ चुका है, वी हैव अराइव्ड।
अब यहाँ से टेक ऑफ का टाइम है, वो भी हम रनवे पे दौड़ना शुरू कर चुके हैं, इसमें भी डाउट नहीं है। सो अपनी फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली है और लंबा समय, मुझे लगता है कि मतलब ये आप शायद एग्री करेंगे इस चीज़ को कि दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो ग्लोबली हुई है। एक ज़माना था जापान में सिमिलर सिचुएशन थी और उसके बाद जापान में जो बड़ा बुल रन आया 35-40 साल का, 45 साल ब्रॉडली आप कह सकते हैं, वो देश बिल्कुल ही बदल गया और मतलब वो अलग लीग में पहुंच गया। मुझे लगता है कुछ कुछ एक वैसी शुरुआत होती दिख रही है हिंदुस्तान में। दूसरा, एक अलग तरह का बुल रन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलग तरह का माहौल इक्विटी मार्केट में चाइना में आया, जो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले था, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने आकर जो चाइना के मार्केट को संभाला, राइट। इतना चाइना का खुद का रिटेल का पैसा आने लगा, बाहर का तो आ ही रहा था, बाहर वालों ने पहले चाइना की स्टोरी समझी, उसके बाद चाइना वालों ने अपनी स्टोरी समझी। सिमिलर सिचुएशन हमारे यहाँ हो रही है। पहले हमारे बाहर के इन्वेस्टर समझ रहे थे कि इंडिया बढ़िया, इंडिया बढ़िया। अब कोविड के बाद हमारे रिटेल इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स होना ज़रूरी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है और हमारा बड़ा पैसा इक्विटी मार्केट में हमारे रिटेल का आ रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। चाइना के कंपैरिजन में हमारा मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंट है, राइट। वहाँ पर क्या है, एंट्री है, एग्जिट का कोई भरोसा नहीं है। बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे, पता नहीं चलेगा, आप बेच के नहीं निकल सकते, निकलोगे तो वहाँ की गवर्नमेंट की मर्जी पर। तो इंडिया के मार्केट ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, डेप्थ है और हमारे इन्वेस्टर्स अब जिस तरीके से आकर कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये दो बड़े फ़र्क है, एक इंडिया की टेक्निकल पोजीशनिंग, दूसरा मार्केट्स में जो लिक्विडिटी और जो पैसा आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़े बुल रन के लिए हम तैयार हो रहे हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। 20,000 कुछ भी नहीं है अभी तो, मतलब तभी निफ्टी और इंसान को ऊपर ही जाना है। बिल्कुल, वो तो मैं मधु भाई इसलिए कहता हूँ प्रोग्राम के, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही। ये कॉपीराइट करवा लो सर, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस और वायरल हो रखा है ये बहुत ज़्यादा। अच्छी चीज़ें जितनी फैले बढ़िया है। सो मधु भाई, अब वापस से आपके टॉपिक पे आते हैं सर। आपसे 5 सेक्टर, और अगर स्टॉक्स भी परमिट करेंगे तो आप सोच के रखिएगा, बट अभी 5 सेक्टर एक बार चाहिए आपसे सर। तो देखो 5 या 2 मैं नहीं बोलता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि शेयर मार्केट में क्या है, अगर आप कोई बढ़िया लंबी थीम पकड़ लो ना, तो आपका डिस्प्रपोर्शनेट पैसा बनता है, राइट। और मार्केट इज लाइक ए पेंडुलम, या वो लेफ्ट में रहता है या राइट में रहता है, कभी राइट तो रहता नहीं, वो मतलब बीच में कभी नहीं रहता है। तो देयर इज नथिंग लाइक राइट वैल्यूएशन, इधर इट इज एक्सट्रीम अंडर वैल्यूएशन और एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन, बिकॉज अल्टीमेटली ग्रीड और फियर का खेल है ना। जो आदमी रह जाता है उसको फिर कोई भी भाव पे लेने का है, राइट। वो अपन देख रहे हैं, जैसे भाई जो भी बात कर रहे हैं ना, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। तो क्या है, एनीथिंग विच यू वांट टू इम्प्लीमेंट, यू मस्ट मेक श्योर दैट यू डू योर ओन रिसर्च, DYOR, डू योर ओन रिसर्च। एब्सोल्युटली। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम 2-3 साल पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे थे, बराबर अनिल जी, चैनल पे भी आके जोर से बोला ना। अभी आपने थीम पकड़ लिया, राइट। मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे सबसे कम पैसे बने। क्यों? कि मैंने सेंट्रल बैंक नहीं खरीदा, मैंने यूको बैंक नहीं खरीदा। फंडामेंटल्स तो अलाउ नहीं करते हैं। तो उस समय वो फंडामेंटल अलाउ नहीं कर रहे थे और वो शेयर सबसे ज़्यादा बढ़े, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी टू स्टिक टू माई पोजिशन। तो संदीप भाई, 2 बड़ी थीम लगती है अगले 10-20 साल के लिए। एक लगता है कार्बन न्यूट्रलिटी। बेसिकली आप कहीं पे भी जाओ ना, अभी ये बहुत ही कठिन समस्या है पूरी दुनिया के लिए, और हम इसको रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखो, मैं अभी LA गया था, वहाँ पे 35 डिग्री टेम्परेचर है, राइट। तो जो मैंने 2-4 प्रेजेंटेशन देखे कि अगर कुछ नहीं हुआ दुनिया में ना, तो बहुत सारे शहरों में तापमान बढ़ के 60-65 डिग्री हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो ह्यूमैनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है, कुछ होना ही पड़ेगा, राइट। आज आप देखो यूरोप ने क्या किया है, उन्होंने अगर कोई चीज़ कार्बन से बनती है ना, तो उसके ऊपर, स्टील के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। तो इफ देयर इज ए नॉन कार्बन न्यूट्रल स्टील विच इज इम्पोर्टेड इन यूरोप, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है। तो मुझे लगता है
ये जो थीम है ना, अभी ये मोमेंटम पकड़ रही है. इसमें मेरे हिसाब से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर of value will get created and billions of dollars of value will get distracted in this time frame. अब आप उसमें आपको सोलर पकड़ना है तो सोलर पकड़ लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ लो, आपको जो थीम लगता है ना आप उसमें पकड़ लो. ये बात सही कही सर ने. 35 डिग्री टेम्परेचर में जुलाई 2016 की बात है, जुलाई 18 टू बी प्रिसाइज. अनिल जी डेट तो याद रहती है मुझे. 2016 की बात है, पेरिस में था. एंड मैं मेरे किमाम के पान में, क्या पान खाता हूँ तो हर जगह पान लेके जाता हूँ, तो किमाम के पान खराब हो गए. सर क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे फ्रिज और पंखा दोनों नहीं होता है, ना एसी होता है, और वो पड़े रह गए बाहर, वो खराब हो गए. इतनी मेहनत से इंडिया से लेके यूरोप में हॉलीडे जाने का मजा ही खत्म हो गया. खत्म हो गया. राइट. सिर्फ बिकॉज तापमान इतना बढ़ते जा रहे हैं ना, और ये तो बोल रहे अभी शुरुआत है. शुरुआत. ये मैं 2016 की 35 डिग्री की टेम्परेचर की बात. राइट. तो अभी तो जो लोग भी है ना, आप अपने क्षेत्र में जैसे भी जुड़े हुए हो, मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ही पावरफुल थीम है. इसकी अभी शुरुआत हो रही है. दूसरा एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यस. अब अभी हमको ये नहीं पता कि ये कैसे क्या इम्पैक्ट करेगा. अगेन ये बहुत अर्ली डेज है, पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा थीम होने वाला है, बिगर देन इंटरनेट. राइट. अगेन इट विल डिस्ट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये दो बहुत पावरफुल थीम्स मुझे लगती है अगले 10-20 साल के लिए. और कभी भी आप देखो कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती है ना, उसमें एक हिसाब का पैसा बनता है. राइट. वो 15% 20% क्या है. बिना हिसाब का पैसा कोई नई चीज में बनता सर आज आप ये डिस्प्रोपोर्शनेट वर्ड पे है ना, डिस्प्रोपोर्शनेटली फोकस कर रहे हैं. हाँ वही बोला, बिना हिसाब का पैसा कोई नई चीज में बनता है. आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जाके देख लो. राइट. जब प्राइवेट सेक्टर बैंक आए 94-95 में, उस समय जिसने पकड़ लिया तो उसका बिना हिसाब का पैसा बन गया, बिकॉज वो नई चीज थी. तो मैं तो एज ए इन्वेस्टर हमेशा ये देखता हूँ कि हम एटलीस्ट पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो हम कोई नई चीज में या बड़ी थीम में डाल सकते हैं क्या. राइट. अनिल जी आपसे भी 2 सेक्टर्स हमें चाहिए, 2, 3, 5 जो भी. देखिए वैसे हाल ही में हमने कुछ जो सेक्टर्स की बात की. पहले डिफेंस जब शुरू हुआ और उसके बाद लास्ट ईयर से हम रेलवे पे बहुत बुलिश हुए कि जो काम डिफेंस में हो वो काम अब रेलवे में होने जा रहा है. और रेलवे अभी भी, और मुझे लगता है कि एक हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए तो रेलवे अभी भी बहुत अच्छा सेक्टर है. आप खुद देख लीजिए कि 5 साल पहले या 10 साल पहले आप जब रेलवे में ट्रैवल करते थे, रेलवे स्टेशन पे जाते थे, तब और आज के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है. बहुत फ़र्क. आपकी ट्रेन से एरोप्लेन से बेहतर होने लग गई है. ठीक है. जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो आप फील करेंगे तो ही समझ में आ जाएगा. तो आई थिंक एक ये सेक्टर ऐसा है जहाँ और अभी एक सिंपल सी चीज़ है, लाइफ टाइम हाइपर मार्केट जब है तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि समझो यहाँ से मार्केट 20-30% घट गया, किसी भी रीजन से घटे, कोई इंटरनेशनल रीजन आ जाए या हमारे यहाँ का कोई रीजन आ जाए, तो 20-30% घटने में कौन सी कंपनी बिजनेस करती रहेगी, जिंदा रहेगी. ठीक है. तो वो कंजम्पशन वगैरह वो स्टैंडर्ड नाम आपके साथ. लेकिन ये सेक्टर ऐसे हैं जिनके पास 7-7, 8-8 साल, 5-5 साल, 10 साल की ऑर्डर बुक है. तब ये ऑर्डर बुक और ये रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी इनको बचाएगी. और गवर्नेंस इशू है नहीं क्योंकि ज़्यादातर आपके लिए सरकारी कंपनियां हैं. तो मुझे लगता है अब ये 2 सेक्टर अभी भी बहुत अच्छे रहेंगे, डिफेंस और रेलवे. लेकिन एक सेक्टर जो नया मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक मैंने कभी टीवी पे भी नहीं बोला है, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और वो है साइबर सिक्योरिटी. यस. साइबर सिक्योरिटी आप देखिएगा, एक ज़माना वो आने वाला है जब लोग पुलिस स्टेशन जाना बंद कर देंगे और लोग जो चोरी चकारी डाके डालने वाले रिपोर्टिंग फ्रॉम होम होने लग जाएगा, वर्क फ्रॉम होम के जैसे. ये जो पुलिस स्टेशन है ये साइबर स्टेशन में बदल जाएंगे. चोर है जो वो साइबर चोर हो जाएंगे, और ये हो रहा है. और वो मतलब साइबर थेफ्ट वाला, हाँ, ई चोरी वाला मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. और वहाँ पर आप ई चोरी वाले मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी चोर में इन्वेस्ट कर दें. तो आपको इन्वेस्ट वहीं करना है जो इन चोरों को पकड़ेगा. और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड न सिर्फ इंडिया में, अक्रॉस ग्लोब, मतलब अब आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में आईटी का एक अलग बजट होता है. आज से 10 साल पहले नहीं होता था, आज से 5 साल पहले थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू. अब आईटी के लिए आपको साल का कितना खर्चा करना है, कितना हर साल बढ़ाना है. और अब हर कंपनी में आज के 5 साल बाद देखिएगा, आप लोग जितने बैठे हैं
आज तक आपने, हो सकता है आप में से किसी ने साइबर सिक्योरिटी पे कोई खर्चा नहीं किया हो, आप लिख के रख लीजिएगा 5 साल बाद आपका एएमसी की तरह साइबर सिक्योरिटी में पैसा जाता है या नहीं जाता है। आपको वो अभी तक तो अपना खाली ये कि एक वो सॉफ्टवेयर ले लिया जिससे कि अगर आप कोई डाउनलोड करो तो वायरस ना आए। साइबर सिक्योरिटी के नाम पे हम इतना ही करते हैं, लेकिन हैकिंग रोकने के लिए रैंसम वाला बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है। तो अब एक बार, और इवन साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं उनका बिजनेस जो बनेगा, तो ये सेक्टर है फ्यूचर का जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड कंपनियां ज़्यादा है नहीं, छोटी कंपनियां हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, हिंदुस्तान में पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप कोई बहुत बढ़िया बिजनेस कीजिए, और अगर वो नहीं कर सकते तो अच्छे बिजनेस में पैसा लगा लीजिए। तो आप साइबर सिक्योरिटी की कंपनियां ढूंढिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मुझे लगता है अगले 5 साल 10 साल में मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा, मल्टीफोल्ड रिटर्न, इससे बढ़िया हो नहीं सकता है। दूसरी चीज़, इंटरनेट, डेटा, जो मधु सर ने भी बोला, इससे रिलेटेड बिजनेस, एआई, यहाँ भी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, जो थीम नहीं होती है, और जब तक आप थीम आइडेंटिफाई करके जब तक देखें तब तक कंपनियां बड़ी होने लगती है और वो लिस्टेड स्पेस में कम मिलती है, राइट। लेकिन तभी मौके हैं, और आप सब लोग इन्वेस्टर नहीं है खाली, आप ब्रोकर्स हैं, आप इन्वेस्टर्स हैंडल करते हैं, तो आप में वो एक्यूमेन है, समझिए कि आप ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं इस फोरम में कह रहा हूँ कि ये जो 2 बिजनेसेस हैं इन पे फोकस कीजिए, बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, वी आर वेरी लकी कि इतने लर्नेड और इतने ब्राइट माइंड, ब्राइटेस्ट, आई थिंक आप लोग दोनों ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स आज तक इंडिया ने जो देखा है उनमें से स्टॉक मार्केट्स में। एंड आई एम सो लकी, दोनों के साथ मेरी एक चीज़ कॉमन है। अनिल सर के साथ तो मैं हमेशा टीवी पे आने का मुझे मौका मिलता है, जी बिजनेस पे, और मधु सर के साथ एक चीज़ कॉमन है, छोटी मुँह बड़ी बात बोलता हूँ, सोमैया से मधु सर MBA किए हुए हैं, एंड वहाँ से मैंने भी MBA किया, और 7 साल जूनियर हुए मधु सर से। बट सर 7 साल का जो डिफरेंस है ना आपका सर, डिस्प्रपोर्शनेट है सर। अरे भाई आई एम सो आपका ग्रोथ का तो सर आपसे अब एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। अब हो गया, मार्केट पूछ लिया, सेगमेंट पूछ लिया, स्टॉक्स बाद में आप लोग बताना तो कोई वो नहीं है, बट हम ले या बिना तो छोड़ेंगे नहीं सर आपको, ये बात पक्की है। अनिल जी का भी रोज जो आजकल धमाके हो रहे हैं, कल एक कौन सा स्टॉक सर 20% सर्किट लग गया सर, PNB गिल्ड्स। बट एनीवे सर, आपके स्टॉक्स भी हमें चाहिएंगे। बट एक चीज, आपकी जर्नी मैंने पढ़ी और मुझे पता भी, आपके बारे में काफ़ी कुछ पहले से ही पता था, और आपका प्रोफाइल भी जब हमने ऑफिशियली मंगवाया तो पढ़ा भी। तो सोमैया से MBA करने के बाद आपने जॉब किया, जॉब, और इनफैक्ट इतना मतलब ज़बरदस्त जॉब किया, आज इतना बड़ा फंड आपने इंडिया का मैनेज किया हुआ है एज इन रिलायंस म्यूचुअल फंड। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि आप एकदम एंटरप्रेन्योर बन गए, और अब तो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, आप अपने आप को इन्वेस्टर भी कहते हैं पूरा। तो संदीप भाई, ये रिजल्ट जो है ना, ये कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद आते हैं। तो जैसे जो लोग IAS ऑफिसर बनते हैं ना, वो 1 साल की प्रिपरेशन से नहीं बनते हैं, राइट। वो आप कंसिस्टेंटली, तो मैंने तो 30 साल सिर्फ स्टॉक मार्केट किया है, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट अगेन कि अपने राइट टाइम राइट प्लेस स्टॉक मार्केट में थे। और जो अनिल जी बोल रहे थे ना कि जीवन में मेरे को अगर एक चीज किसी की भी सक्सेस के लिए एट्रीब्यूट करना है ना, तो वो है इनॉर्मस पैशन। राइट, राइट। आप अगर कोई चीज को करते हो जिसको आप रियल में लव करते हो ना, तो आपको आगे पीछे जाके सक्सेस मिलने वाली है, और फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे लगता है मार्केट एंड मी आर मेड फॉर ईच अदर, एंड आई कांट इमेजिन व्हाट माय लाइफ विल बी इफ देयर आर नो मार्केट्स, राइट। आई कांट इमेजिन, आई एम टेलिंग यू। कुछ लोगों ने मेरे को कई बार पूछने की कोशिश करी, अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो मैं बोला, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट ही कर रहा होता, क्योंकि मुझे और कुछ कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता हूँ मैं, राइट। तो अभी क्या है, धीरे 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 करके, जैसे आपने बोला ना, वॉरेन बफेट ने तो डिजास्टर नहीं किया, हम तो डिजास्टर के ऊपर पूरी बुक लिख सकते हैं। राइट। तो वो सब डिजास्टर कर करके सीख रहे हैं, एंड कोशिश कर रहे हैं कि नया डिजास्टर वो वाला ना करें जो पहले किया है। नया करना अलाउड है, बट होपफुली नया भी नहीं करेंगे अभी। तो अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी भयंकर है, जैसे अनिल जी ने बोला ना, और यहाँ पे अपना जो भी मार्केट से सीखा है उसको अमल कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर रिजल्ट्स आर स्पेक्टेकुलर फॉर एवरीवन, इट्स वेरी गुड फॉर अस एज वेल। राइट सर, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे
तो आपसे एक लिस्टेड कंपनी जो आपकी आई है एमके वेंचर्स कैपिटल, उसके बारे में और पूछेंगे। बट अनिल जी, अब आपके ऊपर आता हूं मैं। आई थिंक अब तो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 5 बजे का 10 मिनट रह गए हैं, 5-7 मिनट रह गए हैं। अनिल जी, कोई लोग आपको अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट्स बोलते हैं, कोई लोग आपको कपिल शर्मा बोलते हैं। तो मैं बोला कपिल शर्मा तो प्लीज, मतलब जो भी है, हमारे अनिल जी में और कपिल शर्मा में एक फर्क है कि वहां स्क्रिप्टेड जोक्स होते हैं और यहाँ पे इंस्टेंट होते हैं। तो ये कैसे कर लेते हैं इतना विटी, मतलब कैसे हो जाते हैं आप, जो आप हमारी खींचते हैं चैनल पे रोज, कैसे कर लेते हैं? हम तो सेटिंग भी नहीं करते आपके साथ सर। सारी क्रेडिट आपको, आपकी शक्ल देख के जोक्स निकल जाते हैं, मैं क्या करूँ। माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज। ऐसा है कि जितनी क्रेडिट मुझे है उतनी क्रेडिट मेरे पैनलिस्ट को भी है। अगर मैं आपके ऊपर 2 जोक मारूं और आपको बुरा लग जाए, कल आप बोलो मैं तो आपके शो में नहीं होऊंगा, तो मैं आपसे भी गया, बाकी पैनलिस्ट पे भी नहीं कर पाऊंगा, उनको लगेगा क्या रे। तो ये गिव एंड टेक है, क्योंकि दिल से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहते हैं, और आपको पता है कि हम एक अच्छी स्पिरिट में, सिर्फ बेसिकली सिंपल सा फंडा है। और ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैं मार्केट्स को पहले दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, जिस दिन से एनएससी ने कैपिटल मार्केट शुरू किया 94 में। दिवाली 94 वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे, और उस दिन से मैं मार्केट पर हूँ। और मेरे मित्र थे डॉक्टर, तो उस समय एनएससी का टर्मिनल देखने लोग आते थे कि यार कैसे भाव आते हैं, बिना ऐसे एक दूसरे से मिले कैसे सौदा होता है, वो नई टेक्नोलॉजी थी। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि अनिल तुम मेरी क्लिनिक पे आना। मैं उनकी क्लिनिक पे गया, तो बोले कि तुम्हारा बीपी चेक करना है। मेरी एज थी 24 खाली। तो मैंने कहा कि बीपी क्यों चेक करना? बोले नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल देख के मुझे लगता है कि तुम्हें बीपी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा क्या ऐसा है मेरे लेवल? तुम 3:30-4 बजे 3 बजे तक तो तुम टर्मिनल के सामने बैठे रहते हो, ठीक है, चाय पे चाय पीते रहते हो, खाते कुछ हो नहीं, टाइम है नहीं। उसके बाद सौदे कन्फर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये 5-6 बजे जाके लंच होता है, तो तुम्हारा देखा तो बीपी थी। तो मैंने कहा अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, क्या ये गोली दे रहा हूँ, खा लेना रोज। मैंने कहा कितने टाइम के लिए? बोले ज़िंदगी भर। मैंने कहा ज़िंदगी भर? बोले तुम तो बदलोगे तो हो नहीं, ऐसे ही रहोगे। बड़े भाई की तरह उन्होंने डांट लगा, तो गोली खाओ और क्या करोगे? मैंने कहा नहीं ये नहीं, 15 दिन बाद मैं फिर आऊँगा। मैं 15 दिन बाद गया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल ठीक की। मैंने कहा ये मार्केट तो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, टाइम से खाना है ऐसी, और वो करके थोड़ा मस्त रहना है। तो वहाँ से आदत पड़ी कि यार ये ब्लड प्रेशर तो अपने आप मिलता है इस मार्केट में, और कुछ मिले ना मिले, जैसे ही पैसे लगाए आपने। लेकिन अगर हम खुद लाइट मूड में रह पाएँ, हमारे इन्वेस्टर्स दर्शक जो हैं, और साले पूरी दुनिया भर की टेंशन वैसे ले गए, साले पुतिन और उसको क्या नाम है उसका पड़ोसी जेलेंस्की, उसको जितनी टेंशन है उससे ज़्यादा हमारे को है। तो शेयर ले लिया। मतलब जैसे आप शेयर खरीदते हो, आपको अमेरिका से लेके, रशिया से लेके, यूक्रेन से लेके सबकी टेंशन अपने आ जाती है, मोदी जी ज़्यादा अपने को है। करेक्ट। तो इसलिए अब इतनी टेंशन में जी रहे हैं, तो थोड़ा हंस ले कर ले यार, ऐसे ही निकल जाएंगे। कोविड में सबने देख लिया है, ज़िंदगी का क्या भरोसा है। तो इसलिए हम लाइट मूड में रहते हैं। और बाकी तो क्या है, आप कितना मार्केट कवर कर लोगे, कितने कॉल्स दे दोगे, कितने लोगों के पास पैसा है, मुझे बताओ। आपको दिन में अगर 1 या 2 अच्छी कॉल्स मिल जाए, उससे ज़्यादा चाहिए क्या? नहीं, या हर 2 मिनट में बिगुल बजता है, तो कितना ट्रेड कर लेगा भाई आदमी? अनलिमिटेड पैसा थोड़ी। बिगुल नहीं बजाते तो आप खींचने लग जाते हो। सो मेरा पॉइंट यही है कि सिंपल सी चीज़ें, थोड़ा हल्के फुल्के मूड माहौल में रहें। पैसा बनना नहीं बनना देखिए, और मैं फिर कहता हूँ हम किसी का कोई पैसा बना के नहीं दे रहे हैं। मैं सिंपल सी एक बात जानता हूँ, अगर आपने पैसा कमाया मुझे देख के, चैनल देख के, किसी XYZ को देख के, या आपकी किस्मत है, आप ऊपर से लिखवा के लाएं। हमारी खुशकिस्मती कि हम उसका निमित्त बन पाएँ, हमारे जरिए बनाइए, हमारी खुशकिस्मती है, आपकी नहीं है। सही है। तो हम आपके लिए ग्रेटफुल हैं कि हम कुछ कर आपके ऊपर एक इल्जाम भी अनिल जी, रोक लिया मैंने बीच में, आपने बिजनेस चैनल को फैमिली चैनल बना दिया। अच्छी बात है, ये खराब है। वो एक्चुअली स्टाइल है सर बड़ाई करने की। नहीं नहीं बिल्कुल। और आज मैं बताऊं, हमारे जितने दर्शक होते हैं, किसी को झिझक नहीं कि हमारे पास आके बात करें। वो हमें सेलिब्रिटी समझते नहीं, और हम चाहते भी ऐसे कि ना समझे। हम आप ही की तरह, आप देखो सामने बैठे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है क्या। मतलब इसीलिए एक माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है सर। अगर 15 जून 2022 का मैं आपको बता दूं, जस्ट 1 साल पहले का जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 3:30 बजे आशु जी बोल रहे थे बहुत ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने एकदम मधुबई जोश आ गया मुझे, पता नहीं कहाँ से, कभी अचानक से निकल जाता है। तो मैंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, आप और हम हमारी लाइफ टाइम में देखेंगे
कि इंडिया इतना बड़ा होगा, इंडिया के इन्वेस्टर इतने बड़े होंगे, हम जाके दुनिया भर के बाजारों में पैसा लगाएंगे और वहाँ के मार्केट बोलेंगे आज इंडिया की FI आई है इसलिए हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। वाह वाह वाह। ये आप हम लाइफ टाइम, और हमारा काम ये, मेरे पास दो ऑप्शन है सर। एक तो वैसा मार्केट है, मैं ऐसा मुंह लटका के बैठा हूँ, आज तो बहुत गिर गया, अब क्या होगा भगवान जाने, सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे सेल सिग्नल है, ये हो गया, ये खराब वो खराब। और दूसरा ये कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दूँ, डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। मधु सर, अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन है सर, आपके लिए। मेरी आवाज तो वैसे बुलंद है सर, आज चली जाएगी। ओके ओके, सो सीधी बात, तो मधु सर से एक क्वेश्चन था, मतलब एक, क्योंकि मधु सर का विजडम वाकई में, देखिए अनिल जी को हम सुनते हैं, उनका विजडम हमें मिल जाता है, मधु सर का विजडम हम वो लाभ नहीं कर पाते हैं। सर एक आपकी तरफ से एक मैसेज चाहिए, मतलब लोगों को, कि क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टर बने आगे के लिए, तो कैसे जी, बात को। 5 मिनट और लगेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंत्री जी को बहुत मजा आएगा सर 5 मिनट से। ओके, तो ये जो मैसेज जो है ना, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में मैंने जो 4-5 चीज़ें मोटी मोटी मार्केट में सीखी है ना, वो मैं शेयर करता हूँ। बेसिकली क्या है, बाकी सेक्टर स्टॉक्स का तो आज ये है, वीडियो बनाने लायक 5 सवाल होंगे, आप आंसर होंगे, देख आज लीजिएगा आप है कल नहीं है, राइट। तो सबसे पहला, इफ आई टू रीलिव माई लाइफ एज एन इन्वेस्टर, आई थिंक मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले दिन से ना बहुत बड़ा कन्विक्शन बनाऊंगा जो आज मुझे है। काश अगर ये कन्विक्शन मेरे को 30 साल पहले समझ गया होता ना, आई वुड बी अ डिफरेंट इन्वेस्टर, फार मोर सक्सेसफुल देन व्हाट आई एम। तो सबसे पहला वो कंट्री के ऊपर आपको कन्विक्शन बनाना है, राइट। दूसरा जो है ना, हम जब कोई भी स्टॉक मार्केट में शेयर लेते हैं, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, हमारे विनर्स को हम बहुत जल्दी भेज देते हैं और हमारे लूजर्स को हम एवरेज करते रहते हैं, राइट। एक्चुअली अदर वे राउंड होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हाइज आर मच हायर देन व्हाट वी कैन इमेजिन एंड लोज आर मच मच लोअर देन व्हाट वी कैन एवर थिंक ऑफ, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपके हाथ में कोई विनर आ गया है ना, तुम्हें जल्दबाजी मत करो। आपको क्या मालूम 100% बढ़ेगा, 200% बढ़ेगा। कितने सारे कोविड के बाद शेयर हैं जो 5-5,000% भी ऊपर है, राइट। और कितने जेम्स तो आपने भी खुद ने निकाले हैं, राइट। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अगर रियल में शेयर पकड़ में आ जाए ना आपको, तो देन मैरी इट एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन अ हरी टू बुक दैट प्रॉफिट, राइट। थर्ड, मुझे लगता है कि हमने पूरा जीवन निकाल दिया ये देखने के लिए कि 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी कब घटेगा और कब हम चले जाएंगे अंदर और कैसे हम उसको टाइम कर लेंगे और कौन सा शेयर हम ए शेयर लेके बी शेयर बेच देंगे और बी शेयर लेके सी शेयर बेच देंगे, राइट। मेरे को लगता है ना, आज का ज़माना क्या है, सिर्फ शाना होने का है। अगर आप 1.5 शाने हो ना तो तकलीफ है, या चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप कोई भी पर्सनालिटी हो ना, 1.5 शाना होने का ज़माना नहीं है ये, नो। तो सिर्फ शाना हो के अगर समझ में आ गया ना कि भैया मोटा मोटी ठीक है, राइट। और उसके बाद फिर अगर हमारा खुद का रुपया है और आपको जवाब नहीं देने का है किसी को, राइट, तो यू शुड नॉट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट बिकॉज दैट डजंट लास्ट। हमने भी जीवन में बहुत मैक्रो एनालिसिस कर करके पूरी दुनिया को छान मारा और बहुत मार्केट को टाइम करने की कोशिश भी करी, होता भी है कई बार, पर उससे वो वापस बिग पिक्चर जो है ना वो मिस हो जाती है ना? चौथा है ना, ये जो बाजार है ना, यहाँ मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे बोलोगे आज मुझे कितना स्टॉक मार्केट के बारे में आता है और कितना नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा मुझे 2% आता है और 98% नहीं आता है। तो दिस इज अ quest for excellence which actually delivers results. You have to be at it.
You will get there. Maybe I am confident in my lifetime I'll go from this 2% to some higher percentage. That quest for excellence, quest for learning, quest for knowledge is what delivers stock ideas and returns. और आज की घड़ी पे तो हमारे टाइम पे तो इतना था भी नहीं जब हमने करियर चालू किया. आज की घड़ी में आप बटन दबाओ, इंटरनेट पर दबाओ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद है. मैं आपको बोलूँ संदीप, जब मैंने करियर चालू किया था तो मैं मेरे ऑफिस से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाता था एक बैलेंस शीट निकालने के लिए, और बैलेंस शीट निकालने में एक दिन लग जाता था. उसकी एनालिसिस तो आप छोड़ दो, आज आप बटन दबाओ, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है. और लास्ट में बोलता हूँ, वी ऑल, जैसे अनिल जी ने बोला ना, वी शुड नॉट एवर टेक एनी डिस्प्रपोर्शनेट क्रेडिट फॉर आवर सक्सेस. वी आर राइट टाइम, राइट प्लेस. अब आपके हाथ में है, समुंदर आपके पास आगे है. आप लोटा लेके जाओगे, लोटा भर जाएगा. बाल्टी लेके जाओगे, बाल्टी भर जाएगा. टैंकर लेके जाओगे, टैंकर भर जाएगा. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लोटा भरना है कि बाल्टी भरना है कि टैंकर भरना है. माइक पे बोल देता हूँ, आपका मैसेज सर. नहीं, मधु सर ने वैसे सारी बातें कही है. कांट एग्री मोर देन दैट एक्चुअली. खाली एक चीज़ है, मधु भाई बोलते कि 2% मार्केट आता है उनको, 90 नहीं, वो सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं सही. लेकिन एक और बात सही है कि सर आपको जितना आता है उसका 2% हमें आता है. हमें भी अगर और 98% आ जाए तो हम भी थोड़ा वो मैंने जानबूझ के 2% बोला कि ये हॉल में अगर कोई बैठा है तो उसको भ्रम नहीं हो जावे कि मेरे को पूरा आता है. नहीं, मुझे सिर्फ एक ही इंक्लूडिंग संदीप जी. एक ही सिंपल चीज़ है, स्टॉक मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने की सबसे पहली कंडीशन ये है, ऑफ कोर्स आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है, बट सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आज के मुकाबले में आप कल को लेकर पॉजिटिव है या नहीं. लाइफ में पॉजिटिविटी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कल आने वाला कल आज से बेहतर होगा, तभी तो आप पैसा लगाएंगे. आज इस वक्त शेयर आप इसलिए खरीदते हैं कि कल आपको लगता है कि ऊपर मिलेगा, या 1 घंटे बाद ऊपर मिलेगा, या 1 साल बाद ऊपर मिलेगा, राइट, किसी भी पीरियड के हिसाब से. सो पॉजिटिविटी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस रखें अपने आप पर, अपने इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें. वही सारी घिसी पिटी बातें. सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मज़ा दोस्त थिएटर के बाहर खड़े होके पोस्टर देखने में नहीं है. टिकट खरीद के अंदर जाएंगे, रिक्लाइनर सीट पर बैठेंगे, आराम से पसर के 3 घंटे पूरी पिक्चर जब देखकर बाहर निकलेंगे ना, आहा, उसका आनंद ही अलग होगा. तो टिकट खरीदो, इन्वेस्ट करो, फिर आराम से रिलैक्स होकर 3 घंटे का टाइम दो. 5 मिनट देख के कभी ऐसा लगा कि आपने क्रेडिट्स देखी, नाम आया, देखा नहीं यार ये तो पिक्चर बेकार है, नाम दिख रहे हैं, नाम भी बराबर नहीं लिखे, चलो बाहर आ जाते हैं. पूरी पिक्चर देखकर निकलते हैं. हाँ, कोई हो सकती है ऐसी जो आप बीच में इंटरवल में निकल जाए, कर जाए, वो अलग बात है, तो वो अलग चीज़ है. बट आपको बने रहना है, डटे रहना है, थोड़ा लंबा सोचना है. पैसा तो मतलब एक चीज़ बता दूं, इंडिया का जो टाइम है, आपको पैसा डुबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अच्छा. पैसा डुबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मतलब ये लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा देखा, मधु भाई इसको एंडोर्स करेंगे, कि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर कंप्लेन नहीं कर रहा कि मेरा पैसा नहीं बन रहा. राइट, करेक्ट. एकदम ही कचरा आपने खरीदा हो तो अलग बात है. एक चीज और कहता हूँ, कचरे में ज़्यादा बन रहा है अनिल जी. पॉसिबल है, बट क्वालिटी में भी बन रहा है, तो वो बड़ी बात है. नहीं तो क्या है, अरे 12,000 की निफ्टी है, हमारे तो लेवल 8,000 के ही चल रहे हैं अभी तक. करेक्ट. इस बार तो उल्टा लार्ज कैप्स को कंप्लेन है कि निफ्टी 20,000 की है, मिड कैप के भाव तो 30,000 के हो गए. राइट. सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि आप डटे रहे. और एक आखिर बात जो बोलना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन लोग हैं जो लंबा जीना चाहते हैं? सारे लोग जीना चाहते हैं लंबा, सब चाहते हैं, इसके जवाब की जरूरत भी नहीं है. अब जिस समय में आप जा रहे हैं हिंदुस्तान के, रिस्क इस बात की नहीं कि कोविड की तरह कभी हम निपट गए, जल्दी मर गए. रिस्क इस बात की कि ज़्यादा जी गए तो क्या होगा. अगर आप 90 साल 100 साल के हो गए तो क्या आपने इतनी वेल्थ बनाई है, क्या आपने उतना इन्वेस्ट किया है कि आपकी गाड़ी 90 तक चलती रहेगी? 55, 60, 65 कहीं तो जाके रुकेंगे बॉस. जिंदगी भर काम नहीं कर सकते. और अगर जिंदगी भर काम करने के लिए पैदा हुए तो पैदा ही क्यों हुए?
तो कहीं कहीं तो आप ब्रेक लेंगे ना। उस समय आपके पास ब्रेक लेने के बाद 20-25 साल तक जिंदा रहने के लिए, यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्या आपने उतना इन्वेस्ट किया है, तरीके से किया है? इस वक्त सबसे बड़ी रिस्क ज़्यादा जीने की है, जल्दी मरने की नहीं। तो उसकी तैयारी रखें। प्रॉपर इंश्योरेंस, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर वेल्थ प्लानिंग, प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग, ये आपकी मस्ट है। आज ये मंत्र लेके जाइए कि मुझे लंबा जीने में रिस्क है और उस रिस्क को मैं सही इन्वेस्टमेंट करके और मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास इतनी वेल्थ बने कि मैं सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग से ज़्यादा अच्छे से जीऊँ, इसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक वन लास्ट पॉइंट संदीप आई जस्ट वांट टू, हमने सब बहुत पॉजिटिव बातें करी, यू नो, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू मेक मनी। पर मैं बोलूँ ये सब बातें जब बाजार 2000 पॉइंट निफ्टी डाउन हो ना, तब जरूर याद रखना कि ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है। जो भाई अभी तक पोस्टर देख रहे थे ना, उनके लिए थिएटर में अंदर जाने की। चलो, बिग अपलॉड्स फॉर द मोस्ट। Sir, as a token of remembrance, we will be giving this just a memento. To give memento to Mr. Madhu Kela, I will request Gopal Agarwal ji, our past president and national spokesperson of BJP on economics. अभी एमपी बनने वाले हैं गोपाल जी, आइए सर। I will request big applause again, standing ovation to these. Gopal Agarwal ji is the past president of our organization CPI and presently is the economic spokesperson of BJP. He is presenting it to Mr. Madhu Kela. I will request now, normally हम जो आदमी डाइस पे आता है उसको बुलाते नहीं है मोमेंटो देने के लिए, पर breaking all the tradition, I am inviting Virendra Mansukhani ji, incoming president, to present it to Mr. Anil Singhvi. कल को सारी को आपको बुलाना है टीवी चैनल पर ज़्यादा on behalf of association. ये इंटरनल रेगुलेटर है हमारे सर, इंटरनल ऑडिटर होते हैं ना, ये हमारे इंटरनल से भी हैं सर। And Sandeep ji, breaking all traditions, to give memento to you, I am calling those people who have made this program successful. Yes, sir. I am requesting Rajesh Narula and Sanjeev Mehra to give a memento to you. Thank you. Rajesh Narula and Sanjeev Mehra. थैंक यू। सबसे ज्यादा मेरी इन्हीं से ही बात होती है सर, ऑर्गेनाइजिंग टीम में। Actually ये काम आपको करना था जो इन बच्चों ने किया है। Right, sir. You were the chairman of the convention committee. And this was done by these two people. हाँ जी, जल्दी डाल। Please come on the dais. She is the chief guest for the award function. I am also requesting the guest of honor for the award function, Mr. Amit Pradhan, Regional Director, SEBI. And I now request my colleagues and the office bearer, Mr. Ashok Agarwal, Chief Mentor, Mr. Narendra Vadwa, Mr. Narendra Vadwa, President, and Mr. Rajiv Agarwal, alternate president, to be on the dais. I am being told that Madam has to leave early, so I am not reading her printed profile given to me about her. I am just, as all of you are aware, that she is the Minister of State for External Affairs and Culture. She is the Member of Parliament from the New Delhi constituency, and the place where you are sitting here, she is the Member of Parliament from that constituency. Academically, as you are aware of, she did her BSc from Hindu College, and then she did her LLB, registered herself as an advocate way back in 1990, and then I have to say many things, but in short I am saying, for the many cases she had fought,
for the women developments, for ensuring that how women can get the rightfulness. And just to inform you, I am told, I may be wrong, that she was instrumental also in ensuring that there is this bill which came 2 days back, that 33% reservation for the women on her left is Mr. Amit Pradhan. We all of him know him well. He is the regional director of SEBI. He has completed his 25 years of service in SEBI. All through, he worked in the legal department. And honestly speaking, as on today, if you go by the personal number wise, he is the senior most officer of the legal department in SEBI. But presently looking after and very recently he got an award for his completion of 25 years of service. As all of you are aware of, many a times he had been on our platform, but today, yes, he is with us for this award function. And Ashok ji, will someone like to speak, or straight away I should start the awards first? Chaliye. I will like to start the award first, because I am told that the MCX office bearer has to leave immediately. His flight is at 6:30. The first award is for the best exchange for bullion, metal and energy. आप लोग खड़े हो जाएंगे, मतलब जिससे अवार्ड लेने आएगा. वैसे तो टेबल हटाई जा सकती थी आगे से. हाँ, टेबल हटा दीजिए 2 मिनट में, जल्दी कोई स्टाफ जल्दी आइए और टेबल हटा दीजिए. I request Mr. Rishi Nathani and his team member Mr. Sanjay Gakhar to come and take the award. Mr. Rishi Nathani and Mr. Sanjay Gakhar. Best exchange for agricultural and farmer contact, NCDEX, and I request Mr. Kapil Dev and Mr. Ramesh Iyer to come forward to take the award. Mr. Kapil Dev, the Chief Business Officer, and Mr. Ramesh Iyer, the North Indian Head. The next award is largest derivative exchange of the world. We have written of the country, but today we have come to know that very recently the exchange has become the largest derivative exchange in the world, and it is National Stock Exchange. I request their Chief Business Officer, Mr. Shriram, and Regional Director, Mr. Gaurav Kapoor, to please come forward. The other team members of NSC can also come on the dais. अरे वो गौरव जी कहाँ गए? या तो ऐसा तो ना भाई. Sriram ji, you have to be on the dais for a minute. Actually, there was a quiz competition. We had received 107 entries, and only few of them have the rightful answer. So, Shriram ji will take it out, and then I think the award can be given by the madam. भाई आप पहले मुझे इन्होंने 3 बताए थे, उसमें चलिए सब मुझे भी इतने छोटे में तो चश्मा निकालना पड़ेगा, सुबह से नहीं निकाला था. हाँ, अशोक जी का ये लिए अशोक जी.
Mr. Vikas Singhal, Vice President SMC. Mr. Gurpreet Sidana, CEO Religare. Mr. Ajay Garg, SMC. Mr. Pramod Sultania, share broker. Mr. Ramesh, Vice President, ICICI Securities. आप ले लो, आ जाओ सफरवाल जी, इस अवार्ड के लिए आ जाओ। The best exchange for promoting the innovative products, including that Sensex. वाधवा जी ने कुछ और इसमें चेंज करके लिखा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, and that is Bombay Stock Exchange. And I request Mr. Samir Patel and Mr. Varun Gupta to please come forward and take the awards. So what I have written is Sensex, what we have seen in last few weeks. The turnover we have seen in Sensex. This is Bombay Stock Exchange team can come forward. Please keep running. Otherwise, photos will not be there. You have to start. The next award is spreading financial awareness in the country. And that award goes to DD News. If no DD News office bearer is here, I will request Dr. Ravi Singh and NC Maheshwari, those who goes on their panel should come forward and take the award. Dr. NC Maheshwari and Dr. Ravi Singh to take the award on behalf of the DD News. They are frequently on DD News panels. And contributing for the promotion of mutual funds in India. This award goes to our sister concern, MP. And I request Suryakant Sharma ji and Pradhan ji, I will request you, he being your old colleague, this award should be given by you. He being your old colleague. And now, it is the award of the day. There are two more awards, but the best award of the day. And that is for the largest business channel of the country. And that goes to Z Business. I will request Mr. Anil Singhve, Mr. Mrityunjay Jha. आ जाओ, आ जाओ, अभी मैं थोड़ी मना कर सकता हूँ आपको. Best TV channel on commodities in English. And that goes to CNBC TV 18. Amit Pradhan ji will be giving these awards of TVs. If nobody is there from CNBC TV 18,
कौन आता है भाई CNBC TV 18 पर पैनल में? संदीप जी आप तो पहले आते थे. और Gopal ji will come and take the award. Sir, you have been our past president. Madam, I will like to tell one thing, that Gopal ji is a stockbroker. He has grown up from here. He was the president. First he became the president of our association, CPI. Then he became the president of Stockbroker Association, NME. And after that only he could reach on this position as the... so he is a part of us. He had been our ex-president. And the last award is Emerging Business Channel, and that goes to E.T. Swadesh. E.T. Swadesh, Vishwamohan ji was here. Please. And coincidentally, it is the birthday of the person who is receiving the award. So and just we'll take 5 more minutes. I will request Madam to please speak few words. So to keep it very short, and respected Amit Pradhan ji, Ashok ji, Rajiv ji, and Mr. Vadva, ladies and gentlemen, आप लोगों को मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ. आज मेरा कोई मन नहीं था ये सोचकर कि भाई स्टॉक ब्रोकरेज और इस सब में मेरा क्या काम है, और जिनका विषय है वो लोग रहे तो अच्छा है, मगर रिश्तेदारी निभाने आई हूँ मैं. तो द फैक्ट इज ये सब लोग को मैं आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ. दे आर ऑल फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूएंसी. आवर चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप टुगेदर. नहीं वही जी सर जी. तो मैंने कहा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही वायदा निभाने के लिए आई केम. आई सेड अदरवाइज फाइनेंस वालों को लगेगा हमारे एरिया में क्यों घुस रही है, व्हाई शी स्टेपिंग इनटू आवर एरिया. But then I said it's a question of my people, my area, my constituency. So anything which is happening here is like I am responsible. और जैसा कि हमारे एंकर साहब ने कहा, I happen to be your guardian, especially the ones who have come from outside Delhi, that when you are in my area, you should be safe, sound, well looked after. So I'm assuming the post of a guardian, a local host. Let that be that I'm your host here because everything's happening in New Delhi. We happen to be here. My first question, आप लोगों को दिल्ली आके अच्छा लगा या नहीं? हाँ, everyone's happy. सबको प्रसन्नता होती है कि भारत की राजधानी ठीक हुई. हाँ, राजधानी जैसी दिखने लगी. You're all happy that at least the capital city of the country should look like the capital city of the country. And a lot of effort has gone into it. It's not a question of how much money is spent or what, but I think it's more about effort, the personal effort which we have all put in. And yesterday, Prime Minister had met all the workers from all the departments, from Health Department, from New Delhi Municipal Corporation to SPG to other agencies which were on the job, on the task, MEA, Culture Ministry, so on and so forth. So everyone who had participated, close to 20,000 people worked for G20. Just 3 days show, 20,000 people. Obviously, we couldn't have gathered 20,000 people, especially considering that cops cannot leave their stations all the time, but some of them in close to 300 would have come as representational form, and we were about
2,800 people yesterday eating together and listening to everybody's experience. So one experience is the experience of a Mali from New Delhi Municipal Corporation. तो सब फूल वूल अच्छे लगे ना, तो उसके पूछे कितनी बड़ी टीम लगी होगी कि पानी सही पहुंचता रहे, पौधों को खराब ना हो, और कितनी मेहनत हुई होगी. स्पेशली दिस रीजन हैज़ वीआईपी मूवमेंट कॉन्स्टेंटली. तो वीआईपी मूवमेंट के चलते सड़क क्लियर करना पुलिस की, बाकी इन सिक्योरिटी एजेंट्स की मजबूरी बन जाती है कि भीड़ भाड़ ना रहे, चीज़ें क्लियर रहें. तो जो को काम करना है उनके लिए काम का समय कम हो जाता है. तो सारी रात बेचारे काम करते थे, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे. और बहुत सारे लोग नई दिल्ली में ही रहते हैं, तो घर आने जाने में 15-20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता, लेकिन जब तक घर पहुँचे तो दूसरी कॉल आ जाती है कि भैया वापस आओ. तो ऐसे एक माली का एक्सपीरियंस था कि वो काम करके 3 बजे घर पहुँचा. अभी दरवाज़ा खटखटा के अंदर जा रहा था तो माँ ने कहा कि शक्ल दिखाने आया है या घर रहने आया है. एंड ही गॉट अ कॉल कि भाई कल सुबह एलजी साहब का इंस्पेक्शन है और एक पर्टिकुलर चौराहे पे गाड़ी वाले ने गमलों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और सारा तोड़ फोड़ कर दी है. वो रात को वापस पहुंच के उसको ठीक किया और किसी को पता भी नहीं चला कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी. और सफाई कर्मचारी जितने लगे हुए थे कि लिटर का एक टुकड़ा ना रहे, और वो भी सब के घर हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं, यू नो एवरीबडी हैज़ अ फैमिली. तो अगर लिटर का एक टुकड़ा भी है तो अब सिक्योरिटी वाले आ गए तो आपको कदम नहीं बढ़ने देंगे कि पैर भी आगे नहीं रख सकते. तो जैसे यहाँ एक छोटा सा वो टुकड़ा कागज़ का पड़ा हुआ दिखाई दिया तो बीच में जाके कि भाई लिटर का एक छोटा टुकड़ा भी ज़मीन पर दिखना नहीं चाहिए, ये हम सब की जिम्मेवारी है. Why I'm narrating these stories is for the reason that we all are part of a bigger game. We all are part of Team India. If India has to do well, smallest to the biggest has to do well. And smallest to biggest has to claim his stakeholding in the well-being of the country. And that stakeholder, I think all of you understand, shareholdings, stakeholders, communities, working together. So when you all understand that, I'm just giving that meaning, a different meaning today, and that is that while we follow economics, etiquettes, behavior in stock exchanges and markets and emerging markets and restructuring markets, we also have to understand that when country is restructuring itself, well, when societies are restructuring themselves, how important it becomes that everyone from each stream becomes a stakeholder and takes pride in what India is or what India's story is all about. Very happy to have met all of you for simple reason that when India's story is going to be written, 2023 is going to be a very, very important year. Because this was the year when from fragile 5 of the world, ab gaye, kab dube, from that point to become the world number 5 economy, you can understand it's not a small task. And thus, contribution of everyone matters in this new change, in this restructuring part. And in this new change, we all are stakeholders because economy has to do well for us to do our job. People need to be paid, GST needs to be collected, transparency has to be maintained, and how much does one need anyways is what at least COVID-19 has taught me. You know, there is more value than the material value. Material is very important so that we all can sustain ourselves, but material is not the only thing. We need to have other interests. So you create material wealth to benefit people. You create material wealth so that greater number of people get included in the mainstream. And that is what we are seeing today, that inclusion is not just a word, but inclusion is what is happening all across. With 78% of the people having access to banking facilities,
only 9 years cannot be a mean task. And 54 crore of Jan Dhan khatas, to 33% of women in politics. It's been basically delivery of the promises one had made before elections. And with each delivery, whether it's economic well-being, it's Chandrayaan 3 or it's Aditya L1, the strength of India has been going up. And from strength to strength we are growing up, which brings us all to the same platform, and that is taking pride in India. And that pride in India comes because all of us have worked hard in whichever sphere. Money was important, transparency in the system was important, banking sector had to improve, demonetization had to happen, many things had to happen, otherwise system would be what system was. And this restructuring was so important for everyone's well-being, for taxes to be better collected, transparency, faith, digital economy, Jan Dhan, Aadhaar, mobile banking, the digital footprints, DigiLocker, everything is added to this feeling of well-being, happiness. And all of you have participated, all of you are stakeholders, and it is with that aspect of respect and gratitude, I came to meet up with all of you. I said, I must say thank you. Thank you very much for being there. Thank you for being part of restructuring the economy. Thank you for creating wealth for the nation. Thank you for the inclusion. Thank you for bringing everyone together and making our society more equitable and just, so that in a transparent and well-meaning way, away from frauds and fabrications, which was the way of the past, we are able to all work well. And COVID-19 pandemic has brought all the big economies to their knees. But we are the strongest, fastest, and most expansive economy. That goes to the strength of all of you who are sitting here, all of you who have worked hard. And I pray that all of you continue to work hard for the well-being of our country. May God bless and let our country be blessed. Let us all work together as Team India and keep participating in the well-being, and always know that when I do well, there are hundreds of hands which have brought me to this position, and for whom it's my responsibility to work together. So while you all may continue to make more profit, may you continue to bring great prosperity to the nation, but always know there are others who are stakeholders, and it's their money as well, it's their share, it's their well-being, their injections, their vaccination, their toilets, their streets, who we all need, and we need to pay them so that we together can prosper and take India forward in this Amrit Kal. 2047, India has to become a developed nation. We will all be witnessing that. And 23 will become a very, very important year for all times to come. जितना बदलाव 23 में दिख रहा है, और जैसा प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि अमृत काल में भारत ने कदम रखा है, तो अमृत काल में बहुत सारी अमृत वर्षा हम पर होनी शुरू हो गई है. अब वो अमृत वर्षा 2047 तक कंटिन्यू रहे और देश तरक्की करता रहे और हम सब पे ईश्वर की कृपा बनी रहे. हम सब भारत माता के प्रति सजग रहें, इकट्ठा काम करें, भारत को आगे लेके चले, ताकि अमृत काल में भारत और आगे बढ़े और हमारे पूर्वजों के जो सपने थे, जिन्होंने अपने प्राणों से इस देश के लिए आहुति दी, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि का भाव अर्पित करते हुए देश की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए हम लोग मिलकर काम करते रहे. यही मेरी प्रार्थना है. बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Lot of thanks to you, madam. It was really, indeed, it was looking like that as a financial person only speaking. We know that you have a legal background, but from today's your speech, we could understand that it was only you had a good financial background also.
आपने एक बात कही ना, दिल्ली कितनों को अच्छा लगा। मैं इधर झांक रहा था, हमारे वो मेंबर्स जो कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद से आए हैं, वो ज़्यादा जोर से बोल रहे थे, हमारे दिल्ली वालों ने बिल्कुल नहीं बोला। And now I request my Vice President, Mr. Ajay Garg, to give a concluding remarks for the days. Mr. Ajay Garg, please. Yeah, very good evening. A very nice speech, like we heard from Lekhi ji. It was really wonderful. And my dear friends and distinguished dignitaries on the dais and in the audience, I would like to congratulate all the awardees for getting awards which they deserve of. And as we wrap up this enlightening 9th International Convention by CPAI, we are all enlightened with the wealth of insights gained from our diverse panel discussions. Together, we have explored the opportunities and challenges that lies ahead. It had been a very wonderful event as we are able to interact and got insight from our ministers, our regulators, head of exchanges, media personalities, and industry leaders and veterans. I would just summarize because a lot of panels are there. I've jotted down certain points. So in the inaugural session, like some points were there, like 21st century belongs to India, and in last 20 years, like Ashokji pointed out, that the CAGR return of Sensex is and capital market is more than 15%, and it would even be higher in the coming years. Nari Shakti and Yuva Shakti, Mrs. Sundaraman pointed out, Nari Shakti and Yuva Shakti is going to drive the market. Penetration is happening in tier 3, tier 4 cities. More focus has to be put to the debt market because it is a very untouched sector, and commodity market future is much more bigger. It should be 10 times higher than equity market. Mr. Ashish Chauhan pointed out that 1994 market cap was just 4 crore. Today it is 80 times higher. Mr. Anil Singhvi, even last year, I know, like he pointed out that retail is driving the market, and we have to reduce cost of CTT, like cost of transaction, and because commodity market is highly under-penetrated. Mr. Sundaresan pointed out that more products and more number of investors and investor awareness is needed, and he changed the dialogue. It is not do and die, it is do and try. Yeah. And our Honorable Minister, Mr. Pankaj Chaudhary, like he pointed out that India is the fastest growing economy of the world. Lot of infrastructure development is happening. In last 9 years, lot of development even has happened into the financial sector. GIFT City is another landmark, and India would be number 1 in this Amrit Kal by 2047.
in our first technical session, like India has arrived on the global landscape by the venture of Gift City. It is a tax haven. We have seen that SGX Nifty, which has been launched in the year 2000, now from 3rd of July, the entire volume has been shifted to Gift City. So SGX Nifty has become Gift Nifty. Even Indian investors can invest through AI funds. No PAN is required, no returns to be filed. For capital market income, like dividend tax is just 10%. NRI can also invest through FPI route. And anyone who is there in Gift City can trade into international markets. So IIBX is the next landmark. So it is a foundation for India to be a price setter in the time to come. We do have a unified regulator, ISCA, and direct listing of Indian equities in Gift City is not far away. Now the second technical session was for structural reform and market development. So more commodities and more products are needed. More focus to be put to revive the agricultural products. We can have weather derivatives, freight derivatives, even carbon credit derivatives, and single demat for all the products. In our next technical section on fintech transforming financial inclusion and wealth creation. So tech is a backbone, and tech is an enabler for financial inclusion. In Jan Dhan Yojana, like as Lekhi ji has pointed out, like we do have more than 50 crores bank accounts now. So it would not have been possible without the tech support. Room is there like for full broking house and discount broking house. So market is becoming bigger and bigger. Yeah. And we have to grow with collaboration with fintech companies, with BFSI companies. So I would just cut short because a lot of point like the session of Mr. Madhu Kela and Singhvi ji was fantastic. So I will not take much time, and I again extend my gratitude to all the esteemed panelists, moderators, and participants who have enriched this convention. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Ajay Gar. And now, before I call our alternate president for vote of thanks for a minute, let us give the mementos. मेरे से गलती हो गई थी कि जो शुरू में शाल भे 1 मिनट लगेगा जी. तो I request my president, my chief mentor, and my past president, Mr. Gopal Agarwal, to present memento, shawl, and our symbol also. Mr. Narendra Badwa, Mr. Gopal Agarwal, and Mr. Ashok Agarwal. एक चीज तीनों दे देना भाई. And now I invite our incoming president, Mr. Virender Mansukhani, past president Shivkumar Goyal ji, and past president Dr. Naresh Maheshwari to present this to Mr. Amit Pradhan. बस इट्स ओवर. वो राजीव मेरी जान खा लेगा. वो उसको वोट ऑफ थैंक्स आपके सामने देना 1 मिनट का. I request Mr. Rajiv Agarwal to give a formal vote of thanks. हाँ. A very good evening to all delegates.
मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं आप सभी लोगों का जिन्होंने आज सुबह 9 बजे से अभी 5 बज रहा है अपना कीमती वक्त दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। मैं साथ में माननीय मंत्री जी का मीनाक्षी लेखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना और उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और साथ में बहुत अच्छा हमें गाइडिंग लाइन भी दी कि क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग ओवेशन। मैं साथ ही में सेबी से आए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब अमित प्रधान जी और सभी रीजनल डायरेक्टर नहीं, सुबह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए थे, उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें अपना टाइम दिया। जितने भी हमारे एक्सचेंज पार्टनर्स हैं, एक्सचेंज हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, पैनलिस्ट हैं, आए हैं, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका और ज़्यादा धन्यवाद और मीडिया हमारी जितनी सपोर्ट किया, आप पूरा मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ऐसे ही सपोर्ट की हम आशा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं। अंत में कंप्लीट सीपीआई टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी आए हुए लोगों का भी धन्यवाद। सुबह से लेकर अभी तक आने जाने वालों की संख्या 400 क्रॉस कर गई थी।